Champion stage. Crowds descend on the Accor Arena. 8 teams had their date with destiny. The Danish leaders' last major dance in CSGO. Heroic conquer. 10,000 fans roared in sync. Vitality marched on. The first fond farewells. The underdogs, with nothing to lose, and the only way is up. GamerLegion continued their stampede, securing a semi-final spot. Apeks, at the peak of their power. America's pride and joy never arrived. Eight carved to just 4. A place in history draws near. The fairy tale is no longer a fantasy. Cadian's major dream denied. The hornet's nest erupted. An unstoppable force. One step too far. With a legendary run to make the grand finals. Poetry for Vitality. This team, one match away from lifting the trophy here on home soil. The most coveted trophy in Counter-Strike, and today, for the final time, it will be hoisted above one team's heads. Blood, sweat, and tears for both teams to be making it to this very stage, and today we will be crowning a champion for the final time in CSGO Major history. Welcome to Championship Sunday at the Blast TV Paris Major. My name is FaZe. It's truly an honor to be guiding you through this coveted grand final. Of course, I had to get the superstars down here on the desk. Maniac, Pimp joining me. Gentlemen, it would be an understatement to say we have been so excited for this very moment. Of course we have. This is what it all comes down to. The grand final. One team will get to lift that trophy. Vitality being in the final, obviously the big story right here. GamerLegion, the massive underdog coming into it as well. I feel like this final has a lot to offer, Matthew, and I know for a fact that this arena is going to be packed to the brink in just a couple of hours. Yeah, and my expectations have been swept the entire way. I feel like I've never been so wrong in my life when it comes to Counter-Strike and an event. In a way, I accept it. Humbly, I expect it. I have no idea what the hell is about to happen. I'm not even ready, I think, for this to be our last day. We've been doing this now for more than 2 weeks, and in about a couple of hours, it's going to be it. I feel like we're going to be all emotional for so many reasons throughout the duration of the day. And Matthew, you know what? You weren't the only one that was wrong throughout the duration of this. I think we were pretty much all wrong about the Heroic versus GamerLegion game going down yesterday. We were saying, you know, it has been such a long time since GamerLegion were able to take down a team in the top 10. I believe it was 7 months since they were able to do so. But man, that third map against Heroic, incredibly convincing from GamerLegion, netting themselves a spot here. We were talking a lot about that yesterday, Freya, the fact that GamerLegion haven't taken down anyone from the top 10. And yes, leading into that matchup against Heroic, we didn't really leave them many chances. But the way they conducted themselves, the way they played, they fully deserved that victory. It was fantastic to see GamerLegion, how they fought back after a rough start against a team of the caliber of Heroic. Now, I do want to say there's a reason why they haven't beaten anyone within the top 10, because they don't really play any LAN tournaments. I was looking up the statistics when I got back to the hotel. The RMR was the first LAN event GamerLegion played this year. They were not part of the Blast group stage. They didn't qualify for Katowice. They didn't qualify for Pro League. They haven't been anywhere. They haven't been nowhere near LAN stage before they got into this major circuits, because that's the reason. They haven't really had the opportunity to do it, and yesterday they delivered. And look at the teams they've beaten. We have the very emotional images right here from Heroic, of course. Such a journey. They presented themselves here in Paris as the best team in the world, for my money, or in my book rather. Even though I am a pure Vitality fan, I can be honest enough to say Heroic were playing the best Counter-Strike, and after the beating that Heroic put onto FaZe on map number 3, the question was not really would Heroic be in the grand final. The question was who can stop them,
who can stop them? Can Vitality maybe, with the help of the crowd and a grotesque ZywOo, take him down? I don't think anybody was ready for GamerLegion to be the one taking down these giants. Yeah, we can't be blind to the fact that Heroic basically had painted their name all over this trophy, because we were looking back to the last major in Rio. They made it all the way to the grand finals, looking convincing every single step of the way, and then they crumbled versus outsiders. We were saying this was the redemption arc for Cadian and company, just couldn't get it done versus the underdog. This was the one chance, I feel like. We always paint the story when it comes to Heroic that they have the highest floor in competitive Counter-Strike, consistent as ever before. We know what we get when we see Heroic on the server, but we have also questioned their ceiling a little bit. It felt like this major with so many favorites not coming into play, with G2 being out, with NaVi not being part of the playoff. This was the one that Heroic was supposed to win, and they didn't make it happen. So I think that's going to sting the most. They're going to think about this as the one that got away. I know, but I do wonder if we're not recycling this line now a little bit too much, because it was also the newspaper title all around the world once they've lost to outsiders. You'd say, was that not the one time you would have won a major? When is going to be the next time that you're going to face a team like outsiders to leave the trophy? You didn't make it, you're never going to have another chance. They had a semi-final now against GamerLegion. That's another one of these oopsies. Another one of these, you should have done it. And that is going to be hard to swallow if you're Heroic, because the quality of the game is undeniable. I think from the eye test, they played the best, most polished Counter-Strike, most optimized Counter-Strike we currently have in our circuit. And it still wasn't enough. And the beating on the third map, that took me by surprise extremely. I think that's, you know, the saddest part of the narrative for Heroic, to kind of be closing out their CSGO chapter, right? Obviously, we demanded more back in Rio. Then they managed to lift the trophy on home soil back at the Blast Premier full finals. And we said, hey, maybe they're resurging. Obviously, Stan had to take a leave of absence during the later stages of 2022. But then it comes to those runs to the grand finals. We saw it back at Katowice as well. And it's kind of the story for Heroic of always the bridesmaid, never the bride, dare I say? That's kind of what it feels like, yeah. The 5 players on your screen right here, they have inspired, I would argue, an entire new generation of Counter-Strike players. I brought it up on the desk yesterday as well, matching with Maui, where I spoke about the fact that Heroic is probably the team in the world that have inspired the most people, in the sense that they haven't really got anything to show for it whatsoever. We were in a situation where Heroic took the Counter-Strike game and they were proactive with it. They were re-innovating the way you play Counter-Strike. Everyone is looking towards Heroic. Everyone was trying to copy them, but when you look at the trophy cabinet, they have that one win in Copenhagen, and that's it. Whereas if you look towards FaZe, NaVi, sure, they won a lot of trophies, but it wasn't inspiring in the same sense that Heroic have inspired an entire generation of Counter-Strike. I think they definitely have an imprint on the legacy of CSGO, right? Obviously, we demanded more from them coming into things, but I think Jacob kind of puts it perfectly, right? They reinvented the wheel when it comes to how we look at CSGO. I agree with you. Most of us thought that this DNA of Counter-Strike wouldn't work offline. That was pretty much the line. We thought, hey, it's great online. You're never going to make it work on LAN. And I think they have earned our respect for what they've been able to achieve in that context. Apeks versus Team Vitality was the second semi-final going down yesterday. Vitality still managing to keep up their flawless streak. And I think we just have to give props to Apeks for making it this far, particularly in that quarterfinal matchup versus Liquid. That was a dominant display to kind of just crush the dreams of North America and Maui Snake, unfortunately, at that. Yeah, had it not been for GamerLegion, that would have been the big story. The big underdog going into the semi-final in the form of Apeks. I love their story. I've loved seeing them throughout this major so far. We've been close to them in the studios. We've been close to them inside the arena. And it does feel like it's been a family from start to finish. Yes. They've had cameras in their face from start to finish. They're doing vlogs after every game. They're really embracing being at the major. And as we spoke about coming into the tournament, no one, absolutely no one expected them to be in the playoff. No one expected them to be in the Legend stage regardless. But the way they've played, the way JL have conducted himself on the server, the way JGM is back on top, Stuko for that matter as well, making a mini comeback into the tier 1 scene. It's just great to see. Look, they felt a weakness in Liquid, and we'd all talked about it in the past. The fact that mentality speaking, or when it comes to psychology, Liquid could be a team that would fluster a little bit. I think Apeks did the most of it. You look at this overpass, you look at the clutch from Nog, and it just puts the NA dream in the bin. Vitality were a little bit stronger, and I think the first map of that semi-final is a good example. It's the 16-14, but once you get to round 29, 28, and 30, it's actually Vitality who's just passing the shoulder. And once we moved on to map number 2, it didn't really was a question in my head. It's kind of clear that Vitality were going to close it. The first map was where I got a little worried. Yeah, it was a date with destiny that Vitality were going to be the eventual ones making it to that grand final. But we have to give some props to your man of the hour, Jacob Kixon, because you've been very impressive what this in-game leader has been delivering on the server, both in terms of strategies and in terms of his firepower as well. One of the best signings
of any team for a long, long time. I'm not gonna lie, the way Kixen has come into Apeks and made them hyper competitive, sure, you can't credit it all to just him. He has a support staff behind him as well. Kuben, the coach, I think he deserves a lot of credit as well. Mitha, the assistant coach, he used to be a tier 1 head coach, but he's been assisting them. So they sort of have had 2 coaches to help them out throughout the entire tournament. And I think that whole family feeling that I've been experiencing, watching and observing in the studios have helped them quite a lot. It seems like a unit, it seems like a project, and it seems like a family that believes in each other. And that goes a long way in Counter-Strike as well. I'll see if they can pass the test of time. That to me is the thing, yeah. The one issue with some of these crazy Cinderella runs is that, yes, it all came together here in Paris. And the Counter-Strike you've played was magnificent. You had a couple of individuals popping off. You had an IGL who's suddenly under the spotlight. I agree with you, Jacob. But can you actually sustain the test of time? Can you actually go into different tournaments? And it's going to be hard for them because they're not going to play in such prestigious events for a while. Probably it's going to be a couple of subpar events where we all know it's harder to have the best motivation. But if you want to really pierce through that, you have to do it if you're Apeks. It's the same for GamerLegion, it's the same for Monte, it's the same for a lot of these teams, because you're right, it is the test of time. Yeah. This major in itself, if we look isolated at what we've seen so far, it's been fantastic. It's been a major of the underdogs. You should never underestimate the underdogs. But as you said, the test of time will have to stand. And whether that's going to be in CSGO or Counter-Strike 2, well, we'll have to wait and see. And Vitality firmly withstanding this test so far. We talked about it yesterday. The only time we have ever seen another team hoisting a major trophy without dropping a map, that was NaVi back in Stockholm. Obviously, we don't know the result of the grand final just yet, but Vitality have just been going from strength to strength to strength, and it's amazing to see on their home soil. It is amazing, and honestly, Frey, you're human. It's normal that your mind goes there. We're all thinking about, hey, any comparison possible. Not the same kind of opposition along the way, but still undefeated. And we might just be stepping into the trap that Vitality might step in, which is to imagine yourself already hoisting that trophy, thinking that that game is going to be just right for the taking, you're going to have a grand old time. I'm sure Heroic, after spanking FaZe on map 3, we're probably thinking, oh yes, GamerLegion on semi-final, yes, let's go, come on! And that didn't pan out, so we have to be real careful with that. Now, you're not wrong when you're saying Vitality haven't lost a map so far, but they haven't really dominated their opponents either. None of the maps they won so far has been with single digits. All the games have remained somewhat competitive. So while Vitality have this great ability to always win their game, which is what matters the most, of course, take nothing away from that, all these different maps they played so far at this major have been somewhat competitive, somewhat close. So if you're GamerLegion, you just want to get that game close, and then you have to push it over the finish line to perhaps take the first map away from Vitality. But that's the thing, we haven't seen Vitality emotionally crumbling whenever anything has got close, and that is such growth, maturity. Exactly, that's what I'm saying. I feel like everything is peaking at the right time for Vitality. Don't want to jinx it, but this is... You've seen them lose a map? Have we seen them lose a map on the stage and see how they've reacted? They haven't. They haven't lost a single map quite yet, and I don't know how they're going to react if GamerLegion manage that feat, but that's music for the future. Well, we will be getting that in the future indeed, but before we do that, it's time to throw things to a short break. When we come back, inching ever closer to that coveted grand final, and of course, our show match.
one of the toughest roads in the entire Counter-Strike calendar, and we call it the most prestigious trophy for a reason. It has been a long journey for our remaining 2 teams to make it here. Some teams have thrived, whilst others have unfortunately failed to survive. We're talking about some of the teams that we were hoping to see gracing this arena, let alone in the grand finals. For the first time in history, we see the reigning major champions of VP unable to make it here. Yeah, they had quite the experience at the Arma. I don't think I've ever seen a major winning team not making it to the next major, and I've never seen a team make a substitute or a roster change in the middle of the goddamn that tournament. Still makes me angry. It still makes me angry as well. I don't know what the hell happened to Outsiders. I don't know what the hell happened to VP, but making it to the major, that was never in the cards apparently. I mean, for my money, this was unacceptable. Like the roster switch halfway through. But another heartbreak for you. We can go now to Cloud9 as well. Unfortunately, not with us here in Paris. We all know the fate, the destiny that they had, that matchup against FaZe Clan to make it just to the challenger stage. That was heartbreaking. One would argue it's the consequences of your own action, right? You didn't end up in that position because you beat anybody. We have their results right here. And of course, there are a couple of losses. 0-2 to ENCE, an 0-2 to G2, a BO1, of course, lost against Monte. You kind of reap what you saw, right? And at some point, there's only so much we can do to protect the big names and to make sure they're here. You still have to go through games. You still have to win some of these games if you want to be at the major. It was the mental collapse we saw in that game against ENCE. The 0-2 defeat. We saw Shiro in the middle of the game almost lose it, almost started crying when they get down 14-11 on Vertigo, second and deciding map. We saw it against FaZe as well. They were up 14-5 on Mirage in the deciding matchup, and they completely just collapsed one more time. So it was the full mental breakdown we saw of Cloud9 in that qualifier, and that's what I remember the most. Yeah, the fact that we heard them saying in Rio, you know, the subsequent event afterwards, they didn't even talk to each other before getting on that plane. They did not discuss that loss. Unfortunately, we saw them crumbling. I'm not a relationship Rio, expert, right? but I feel like at some point it's going to come out, so you may as well get it out. It's got to come out. It's got to come out one way or another. Yeah. You know, a team that we didn't see coming out, unfortunately, was Astralis. Obviously, maybe it's not so much for a surprise, rather, when we're looking at some of the players on this lineup, but the fact that Device is back in that star-studded roster, the fact that we look at this team to be one of the most winningest orgs in the entirety of CSGO history, that is why it is a disappointment to see them not even making it to challengers. Especially considering they came into the tournament and we were starting to believe a little bit. They were starting to show progress. They were starting to show decent results at the online tournaments. Of course, the return of Device gave us hope that Astralis would make it, but I guess the way I will phrase it, and the way I have been saying it for quite some time, for Astralis, it sucks to suck. That's deep analysis right here. That's why he's getting paid the big bucks. Look, you lose 0-2 to NIP. The scorelines aren't even close. It's a 4-16 loss on Nuke. It's a clear loss on Vertigo as well. And I was very frustrated about it. I'm not gonna lie. I was upset. But I saw how Device was playing. I thought we need to see him at the major. Just for the adventure, just for the arc, just for the redemption of him, you know, moving away. NIP, tough times, he's been a bit more open about it. He's been public about what happened at the time, but still he's got that element of class. He's got that element of uniqueness. Device is not like anybody else. And he was so quick to be back at his great level. You pair him with Blamef, controversial player, but the output is still here. And you're thinking, no way these two players on here. No way Axile and Shiro on here. But turns out when a team is dysfunctional, these stars won't be enough. And the problem with some of these teams, and all of them we're going to cover in this segment, is that we are finding ourselves in a key moment in the trajectory of Counter-Strike. We have the end of CSGO that's looming very, very close. This is the last major now. CS2 is around the corner. Player break is around the corner. It's time to make some changes. Change the furniture. You don't like the sofa? It's time. Change it. The fact that Astralis lifted not one, not two, not three, but 4 major trophies in the organization's history, that is why we have such high expectations for what we consider to be one of the greatest in-game leaders of all time and a multi-time winning major MVP in Device. Listen, there's no doubt that Astralis will go down in history as the greatest organization and the greatest team in terms of winning trophies and winning the big ones. No one comes close to that in that regard, but it's just a bittersweet feeling that they're not going to be at the very last major. I completely agree with you. It sucks right now for Astralis. They are in a time where they need to find a different direction. Some of these moments, some of these trophy hoisting moments you're seeing on your screen right here is great memories for me. It's a team that inspired the entire Danish scene. It's a team that inspired the world of Counter-Strike. We talked about Heroic doing the same thing, but Astralis, it's a long time since we've been excited about them, and I sincerely hope that they're going to change that for CS2. I think a team that we were inspired by throughout basically the duration of 2023 was G2. They were amongst, you know, one of
of a handful of names that we were looking at this trophy and saying, hey, they should be lifting it, not least because Nico in his career has never lifted a CSGO major trophy, and Matthew, he won't now. Yeah, and it felt like it was lining up as well for G2 in a way. You think about the peak they've had towards the end of last year. They repeated defeat in Katowice, one of the most prestigious, hard-fought scenes we have in Counter-Strike, and now I believe that, for my money, I think that the Challenger stage went too well for G2. And I think as a team, it can be dangerous when you have that feeling of, man, we're destroying everybody. Like, we're gonna win this damn thing. And then when you're presented with the first kind of opposition, you don't really know how to handle it. First tight match they face, Vitality, they lose 13-16. They go on to do exactly the same against Bad News Eagles. So very early, we could see that. Although the quality of the squad is not exactly questioned, I mean, you could go from coast to coast when it comes to players. Hooks is a different debate on his own, but I don't think that mentally they were ready to fight from behind. I don't think they were ready to dig themselves out of holes, because Challenger stage was basically an all-inclusive vacation in Tenerife, just sun, having a good time. That's how it felt like to them. It was a massive disappointment for G2. There's no doubt about it whatsoever. I just want to provide the context for people at home as well, because I feel people forget very, very quick. They have the second longest map win streak out of any team in the history of CSGO, and they made that happen this year in 2023, combined with the end of 2022. As you said, they won in Abu Dhabi, they won the World Finals over there. They started 23 by dominating everyone. How they played and how they conducted themselves at IM Katowice was absolutely fantastic, and then they fail here without making an impression. It doesn't make any sense to me whatsoever, and that's why I think it's one of the biggest disappointments I've seen in this major so far. Another disappointment we have to throw into the ring, unfortunately, is NaVi. The fact that we saw them going up against FaZe in what, for my money, was one of the best matches, if not the best match in that Legend stage. The fact that those two teams had to collide, though, Jacob, in that last chance to make it here. Typical FaZe fashion, but for NaVi, I thought they'd be making it through earlier. To me, there's two stories right here. One being Simple, obviously not making the last major playoff inside this arena. I wanted to celebrate Simple. I wanted to see him play. I think everyone did. He couldn't make it with his team. The second side of that coin is that I think at least I saw it coming. NaVi with Electronic as an in-game leader, I'm not going to pinpoint him and say he's the reason why they're not succeeding right now, but I think this whole situation with how they've dealt with all this, stuff going on in Ukraine, how they dealt with everything that is going on right now, it's taking a toll on them. They haven't been able to find a replacement for Boomage. They had to slot in Electronic as an in-game leader, and ever since we haven't seen NaVi play it remotely to the same level as they did before whatever happened in the early 2022. So to me, it's a bad way to end, and I honestly feel sorry for them. Yeah, and it was very uncharacteristic. I think in general, when you refer to NaVi, one of the first items that comes to mind is how resilient they are in-game and how hard they are to put away, right? There are teams who sometimes will roll over and lose 16-2, but this is supposed to be the opposition of NaVi, the contrary, right? And they have so many of these games that happen right here in Paris. You think about the game against Liquid, where it just felt like they couldn't handle Yekindar at all. Basically, from start to finish, the game plan went to hell. Then there's the games against Monte, same scenario. On that first half of Nuke, they have absolutely lost. And this, to me, is a very unique moment to see NaVi kind of find themselves struggling with. And again, I just think that key players in that roster have lost faith in the fact that this is going to work. And in really hard moments, they kind of lost their ties. They lost their bound between players and just completely went to hell. Of course, the team that we're talking about knocking them out of making it to playoffs was FaZe Clan, and then they go up to face against the Deadly Danes, or what we thought were going to be the Deadly Danes of Heroic. They did manage to chop FaZe Clan out. It was great to get to see them, making it to playoffs after literally, making it through at the last chance every single time. But faltering to Heroic, unfortunately, ended in the quarterfinals. Was a bit of a weird last major for FaZe, because as you said, they weren't even supposed to be here. We had this last chance qualifier in Europe, and by then they ended up beating Cloud9, booked a spot into the Challenger stage, where they also struggled, where they also had a tough time. Same for the Legend stage. It's I don't know how to describe it for these guys. FaZe never played their A game. At no point at this tournament did I feel FaZe played good Counter-Strike. They have a certain flaw, they have a certain charisma, they have individuals that can change the tide of a game. You look at Twist, you look at Brokey. Brokey had a fantastic showing against NaVi. He was the reason that they won that game, but at no point did I feel FaZe showed up at this tournament despite making the quarterfinal. I agree with you, and I let myself be very excited, enthusiastic about FaZe, and I think it's because of some of these very key moments, some of these comebacks where you could see that in an instant, for about
8 to 10 rounds, it was all coming together for FaZe. And they were reaching that peak that, once again, everybody can make the difference. They're never going to fall behind. Doesn't matter if the scoreline is 14 to 8. Once they've hit that peak altitude, it's over. And I think this kind of blindsided us from the lack of quality that was underneath it and why they were getting themselves into all of these situations. Why BNE was about to beat them. Why NaVi was about to beat them. Why they had to be in the last chance qualifier. There is a truth to it that you can, or we wanted to ignore because of how incredible they can be in some of these moments, but there were issues in FaZe. Gentlemen, I'm feeling a bit down after that. Wait, are we talking about the teams who didn't make on the lows. Let's bring up a high. Let's bring up your first ever CSGO major back in 2013. Look at this throwback. We got Dupreeh in there. Apeks as well in contention with lifting his second major trophy. Emotions. I just want to say thanks to Blast to provide us a picture of 8% of my face, which is basically top left corner. Probably if you have a phone, you can't see me right there behind Apeks. Not gonna lie, back then I kind of did feel 50% of every picture I was in, you know. It was a different person back then, but it's kind of cool to see Dupreeh, Apeks, me, you still hanging around. 2013, can you believe it? That is such a long time ago. There is a bit of a contrast in that picture, you know. 2 of these people are on the desk, and the other one is actually playing for the grand final of the major, so you tell me where we were. Yeah, 2 of them, actually. 2 of them! Yeah, right? Isn't that crazy? How the turntables. Let's take a look at our show match, which is going to be going down very shortly indeed. We have Dream Team, which you guys have selected at home at blast.tv, and of course Team France as well. Oh, we're getting the map video in. We've either got Nuke or I believe it was Inferno that was going to be chosen. Let's give us Nuke. Please say Nuke, please. Team France is playing. Yes, Why God bless us. Yes. Hey, it's Nuke. We love that. We should have tricked everybody and went to Dust 2 anyway because it's Team France. But we're not going to do it. We're going to do Nuke. Well, we are going to be getting to the show match very shortly indeed, but not before we head to a quick break. When we are back, it's time to welcome the teams onto the stage.
bonjour. Bonjour la Arena. Oh, CND. This arena's taken a lot out of you, brother. How are you doing, man? I'm doing very good. How are you doing? Good. My voice too. Yeah, we good. think. Very good. He might need a little help from the crowd throughout this one, but we're about to have a lot of fun. It's time for our Blast TV show match to warm you up for the last ever CSGO Major Grand Final. Now, when it comes to this, you guys on Blast TV have been able to vote and have your say on which map we'll be playing. We're getting nuke between these two teams, and you also were choosing the players. Now, the French Dream Team looks pretty stacked. You've got a good roster. Good roster. Very good roster. But with Shocks and Kenny S. Oh yes, there's a lot of legacy in yours. Yeah. I got the young guns, some of the greatest, you know. Not bad. But I think we're ready to see this party get started. Guys, are you ready for the Dream Team to win? That's not bad. What about Team France? We are in their backyard. It does make sense. Well, it's time for us to see these teams take to the stage. So make sure you're giving them a big round of applause, making lots of noise, and getting yourself hyped up and ready. It's time for the Blast TV show match! This is the Dream Team. Stiko, the Slovakian stallion who knows what it's like to perform on this stage. Smooya, streamer by day, sexy sloth by night. Get right. Don't stop believing. He's going in for his last CSGO major win. Cypher, the British bulldozer, opening things up. Simple, the greatest player of all time, The Undertaker. Give it up for the Dream Team! This is Team France! Shox, la plus grande légende du Counter-Strike français. De source à CSGO, en passant par 1.6, il est indémodable. Jax,
aussi connu que ses entrées pour son déhanché sur le dance floor. Il est l'atout charme de l'équipe de France. Kenyes, le magicien, à peine retraité, il est déjà de retour sur les serveurs. Il est le joueur le plus spectaculaire de sa génération. Body, oh Body, rescapé de la super team, il est toujours l'un des joueurs français les plus compétitifs. RPK, le tank, la légende, mort banane, sur la piste. Lui n'a jamais de problème dans son oreillette. Let me hear it for Team France! Well, there we have it, Jason. The show match is all set up for us. We got Team France versus the Dream Team. How are you feeling here on Championship Sunday? How's your mood? Oh, well, obviously excited for the grand final. That's going to be an absolute bang. Ladies and gentlemen, आप सबको वापस स्वागत है इस आखिरी मेजर के आखिरी दिन पे। शुरू जरूर एक बेहतरीन शो मैच से होने वाला है, बट अंत एक चैंपियंस टाइटल से आपको देखने के लिए मौका मिलेगा। कौन होगा उसका इंतजार रहेगा, बट द एब्सोल्यूट बेस्ट राइट नाउ ऑन स्टेज। बट इसको शुरू करने से पहले हमारा इंट्रोडक्शन जरूर दे देंगे। मेरा नाम है लूसिफर, मेरे साथ मेरे मित्र जुड़ते हुए नजर आएंगे। That's going to be Mamba to take this whole day ahead. And Mamba, how are you feeling seeing these amazing players on stage? इनक्रेडिबल। मेरे लिए तो कह सकते हैं कि जो पुरानी यादें हैं वो वापस आ रही है। आप देख रहे हैं आरपी के, कैनी, शॉक्स, जैक्स एक टीम में खेलते हुए, लेजेंड्स ऑफ द गेम। इतना ज्यादा अपना समय दे चुके इस गेम की बात करें गेट राइट के बारे में, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने आपको बताया he's one of the greatest players of all time. Smooya, Styko, Cypher and Sybil of course, जिन्हें को इंट्रोडक्शन की जरूरत है, लेकिन मैं देखना चाहता जरूर हूँ यहाँ पे किस तरीके से ये दोनों टीमें हमें ट्रेन करने वाली। बिकॉज ऑफ कोर्स देखिए, सिर्फ ये शो मैच में सिर्फ गेम नहीं खेली जाएगी, उसमें काफी ज्यादा एक एलिमेंट है सरप्राइज का, जहाँ पे ग्रेविटी कम की जा सकती है, जहाँ पे सिर्फ ग्रेनेड्स यूज होंगी या फिर अनलिमिटेड ग्रेनेड्स होंगी। जो रिकॉइल है वो भी डिसेबल किया जा सकता है, तो ये वोट करेगी जो ब्लास्ट की ऑडियंस है उसके ऊपर, लेकिन वो हमें मैच में पता चलेगा। बट एट द सेम टाइम सीइंग लेजेंड्स लाइक दिस इन द सर्वर, राइट? अब गेट राइट की बात करते हैं, अब केनी की बात करते हैं, टू ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स टू एवर टच द गेम। ये एक दूसरे के खिलाफ खेलने वाले, लेकिन जो हमारी फ्रेंच टीम है होम सॉइल पे खेलेगी, तो मुझे ये लगता है कि जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे हाइप्ड होगी। I mean, ये ग्रैंड फाइनल्स का दिन है एंड हमने एक्सपेक्ट किया था ऑडियंस विल गो बलिस्टिक, बट अभी शो मैच के लिए इतना ज़्यादा सपोर्ट, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड हैविंग गूज़बम्प्स। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक आई हैव दिस हाइप द होल डे। पूरा एनर्जी भरपूर रहने वाला है, कोई इसको छीन नहीं सकता हमसे। एंड जिस हिसाब से जो ऑडियंस रहेगा ना, वो खुद हमें एनर्जी वापस देती हुई नजर आएगी। यही मुझे फील हो रहा है माम्बा। दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेक्टेकल टू वॉच, अ साइट टू विटनेस। आई वुड विश जो भी देख रहे हैं ना दर्शक, वेदर देयर एट द लैंड और अभी ऑनलाइन यहाँ पे इंडिया से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, get in all your friends, tell them this is going to be the last one for the year for CSGO. and कोई भी जो दर्शक है, जो भी फैंस थे, जो भी early players थे, अभी स्विच हो चुके, all of them need to witness what's happening today. Oh absolutely, there's no doubt about that. ये एक ऐसी चीज है जो आपको हर रोज देखने नहीं मिलती है। It's very difficult to come across something like this. और मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा। I also want to thank Blast for making this happen, because जिस तरीके का ये माहौल पैदा करता है, वो भी ग्रैंड फाइनल्स के पहले, I do believe ये शायद काउंटर स्ट्राइक के जितने भी मेजर्स हुए उसके इतिहास में वन ऑफ द फाइनेस्ट मेज होने वाला है। बट जरूर क्राउड की तरफ देखेंगे, अभी भी स्टेडियम पूरा भरा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा आवाज कर रहे हैं ये लोग। लेकिन जब वाइटैलिटी स्टेज पे आएगी, गोल्डन हॉर्नेट्स पूरे के पूरे स्टेडियम को भर देगी यहाँ पे। I can see already instruments. Golden Hornets का एक नेस्ट बन चुका है, एक पूरा फाइल बन चुका है, even though match yet has not started. And आप देख सकते हैं ऑडियंस इंतजार कर रहे हैं, काम करने अपनी एनर्जी को, बट आज के दिन पे लाइक फुल ऑन represent माम्बा।
I mean, मैं तैयार हूँ इसके लिए. Like, I don't know what more. I mean, मैं ज़्यादा अगर बात करूँगा, I feel like it might not add value. But दूसरी ओर ये लोग जिनको हम देख पा रहे हैं, इनको just देखते देखते हम रह सकते हैं without saying anything. जी हाँ, but ये सारे के सारे प्लेयर्स RPK इतने वक्त बाद he seems like one of the finest wines. उनको कहा जाता है he was an absolute beast उनके ज़माने में. लेकिन साइफर देखिए किस तरीके से बैठे हैं वहाँ पे, जिस तरीके से बैठते हैं काफ़ी यूनिक है. लेकिन RPK वापस इस टेबल के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर जो इमोशंस होते हैं, जो खुशी मिलती है आपको, वो आप बयान नहीं कर सकते शब्दों में. आपने मुझे देखा है लाइन पे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई रिमेंबर जब अभी रिसेंटली काउंटर स्ट्राइक खेली थी, आप कास्ट कर रहे थे, मैं खेल रहा था. बट अगर एक चीज़ नोटिस करी होगी, वो मुस्कान हमेशा रहती है चेहरे के ऊपर, बिकॉज ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव है, उसको आप बीट नहीं कर सकते. आई एग्री विद यू. आई मीन, हमने बात भी किया था उसके बाद में आई थिंक लैन हैज़ इट्स ओन फीलिंग. हारे या जीते, बट वो खेलने का मज़ा, ऑडियंस का सपोर्ट, दोज चीयर्स कमिंग इन, अनपैरेलल्ड क्लचेस जो देखने के लिए मौका मिलता है, इज जस्ट अनबिलीवेबल. जिस हिसाब से एक रिएक्शन होता है, जिस हिसाब से प्लेयर्स इतने जोन्ड इन हो जाते हैं, कभी कभी भूल भी जाते हैं वो एक शो मैच है, एंड दे स्टिल पुट अप देयर बेस्ट. वो इसका इंतजार जरूर रहेगा. ऑडियंस काफ़ी बेहतरीन ऑडियंस है फ्रांस की. मैं ज़रूर उनको दाद देना चाहूँगा. जिस तरीके से यहाँ पे माहौल बना है, जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं स्पोर्ट को. आई डू बिलीव एक सर्टिफिकेशन ZywOo वाइटैलिटी. अच्छा, ये तो फ्रेंच में लिखा, हम पढ़ नहीं पाएंगे. आई मीन, मैं थोड़ा समझने का ट्राई कर रहा हूँ, बट पहले दो शब्द के बाद कुछ समझ नहीं आया. लाइक ठीक है, जाने दो. लाइक एटलीस्ट जो लिखा है उन्होंने पेन से, एटलीस्ट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. बट अभी तक नहीं. जी बिल्कुल सही कहा. लेकिन ऑडियंस धीरे धीरे वार्म अप करेगी, धीरे धीरे माहौल बनेगा यहाँ पे इस शो मैच का. और जैसे मैच शुरू होते, देखिए शुरुआत में हर कोई टाइटन का टी शर्ट पहन का यहाँ पे. शॉक्स बाय द वे, इफ यू डोंट रिमेंबर, टाइटन लेजेंडरी लाइनअप था जो उनके प्लेयर्स हुआ करते थे, जिस तरीके से खेलते थे, बहुत डोमिनेट किया था उन्होंने उनके ज़माने में. और मैं तो यही कहूँगा कि brings back a lot of memories. It brings back so many memories. अगर उनके रोस्टर की मैं बात करूँ, but nonetheless, डॉस के बारे में बाद में चर्चा करेंगे. यहाँ पहला राउंड शुरू होते हुए देवी और सजनों, let's hop in the match. मुझे जो बहुत मज़ा आ रहा है ना, हमारे होस्ट भी जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो कोचेस सीट ले चुके हैं इनके पीछे. We will jump right into the game. शुरू हो चुका पहला राउंड. They're gonna go out with weapons. Head on. First one to go, body. Oh, उसके बाद shocks. Cypher and Styko going hard in the start itself. RPK. What? Wait. Don't tell me. Oh, Kenny has. It was a knife exchange, right? दोनों ने नाइफ निकाल के ट्राई किया था. नहीं, वो नीचे साइलेंट जंप करने की कोशिश कर दे, गेट राइट तैयार बैठे थे नाइफ करने के लिए, लेकिन was Kenny that came out on top of that one. अब Kenny versus Simple. दो ऐसे प्लेयर, दो ऐसे खिलाड़ी जो इस गन के साथ बेहतरीन तरीके से खेलते हैं. लेकिन क्या यहाँ पे सिंपल इनको एक्सपेक्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है. कहाँ पे खेलेंगे ये जानना होगा. Kenny अपर बॉम्ब साइड की तरफ, सिंपल नीचे प्लान करेंगे जरूर. 30 seconds on the clock. Oh my goodness, the battle of titans. Kenny versus Simple. कौन जीतेगा ये फाइट? Simple नाइफ लेके बैठे हैं यहाँ पे, शायद नाइफ करना चाहते हैं, I'm not sure. But लाल के लिए फ्लैश भी डाला जाएगा. Simple शॉट लेने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मिस करेंगे. नो स्कोप करने की कोशिश, दोनों प्लेयर्स वहां पे नो स्कोप कर रहे हैं. दोनों प्लेयर्स नो स्कोप मिस कर रहे हैं. Simple जो शोमैनशिप है यहाँ पे दोनों टीमों की तरफ से शानदार. लेकिन मैं ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि
टाइटन की जर्सी अभी तक उनको फिट आती है शॉक्स को। सी दोनों ने नाइफ निकाला था, वो जंप आया जरूर बट द नाइफ एक्सचेंज। ओह, एक ने सोचा कि हम निकाल लेंगे आसानी से, बट डिड नॉट वर्क आउट। डिड नॉट वर्क आउट फॉर श्योर, लेकिन हाइपर स्पीड अब बहुत तेजी से भागेंगे। ये जो राउंड्स है, यूनिक राउंड्स की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे प्लेयर्स इनक्रेडिबली फास्ट जा पाएंगे। फिर एक और राउंड होगा जिसमें C4 टाइमर 20 सेकंड कर दिया जाएगा, लेकिन ये देखिए स्पीड देखिए प्लेयर्स की। Run and gun. Get right, gets 4. T90 the best. Oh no, Kenny coming in from the back. Defuse करने के लिए भी बैठने वाले थे, but again simple versus Kenny होता हुआ। What a round. Get right, 4 किल निकाले वहां पे, 4 किल, सोचिए आप। Yeah. वो replay भी super fast. I wasn't expecting that. Hyper speed में replay भी. Neither was I, I'll be honest. लेकिन बेहतरीन, अब ये कितना ज़्यादा slow लग रहा है देखिए। Yeah, like this is not the game. ये नहीं देखना है, मैं ऐसे लग रहा है। बेहतरीन इंसेंडिव यहाँ पे साइफर अंदर जाने की कोशिश, लेकिन क्या नाइफ करेंगे? साइफर! जब भी ऐसी आवाज आए गोली चला दीजिए अपने सामने। Yeah. लेकिन केनियस आउटर की तरफ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश, ये नहीं मिस करते। He doesn't miss those shots, लेकिन जैक्स भी एक किल निकालेंगे अपने आप के लिए। नहीं मिस कर दिया। Expecting the duel. 4v2 situation. Kenny another shot. Simple आसानी से उसको फाइट लेने के लिए मौका नहीं दे रहा है। एक्सचेंज हो रहा है, फाइनली सिंपल थोड़ा डैमेज खाएंगे। R8 रिवॉल्वर लेके राइट क्लिक कर रहे हैं वो। Shocks. He's good with a deagle. नाइफ के लिए बुला रहे हैं यहाँ पे। डिफ्यूज हो जाएगा। He throws all his weapons with booty. No, you don't do that to get right. Yeah. देखिए आप एक चीज अगर नोटिस करियो, बॉडी मजे ले रहे थे वहाँ पे, गेट राइट किया होम क्राउड के सामने, लेकिन फिर भी होम क्राउड ने चीयर नहीं किया। ये दर्शाता है कितने दिग्गज खिलाड़ी है गेट राइट। Smoke in here. धुआं हो जाएगा यहाँ पे। बाहर धुआं हो जाएगा। This is a challenge. This is the show match. कुछ दिखाई नहीं दे रहा इनको। अभी रिप्ले मुझे देखना है, कैसे रिप्ले दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा। सिंपल और साथ में लाफिंग गैस अगर मिक्स किया होगा। वेट, दुआ एक ही साइड नजर आ रहा है। हाँ, वो देख के मैं काफी ज्यादा चिंतित हूँ। I thought it was for both the players, unless it's only for one team. Yeah, I think एक राउंड एक टीम के लिए, दूसरी राउंड दूसरी टीम के लिए हो सकता है। Wait and watch. एक राउंड में तो ऐसा भी होने वाला है जब मैं मॉनिटर बंद करके खेलना पड़ेगा इनको। Interesting. हर राउंड $16,000 मिले मेरे ख्याल से इन प्लेयर्स को। Yeah. Full money. Get right. ये नाइफ्स के लिए जो इंतजार करते हैं खिलाड़ी, it's just brilliant to watch. Imposter बन के घूम रहे हैं वहाँ पे पॉइंट के अंदर। Get right. Get right. Ooh, Kenny. शॉट जरूर कनेक्ट किया था उन्होंने वहाँ पे उनको। He's still good. स्टीको को डाउन करेंगे। It is 3v3 situation. आगे जा रहे Kenny, good वो one quick trade. दोनों like similar 2v2 situation पे। Oh, body! He saw all of that happening.
आई थिंक किल उठा लेना चाहिए था बॉडी को. अभी 1v2 सिचुएशन हो चुका है. मैं कहता कि वहां से सीधा लैडर से कूदते हो उनके ऊपर. Oh no, it doesn't happen. बॉडी एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां पे. Oh my goodness. ये देखिए ट्रिक शॉट करने की कोशिश. पूरी तरीके से ट्रिक शॉट करने की कोशिश. लेकिन ये देखिए गेट राइट. ही नोज व्हाट्स अप. ये इतने सालों से गेम खेलने की ये नहीं. ही इज नॉट गोइंग टू फॉल प्रे टू दिस. बॉडी अभी भी वापस कोशिश, लेकिन नहीं. गेट राइट इन द नाइफ कर देंगे. आपने बोला था बॉडी को ही शुड हैव डन द जंप. वो सीधा छलांग मार के नाइफ करने का इरादा बनाते. इट कुड हैव बीन नाइस, बट वो ही गेट राइट उनके ऊपर करके दिखा दिए अभी. लेट्स सी स्मोक के थ्रू क्या खेला है. साइफर तो नजर तक नहीं आ रहे. दिस वाज इन द स्मोक जो यहाँ पे राउंड निकाला है. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. लेकिन अब देख नहीं बनता है. क्या मॉनिटर बंद करना होगा? जी हाँ, शायद मॉनिटर बंद करना होगा इनको. अनलेस वो राउंड नहीं बुलाया नहीं गया, अभी तक बुलाया नहीं गया. चालू है मॉनिटरिंग का. देयर इज अ राउंड जिसमें मॉनिटर बंद करना होगा इनको. Wait, is he playing with arrow keys? Wait. Hold on. I think एक प्लेयर है जो arrow key से खेल रहे हैं. Can we see that again? Yeah, I guess we can. Oh, upside down. Oh my god, mouse invert हो जाएगा इनका. Yes. I don't think ये players उतना आसानी से ये खेल पाएंगे because जिस तरीके की मसल मेमोरी होती है इनकी, it's like second nature. Yes. आपको मालूम होता है किस तरीके से आपका माउस रिएक्ट करने वाला. Oh my god. ये हम सोचे थे माउस अब इन्वर्ट होगा, बट व्हाई इज द कैमरा एंगल एज वेल. वो तो कैमरा एंगल ऐसे इन्वर्ट था, लेकिन माउस इन्वर्ट होने वाला है. हाँ. देखिएगा आप, देखिए किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे. ऊपर देखना चाहते पर नीचे देख रहे. जैक्स कैन ही गेट इट. ट्राई कर रहे. He gets it. अब उनके लिए मुश्किल नहीं होने वाला है. अब मुश्किल नहीं होगा उनके लिए. एक बार लेफ्ट राइट घुमाना आपको पता चल जाए, फिर आप आराम से किल निकाल लेंगे. What? ये देखिए कैनी स्ट्रगल करते हुए. What a game. सिंपल. अभी भी ट्रस्टी ऑप के साथ. दो लोग रहने वाले हैं. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे ही पूरा का पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट तो होने नहीं वाला. मैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक आध दो खिलाड़ियों को जानता हूँ जो एक्चुअली इन्वर्ट माउस पे खेलते हैं. इंडिया में एक प्लेयर हुआ करते थे कविश करके, वो इन्वर्ट माउस पे खेलते थे. बट अभी ये देखिए टीम फ्रांस अपने टीममेट्स को मॉली करते हुए नजर आए. सिंपल. आरपी के देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं ये. इज लुकिंग समवेयर. थोड़ी देर तक रुके आरपी के. ही वाज लाइक वेट एंड इज लाइक नहीं, इनको नहीं मिल रहा है वो पोजीशन ठीक तरीके से. स्ट्रगल कर रहे हैं वो देखिए. ये जो फ्लिक था वो देखना चाहता हूँ. जो दूसरा फ्लिक मारा था वो खतरनाक फ्लिक था. स्मोक होल्ड करके बैठे थे. ये जो बाकी वाला फ्लिक था वो दिखाना चाहिए था कैमरा पे. बेहतरीन. एनवी. ओह माय गुडनेस. इतनी ज्यादा यादें जुड़ी हमारी इस टीमों के साथ, इन टीमों के साथ, कि शब्द बयान नहीं कर सकते उस चीज को. ये एक वही बात हो जाती है. अगर क्रिकेट टर्म्स में आपको बताऊं तो आप सोचिए कि 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम अगर आज वापस क्रिकेट खेलती तो. सिंपल. अगर शॉट कनेक्ट होता तो कुछ बात थी, लेकिन अब गेट राइट बाइजन, लेकिन नो स्कोप खाएंगे केनियस के द्वारा. दो डायरेक्शन में साथ में पुश कर रहे थे. वही दैट वाज जूस राइट. दैट वाज जूस.
Up close strike कर रहे थे, but the flash denied with Simple is good one. Shocks 3v4 situation. Oh, try किया इस बार Jax ने. But the no scope coming from Simple. Oh, Simple and Cypher making it work, and जी हाँ राउंड जीत के दिखा देंगे. अब लगता है प्लेयर्स थोड़ा थोड़ा ट्राई करने की शुरुआत करने वाले हैं, because देखिए 2-5 राउंड बाद आप भूल जाते हो ट्राइंग टू हैव फन. ये हमेशा होता है जब खेलना शुरू करते हैं आपके अंदर ट्रिक शॉट के नहीं, आपके अंदर का जो कंपेटिटिव स्पिरिट होता है वो जाग जाता है और आप सोचते हो नहीं बहुत हो गया मस्त मजाक, अब थोड़ा जीत के चलिए. I think थोड़ा कॉम्स भी अगर दे देता ना बीच बीच में. Oh wow. And वो भी देखिए गन बाई बाई करके फेंक रहे. क्योंकि पैसा इतना ज्यादा है उनके पास, अब वेपन्स उठाएंगे अपने. एक बहुत पुराना मोड हुआ करता था स्काउट स्नाइप्स करके, देखिए सबने स्काउट उठा लिया अगर आपने नोटिस किया हो तो. ये इतना लेजेंडरी गेम मोड है. आरपीके कहां से प्राप्त किया वो? अभी तक हमें ढूंढना पड़ेगा खिलाड़ी कहां से खेल रहे हैं. गेट राइट फ्लोटिंग इन द एयर, लोगों के बीच में आए, स्टिल अनेबल टू कनेक्ट एनीथिंग. ओह फाइनली कनेक्ट्स अ बिग डैमेज. नाइफ करने के लिए जा रहे हैं बट जैक्स नो स्कोप. छोटी सब लोग सिंपल के ऊपर. सिंपल यू कैन गेट इट. सिंपल उनके ऊपर है 1v1 नाइफ. सिंपल दिस माइट बी हिज थर्ड नाइफ. Doesn't get it. Jax to the moon indeed. Incredible stuff. I feel like a kid in a candy shop right now. मैं मजाक नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अभी भी याद है ये कुछ 10-12 सालों पहले की बात है जब काउंटर स्ट्राइक 1.6 खेली जाती थी. उसमें एक मैप होता था स्काउट्स नाइफ्स करके जो हमेशा कम ग्रेविटी पे चलता था हमेशा, और ये उसकी यादें ताज़ा करता है. उसकी वजह से काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव में एक गेम मोड आया था फ्लाइंग स्काउट्समैन करके, जो एक कम्युनिटी मोड हुआ करता था, कम्युनिटी सर्वर हुआ करता था, और उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट. Shotguns. (3v3) P90 के साथ with the shotgun is still good. Looking for another. Stiko 3 in the round. Plan नहीं हुआ है. Shocks in a 1v2 situation. एक तरफा shotgun, दूसरी तरफा op. Brilliant grenade. प्लान जरूर हो जाएगा. शॉक्स चेकिंग कहीं ना कहीं अगर नाइफ करने वाली खिलाड़ी आ रहे हैं वेंट्स को चेक करके आगे आ रहे हैं. माइट फाइंड वन एट द रिएक्टर. डोर ओपन करेंगे. कॉट ऑफ गार्ड. स्मूया इज वेटिंग विद द ऑप. गेट्स इट. खुशी देखे इनके चेहरों पे. यहाँ पे अब इतने ज्यादा वो शांत नजर आ रहे हैं, इतने ज्यादा स्वीट नजर आ रहे हैं, लेकिन जब इनके प्राइम में खेलते थे ये सारे के सारे प्लेयर्स खूंखार हुआ करते थे. टैंगो ये गेम मोड के बारे में तो मैं भी भूल गया. पढ़ा था मैंने सुबह सुबह, but now I've forgotten. We'll see in the game. जी हाँ जरूर देखेंगे. आरपी को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए. जैसे आपने बोला आई थिंक वो भी है लाइक गेम मोड कैसे चलाते हैं. चेहरे पे खुशी देखिए इन सारे प्लेयर्स की. एक प्लेयर होंगे जिनके पास ज्यादा एचपी होगा. आई नो व्हाट दिस इज. बहुत ज्यादा एचपी होने वाली है इनके पास. इन आरपीके को दिया गया ये. फिटिंग, वेरी फिटिंग. इनकी एचपी इतनी ज्यादा होने वाली है कि इनको मारना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा. रनिंग राइट थ्रू एंड उनके पीछे पूरी टीम. आरपी के लिए कहां चले गए आप सारे? यू वर सपोज्ड टू बी बिहाइंड मी. गेट राइट. पहला किल जरूर निकालेंगे, दूसरा निकाल पाएंगे कि नहीं ये देखिए नाइफ करने की कोशिश. गेट राइट से रनिंग हो गई.
सीधा भागना चालू कर दिया उन्होंने, लाइक नहीं मरने वाले वो। हाँ, उनको जैसे देखे वो लाइफ के लिए इंतजार कर रहे थे, देन इज लाइक ओ वेट इट्स आरपीके, पूरा सूटेड अप है, कांट टेक इट। और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ काउंटर स्ट्राइक में पॉसिबल है। ये खासियत है इस गेम की, जो कम्युनिटी एस्पेक्ट होता है, जो मॉडिंग एस्पेक्ट होता है, वो यही गेम कर पाती है। बड़ी शानदार चीज़ है। लेकिन समूया आई थिंक आरपीके को ही भेजेंगे वहाँ पे उनको मारने के लिए। उल्टा आरपीके को डिफ्यूज करना चाहिए यहाँ पे। अरे नहीं मारना था, डिफ्यूज करते रहते। नहीं मार पाते हो उनको वो। Another round. बहुत इंटरेस्टिंग मोड्स है माम्बा ये सारे, लाइक they are also enjoying this major. First he was ready for the knife, but then he saw the suit. He's like, नहीं भागो यहाँ से, भागो। और आपको मैं बता दूं, 500 से भी ज्यादा डैमेज करता है हेडशॉट पे। तो अगर आप 5 प्लेयर्स इकट्ठा आप लाइन में खड़े कर दें तो 5 प्लेयर्स मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनको 50 डैमेज हुआ। 1000 HP थी आरपीके के पास। अभी भी इतनी ज्यादा इसको प्ले मॉडल अभी भी वही है। I saw the suit. जी हाँ है, suited up है आरपीके। That is very unfortunate. They have to take down this tank. I think तब तक ये चलता रहेगा। आरपीके दोबारा स्टीको को देख चुके हैं। 2v2 situation. ये टैंक को निकालना तो नामुमकिन होने वाला, मुझे नहीं पॉसिबल होगा ये। नहीं, गोली लग रही है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आरपीके भाग गए वहां से, भाग गए। सिंपल इज लाइक प्लान करके उसके बाद देखेंगे। That was a fake. यहाँ फेक किया है और वापस साइड पे जाएंगे। फुल ऑन माइंड गेम्स करते हुए सामने वाले प्लेयर के साथ। लैडर की आवाज सुनिए। Oh my god. आरपीके अभी भी टैंक्ड अप। सिंपल क्या करते हैं यहाँ पे ये देखना जरूर बनता है। He doesn't miss those. उनको फोर्स किया वेंट में आने के लिए, वर्टिकल एलिमेंट का फायदा उठाया और हेडशॉट लगाया। काफी स्मार्ट। ओनली द गोट्स कैन डू इट। Dream team versus Team French. Oh, flying पर, oh my god, मॉनिटर बंद करना पड़ेगा। Team France. और अब सिर्फ और सिर्फ उनके कोच इनको बताएंगे प्लेस कहाँ पे है। वो भी बड़े एलईडी पे देख के। This is going to be interesting. He's literally like an orchestra's master. वो बोल रहे कि मैं ऐसे हाथ हिलाऊंगा तभी जाएगा। दोनों तरफ के कोचेस है वो प्लेयर्स को बताएंगे। Yeah. Oh my god. Oh my god. Kenny का बोला मार, Kenny's mouse. ये आदत होती है उनको। सिंपल देखिए, अंदाजा लगाते हो अपने आप कहाँ चल के जा रहे हैं। Oh no, दोनों अपने आप को एक दूसरे को मिस कर लेते हैं। Simple firing in the air. Oh my goodness. This is too good. Oh P90 का पूरा फायदा उठा दे मैं। पूरा मैगजीन खत्म कर लेंगे, but I don't think he's going to find anything. ड्रीम टीम को ये भी अंदाजा नहीं रहेगा कि एक खिलाड़ी ऑलरेडी मर चुके हैं टीम फ्रांस की तरफ से अपने टीममेट की वजह से। Yes, RPK. Close. Oh no. देखिए हेडफोन पहना है तो they know that they're getting damaged. अपने टीममेट को RPK might just get actually 2 knives. 2 लोगों को बहुत कम किया है यहाँ पे RPK ने। Oh, we can hear the coaches audio थोड़ा बहुत feeble है माम्बा। Go right, go left.
साइफर अभी भी On va gagner autant. On va gagner autant. Oh no, time खत्म होने वाला है मम्मा. No, I want to see this round fully. ये आसान सा राउंड होता है सीटी साइड के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब टाइमर खत्म हो जाता है तो सीटी साइड जीत जाती है. I think at least 10 और मिनट तक चलता है ये राउंड, अगर ये ऐसे ही छोड़ते हैं हम. ये नहीं खत्म होता. पूरी रात निकल जाती लेकिन राउंड नहीं खत्म होता ये. Shock, still can't believe it. मुझे कैसे मारा? मुझे क्यों तोड़ा? I like how साइफर मॉनिटर पे देखने की कोशिश कर रहे हैं. Like, Mama, you know, right? Like, if you turn off all the lights and if you let a person be there, थोड़ी देर के बाद आपका eyes adjust हो जाता है उसके तरफ, and you are able to kind of see, like, make differences of कि कहाँ पे हो. I think वही वो अंदाजा लगाना चाहते थे. Concentrate इतना hard कर रहे थे. Monitor के through अंदाजा लगाना चाहते थे. अरे भाई साहब मॉनिटर ही बंद है, कैसे अंदाजा लगाएंगे? Oh! I mean, Stiko उस वक्त से सिर्फ शॉटगन पे खेलते हुए नजर आ रहे. Look at him! सॉर्ट ऑफ का शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं. सॉर्ट ऑफ ऐसी शॉटगन है जो देखने नहीं मिलती आपको इतनी आसानी से. यूजुअली यूज ही नहीं होती है वो. Oh! Missed the shot though. Oh, नीड करेंगे, फ्लैश करेंगे. Should have known better. Team France with another victory. खुशी देखे इनके चेहरों पे. चैट पे भी कुछ चल रहा है वो लोग. बेहतरीन खुशी. रॉकस्टार नहीं, रॉकस्टार रंबल. आई थिंक या इसमें रिकॉइल निकल जाएगा बंदूक से. सबने नेगेव उठा लिया, हर एक प्लेयर ने नेगेव उठा लिया. यहाँ पे देखिए उनको पता है रिकॉइल नहीं होने वाला है. ओह माय गुडनेस, पूरी की पूरी टेरिसाइड एक्सेप्ट स्मूया. अब भागते भागते गोली चला सकते हैं, इसमें रिकॉइल नहीं होगा. Why? सिंपल स्मोक करते हुए. Oh, Kenny. देखिए आप अगर इसमें रिकॉल नहीं होता तो ऑप में भी नहीं होता. कैनी इतना जरूर ऑप चलाना जानते कि बिना क्रॉसर तो मार पाएंगे उनको. जैक्स इजी पिकिंग AK से. स्मूया जरूर ट्रेड कर लेंगे, बट राइट नाउ इट्स अ 2v4 सिचुएशन. और ज़ूस के साथ जैक्स ट्राई कर रहे हैं. He's switching weapons. I want to see something with Zeus. क्या अगर सिर्फ Zeus मोड अगर है, I want to see that also. मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊंगा. जब काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव रिलीज हुई थी, उसके पहले काउंटर स्ट्राइक सोर्स, काउंटर स्ट्राइक 1.6 में अगर आपको साइड सिलेक्ट करनी है तो टूर्नामेंट्स में कई बार नाइफ राउंड हुआ करता था, ना कि कॉइन टॉस. लेकिन जब काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव रिलीज हुई तो शुरुआत में नाइफ राउंड की जगह जूस राउंड होता था. इंटरेस्टिंग. वो जूस लेके डिसाइड कर दे कौन सी टीम को कौन से साइड. वीटो वगैरह तो अब आया है. या वीटो होता था लेकिन मैप जो टीम सिलेक्ट करती थी साइड, कौन से साइड पे स्टार्ट करना वो नहीं होता था. fairly normal round रहने वाला है. I want to still see the Zeus coming out. Shocks हट के ऊपर से. He picks up 2, looking for a third with a deagle. उनके नीचे जो खिलाड़ी हट के तरफ वो ढूंढ रहे शॉक्स की कहाँ है. उस तौर पे हेवन से जैक्स आएंगे. Simple in a 1v3, but this time AK रहने वाला है उनके पास. लगता है कि उनको अभी भी नाइफ चाहिए. ओह, शॉक्स मुड़ गए. वो आई थिंक उनको अंदाजा लग गया. And he smokes it off. स्मोक ऑफ जरूर किया, लेकिन सिंपल अगर ग्रेनेड निकालेंगे तो फिर
इन्फॉर्मेशन दे देंगे सामने वाले टीम को, सामने वाले प्लेयर्स को। अब सवाल ये क्या वो गोली चलाना चाहते हैं? स्पॉट कर लिया प्लेयर को, स्मोक करेंगे अपने सामने, फ्लैश भी है अवेलेबल, लेकिन वापस अंदर जाएंगे। ही कैन एक्चुअली नाइफ हिम, क्या जाना चाहते हैं? जी हाँ, लेकिन नहीं, गन स्विच करी। C4 उनके पास। ओह नो, मोलोटॉव की वजह से, खुद ही की मोलोटॉव की वजह से बाहर जाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लमैटिक। ट्राई किया था उसके साथ। What is happening in this game? अपने प्यार का इजहार करते हो यहाँ पे शॉक्स। टीम फ्रांस एक और राउंड को जीतती हुई। यहाँ पे देखिए, सिंपल फर्स्ट सेट विल हैव अ नाइफ फाइट। बॉडी ने जरूर, he's like okay, but simple। तुरंत एक निकाल के उनके सामने क्राउच करके। And it's Dream Team right now on the deficit। एक राउंड पीछे, 2 राउंड पीछे चल रहा है। सिंपल रिवॉल्वर लेके क्या पाएंगे वो देखना पड़ेगा। 2 शॉट किल होता है वैसे रिवॉल्वर। He got it। लेकिन हेडशॉट नहीं मार पा रहे। Right. You should have gone for the knife. अच्छा, गेट राइट नहीं खेल रहे यहाँ पे, बैंग्स खेल रहे हैं उनका माउस लेके। गेट राइट कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंग्स माउस चला रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो। Yeah, I just saw in the cam। माउस पे भी नहीं था उनका माउस। प्लेयर्स सारे के सारे pretty sure they're taking it all in। जब ऑडियंस के सामने आपको खेलने का मौका मिलता है, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे। यहाँ पे हर एक पीसी में आई बिलीव एक माउस कनेक्टेड हैं एक्स्ट्रा। Not sure about the extra। बिकॉज 2 पीसी में मैंने देखा, शायद जो वहाँ का सेटअप होगा उसके अंदर होंगे, नॉट श्योर। Wait, मैं सोच रहा था प्लेयर स्विच कर रहे हैं क्या, लाइक यहाँ से वहाँ। ओह, ZywOo के लिए सपोर्ट प्ले काज बनता हुआ। ऑडियंस देखिए अभी एंजॉय कर रही है, मजे उठा रही है बैठ के। और उसके बाद उनको भी पता है जो भी उन्होंने खाया है, जो भी उन्होंने सोच के आया, इट विल ऑल बी 2-3x ऑफ इट या 5x। इतना ज्यादा शोर रहेगा अरेना के अंदर। वो सब ठीक, लेकिन फोन क्यों निकाल के बैठे सारे प्लेयर्स? फोन से खेलना है क्या? अभी कुछ मोड है क्या? इतना आगे नहीं बढ़ा है काउंटर स्ट्राइक। आई होप ना बढ़े इतना आगे कभी जिंदगी में काउंटर स्ट्राइक। नहीं, आई मेंट लाइक कि फोन को आपको कहीं ना कहीं माउस के जैसे। आई डोंट वांट टू सी CS ऑन अ फोन, आई मीन नो। It would be beautiful, ज़्यादा accessible होगा काउंटर स्ट्राइक अगर वैसा होता है तो। बट आई डोंट बिलीव काउंटर स्ट्राइक का जो मैकेनिकल सीलिंग है वो आप फोन पे अचीव कर पाएंगे। We've hit a pause for unknown reasons, but प्लेयर्स जो उनके बीच कुछ बात चल रहा है, हंसी मजाक हो रहा है। Wait, it was a half। हाँ, हाफ हुआ, लेकिन हाफ टाइम के बाद भी कितना लंबा पॉज होता है। हाफ के बाद इतना पॉज ले रहे हैं। आई लाइक हाउ यहाँ पे आपने अगर नोटिस किया हो, शॉक्स एंड आरपी के सिर्फ मुंह उठा के आगे अपनी किक तक लेके नहीं आए वो। उन्होंने बोला अब वी बीन डूइंग दिस फॉर लॉन्ग इनफ, हम नहीं लेके जा रहे हमारा कीबोर्ड माउस। जो वहां पे अवेलेबल था उसी का इस्तेमाल करते हुए।
Ooh. Hornets are slowly filling up. Gold flashlights. I'm sure बहुत ज़्यादा support होने वाला है उनके home crowd के लिए. कोई सवाल नहीं है उसमें. लेकिन मामा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ like this. Attendez, laissez Cédric, je vais sortir. Il est pas là. Allez, Cédric, allez. Dans la Labo, peut-être. Labo. Vas-y, Cédric, allez. Voilà. Il meurt pas avec une balle de snipe, le frérot. Like that's the feeling I got. But यही बता रहा था, the golden hornets with the golden flashlights. मैं तो सोच रहा था कि पूरा पीला समंदर बन जाएगा स्लो मोशन. ओह गुडनेस. जो राउंड हमने देखा था जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था अब और धीरे चलेगा. ये राउंड ख़त्म होते होते आई थिंक एक पूरी शाम निकल जाएगी. क्योंकि जो टाइम स्केल होता है काउंटर स्ट्राइक के अंदर उसको कम कर दिया गया है. देखिए हर एक सेकेंड 2 गुनी लंबी होने वाली है. You can hear the footsteps, loud thumps. हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. Oh! शॉटगन लेके एमडी के बाद खेलना चाहते हैं. शायद हमें कमेंट्री भी धीरे धीरे करनी पड़ेगी. Gets one simple with a quick scope, but gets one on body. Kenny! Stiko क्या यहाँ पे किल निकाल पाएंगे? जी हाँ, लेकिन जैक्स उनको रोक देंगे. सैम क्या कहना है आपका? सिंपल अभी भी है. I can't. One week, Mama, I can't, sorry. I'll be honest, this is the most fun I've had in casting in a long time. Same. Slow motion में game चल रहा था, slow motion में casting चल रही थी यहाँ पे. I'm sure the audience was also finding very enjoyable. Yeah. But बेहतरीन तरीका है audience को यहाँ पे loosen up करने का. But Team France are now are looking like they're going to close it. Dream Team को मजा जरूर आ रहा है, but इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा. या 9-7 का स्कोर लाइन यहाँ पे शायद रन बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिंपल उनको फर्क नहीं पड़ता. डैमेज बहुत ज़्यादा देगा उस कंटेनर के थ्रू. लेकिन को ऑग लेके किल. कैनी लिक जरूर किया, लेकिन शॉट नहीं कनेक्ट कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली. Smoya closes it. Is it Smokey? And Abhi is back. Team France, yes. I'm assuming yes. होना चाहिए. Yep, it started. Team France ले होने वाला है इस बार. Who is this? 2 players है जिनका कैप नहीं दिख रहा है. Okay, एक बॉडी है. चारों तरफ धुआं. बॉडी नजर नहीं आ रही है वहाँ पे. बॉडी
RPK is like I've never seen anything like this. मैं तो Counter Strike खेलने आया था, मेरी नजरों के सामने धुआं. Kenny S. Oh no. But they're still getting it. No, Team France is losing. Oh yes, my bad. मैं अभी भी साइड स्विच हुआ नहीं, वो ही सोच के बैठा हूँ. जैक्स क्या किल निकालेंगे यहाँ पे. स्टीको को एक्सपेक्ट कर रहे स्मोक के अंदर. यहाँ आवाज कर दी है. ओह नो, गेट राइट नो स्कोप मारते वहाँ पे. नो का स्कोर लाइन काफी ज्यादा क्लोज है ये. Smoke will disappear finally. जैक्स अपने चेयर के ऊपर जाके बैठ रहे थे. रैपिड रश कमिंग थ्रू. 2 खिलाड़ी को गिरा चुके हैं. 9-9 का स्कोर लाइन 10-9 का बनाना चाहते टीम फ्रांस. वो ये लीड लेना चाहती है. मुया गेट्स 1 ऑन शॉट्स. करने के लिए थोड़ा उन्होंने ट्राई किया, फेक सेल किया, स्मोक के थ्रू किसी को पुश करने के लिए किया एंड उनके सामने सीधा आके ग्रेनेड पड़ेगा. जैक्स ट्राइंग टू क्लियर ऊपर से एंड he'll check and yes he finds one. Cypher stuck in a 1v4. Oh my god. Kenny को समझ नहीं आ रहा है. बॉडी देखिए किस तरीके से खेल रहा है. GDM की याद दिलाते हुए. GDM करके एक प्लेयर हुआ करते थे जो ऐसे खेलते थे. बॉडी हर राउंड में अलग तरीके से खेलना चाहते मेरे ख्याल से. पिछले राउंड में वो सीट के ऊपर बैठ के खेल रहे थे. How did this miss? I don't know how this missed. Yeah. ये मिस नहीं होना चाहिए था. ये बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए था आज. Nonetheless, Kenny. रन बूस्ट करने वाले यहाँ पे. डबल रन बूस्ट करने वाले शायद. यार डबल रन बूस्ट करना चाहते हैं. हाँ नेवर माइंड, नहीं हो रहा है. वापस कोशिश करेंगे. डबल रन बूस्ट. ओह दूसरे के ऊपर जाके चढ़ गए. वही गोल था. बता रहा हूँ आपको सैम, जितनी लेयर है यहाँ पे काउंटर स्ट्राइक के अंदर, तो ऐसे कोई भी टैग शूट में आपको नजर नहीं आएगी. या एक एंट्री लेने के लिए इतना ज्यादा यूटिल डंप. आई थिंक दैट ग्लिमर. Seiko again, cheeky position. बट उनके ऊपर चढ़ के जा रहे थे खिलाड़ी एंड ही इज लाइक यहाँ से निकल जाता है आरपीके. ओह अंडर द बैरल. स्कोप के नीचे चले आके उन्होंने नाइफ करने का ट्राई किया बट क्विक नो स्कोप. ZywOo फाइनली गेट राइट की तरफ से. ओह वेट, ही इज गोइंग ह्यूज. 1v1 आ जाएगा. तीसरा नो स्कोप निकलता तो शायद ये रेडिट पे चला जाता है ये क्लिप. सिंपल. Playing around. नाइफ के लिए दावा दे ये बुलाते हुए, लेकिन मुझे लगता है जैक्स नाइफ करना चाहेंगे. जैसे नजदीक जाएंगे सिंपल उनके. और टाइम खत्म हो गया. सिंपल एज 3 राउंड. It's raining nades. Oh, unlimited nades होने वाले यहाँ पे. Unlimited nades. इस राउंड से पहले ही हमने देखा कितना यूटिल इस्तेमाल कर रहे थे एंट्री लेने के लिए टूवर्ड्स बी. अब अनलिमिटेड. आई थिंक पूरा मैप को स्मोक करते हुए, जलाते हुए नजर आएंगे, फ्लैश करते हुए नजर आएंगे, खुद के टीममेट्स को भी फ्लैश करते हुए नजर आएंगे. रेन ग्रेनेड पे रेड. लुक एट द थ्रोस.
ग्रेनेड आएगा सामने, यहाँ से बच के नहीं निकल सकते। शॉक्स स्ट्राइकिंग इज बेस्ट। खुद के ग्रेनेड से मरे शॉक्स। अपने पैरों पर ग्रेनेड डाल दो यहाँ पे। आई थिंक बॉडी has put himself in a position Oh, just no. नहीं उनकी मौत होने वाली थोड़ी देर। How does he still survive? Woo! Cypher finally. सेंचुरी डाला उन्होंने। Cypher. I think तंग आ चुके थे अभी के लिए ग्रेनेड से, तो अभी इंसेंडियरी का इस्तेमाल हो जा रहा है। Because इंसेंडियरी ज़्यादा आसान है। Yeah. And again, AOE ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा फैलता हुआ नजर आता है। You can limit the movement. बारिश करा दी तो अब ग्रेनेड्स की। भरपूर तरीके से बारिश कराई थी उन्होंने। शॉक्स देखे लाइक कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूँ, 3 लोग मेरे ऊपर है। और PK with a no scope. What positioning. ये राउंड तो ड्रीम टीम आसानी से लेके जा रही है। 2-1 situation. Shock still has a chance, picks up one. Cypher वेंट में, C4 रहने वाला है शॉक्स के पास। फेक, वो वेंट से भी फेक ही कर रहे हैं। फाइनली मॉली आएगा बट उसको डॉच करके हट के तरफ भाग रहे हैं। शॉक्स हैज नो आइडिया अबाउट दैट। जी हाँ, एब्सोल्युटली नो आइडिया, लेकिन अब पता चल जाएगा कि जो पहला डैमेज पड़ा था। लेकिन गेट राइट, कहाँ से जाना चाहते हैं? नाइफ कर करके आवाज करे, उनको न्योता दे रहे चाकू चलाने के लिए, लेकिन शॉक्स ही इज नॉट बाइंग एनी ऑफ दिस। गेट राइट, चाकू निकाला जरूर है उन्होंने। और 2 लेफ्ट क्लिक, 1 राइट क्लिक। If he's going to stick it, yeah, she's going to stick it. He's sticking. Oh, shocks! He gets it. Oh, goodness. Absolute madness. बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे काउंटर स्ट्राइक का। Sarcastically बोल रहा हूँ obviously. नहीं, Kamba. Even if you mean it, it is true. Like they're showing all perspectives. आपको सिर्फ राइफल से ही नहीं खेलना है, सिर्फ डीगल से नहीं खेलना है। You can play with many variety of weapons. जी हाँ, लेकिन कैनी अब अपनी ऑब निकाल के पहला किल का नहीं, वो नहीं निकलने वाला किल अनफॉर्चुनेटली उनके लिए। सिंपल शॉट नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। मेन की तरफ से क्रॉस कर चुके हैं, बट वी आर स्टिल नॉट गिविंग अप। स्टीक को पीछे से आएंगे, ही पिक्स अप 1 2v3 सिचुएशन। दोबारा शॉक्स को एक क्लच करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि जैक्स फंसे हुए थे एंड चलेगा ज़ूस उनके सामने। 1v3 C4 दोबारा रहने वाला है। He's gonna get the plan down. पीछे पीछे एक खिलाड़ी जरूर आ रहा है। He has the right idea, smoke off करके आगे बढ़े, but Stiko knew. And that's going to be 12 for Dream Team. Bison. Imagine somebody comes and kills. Oh no, Cypher. Oh, मुझे लगा एक और बार शायद छोड़ दे डिफ्यूज करना। Yeah. छोड़ सकते थे वो। गेट राइट वहाँ पे वो करते हुए जो हमेशा आपको पब्लिक सर्वर्स में दिखाई देता है। मुझे डिफ्यूज करने दीजिए, नहीं करने देंगे तो उनको मार दीजिए और फिर डिफ्यूज करिए। I'm going top side, okay? Il est conduit. Ouais, on change. Oh non, là-bas. Allez, Kenny. Allez, je casse ta porte. Il faut en battre des guignols là. Ça buguait.
Look at Jax. Look at Jax. Absolute character. Absolute character. Upside down एक और बार. ये बहुत crucial round में करा है इनके पास. I think इस बार Apeks वो भी खेलते हैं. Apeks को बिठा दिया है यहाँ पे. Bags is trying to figure out. He's still figuring it out. Get right के जो controls है वो भी शायद अलग है. वो WSD से भी घूम रहे हैं. That's very interesting. Oh, get. Bangs. Oh, Kenny. Oh my goodness. Good try. Get right was like नहीं यार ये राउंड नहीं खेलना चाहता मैं. बहुत मेहनत है. लेकिन मजेदार, बहुत ज्यादा मजेदार ये देखना, उसमें कोई सवाल नहीं है. शॉक्स इन द मीन टाइम यहाँ पे C4 डिफेंड कर पाएंगे? कुछ नहीं करना. नहीं कर पाएंगे. थोड़ा वर्टिकल मूवमेंट कर लिया उन्होंने and he lost his precision. इतना आसान नहीं होता वहाँ पे उस तरीके से खेलना. So no doubt वो किल नहीं निकाल पाए. It's never easy like that. Wait, अभी वही चेंज जैसे बैंक्स ने किया था वही करते हुए नजर आ रहे हैं on the team France. खुशी देख रहे हैं इनके चेहरों पे. गेट राइट भी पूरी तरीके से मजे लेते हो उस चीज का. 11-13 का स्कोर लाइन. ड्रीम टीम यहाँ पे आगे. होम सॉइल पे टीम फ्रांस को ये जीतना होगा. एंड अब लगता है अब जी जान लगा देंगे यहाँ पे. नॉर्मल राउंड खेल के फुल ऑन वाटरफॉल करना चाहते हैं. आउट ऑफ मेटल डोर लेकिन साइफर नहीं होने देने वाले इस चीज को. बॉडी डैमेज जरूर ले रहे लेकिन यहाँ पे बॉडी की जगह पे हमारे दूसरे होस्ट खेल रहे हैं. Yeah. Nice flash. Trigger discipline. Suicide. Oh no. उल्टा गुल मार जरूर दिया उन्होंने. Yeah. स्मूया इन निकाल पाएंगे जी नहीं लेकिन ईगल से हेडशॉट मारेंगे. ये एक्सपेक्ट किया था मैंने. Jumping through shot try किया but Get Right and Smooya both go out. Simple अकेले खिलाड़ी रहने वाले. Has flush of utils to play with. को फेंक के ऑप उठा लेंगे. वाह ये देखिए इतना ज़्यादा मैकेनिकल प्रावर्स है उनके पास. यहाँ पे अपने लिए एक एंट्री पाथवे बना रहे हैं. He gets it. बॉम्ब दूसरी तरफ है वो. Simple. This is why he's the best player in the world. Too good. Insanely good. उनके चेहरे पे जो मुस्कान है. Trumpet guy. He's going to be here. उनके बाजू में खड़े होके. I'm not sure. Wait, is it going to your headphones or? Oh yeah, उनके बाजू में. Oh.
Okay, he didn't burst his ears. जी हाँ, लेकिन देखिए आप अब इमेजिन करिए, ये काउंटर स्ट्राइक का फैंडम है, ये काउंटर स्ट्राइक की कम्युनिटी है, ये इस गेम की खासियत है कि ये हर किसी को सेलिब्रेट करता है, ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि ऑडियंस को भी। और ऑडियंस उतनी वैल्यू लाती है कि उनको सेलिब्रेट होने का मौका मिले। बेहतरीन, this ladies and gentlemen is Counter Strike, और मुझे नहीं लगता कोई गेम दुनिया में इस चीज को टॉप कर पाएगी। Nope. Never ever. बेहतरीन, वंडरफुल, शानदार। और आप सोचिए किस तरीके का ये अनुभव रहा होगा उनके लिए इन लेजेंड्स के साथ। दो लोग थे इन लेजेंड्स के साथ, उनको स्टेज पे रहने का मौका जिंदगी भर याद रखने वाला अनुभव होगा इनके लिए। बेहतरीन शो मैच, बेस्ट। बट यहाँ पे देखिए माम्बा, ड्रीम टीम एक कदम दूर है from closing this show match, and they're making it happen, taking all strides. Shocks 1v4, unbelievable clutch निकालना पड़ेगा, पहला निकाल चुके हैं with heaven से तुरंत simple, and that is going to be match point for Dream Team. मैच एंड मैप पॉइंट जरूर होगा इनके पास, लेकिन चांस ये देखिए चालू होते ही बंद हो गए चैंट तो। मुझे लगा था और शायद चैंट आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, नहीं जी नहीं। आखिरी मैप एंड मैच पॉइंट, यहाँ पे ड्रीम टीम इसको क्लोज कर पाएगी या फ्रांस को यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट देखनी पड़ेगी, या फिर एक और राउंड, एक और मौका यहाँ पे इसको वो टाइम में भेजने का। स्मूया शट डाउन कर दो उनको। यहाँ पे चौथा किल हो सकता था उनके लिए। साइफर फाइनली, आई थिंक साइफर का ये तीसरा ज़ूस है। What a brilliant show match it was. Wow. मैं बस ये देखना चाहता हूँ प्लेयर्स क्या कहेंगे, ऑडियंस ब्रेक की तरफ जाते हुए, बिकॉज प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है, वार्म अप करना है फाइनल मैच में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। It's going to be a big match. An era coming to an end, and one of the best matches for the era to conclude. The fact that Shocks showed up in a Titan t-shirt, I think, is the highlight of the day for me. And उसके ऊपर Jax, a whole different vibe on his own. Last time I reached on the stage together. Yeah, exactly. Kenyan gets right. All right. Thank you. And next. अब देखना जरूर बनता है कि यहाँ पे जो ग्रैंड फाइनल्स होने वाले हैं उसमें क्या रंग देखने मिलते हैं हमें। I'm sure ऑडियंस जितने भी लोग होंगे पूरी तरीके से गोल्डन हॉर्नेट्स को सपोर्ट करने के लिए आएंगे यहाँ पे। बट उसके लिए वक्त थोड़ा सा और, 8:30 बजे वो मैच शुरू होने वाली है। इंतजार नहीं कर सकते माम्बा।
the last final for CSGO, the last major for CSGO. A big title. Home ground के 2 teams है. GamerLegion के तरफ से भी French players है. Vitality, their home team, home ground, जहाँ पे Paris पे match हो रहा है. They will have the major support, but मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ कि GamerLegion के लिए भी कितने fans यहाँ पे देखने के लिए मौका मिलेंगे. जी हाँ, देखेंगे जरूर, लेकिन बिल्डअप की बात करें हम, अगला जो मैच होने वाला हमारा ग्रैंड फाइनल्स इस मेजर का, काफी इनक्रेडिबल स्टोरी लाइन्स होने वाली है. GamerLegion जो इस पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 2 LAN इवेंट्स के लिए है, if you're not aware. एक RMR जो रीजनल रैंकिंग्स होती है मेजर के लिए, और दूसरा ये मेजर इटसेल्फ. किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था GamerLegion ये मेजर जीत सकते हैं. ZywOo ने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक फिल्टर यूज किया था टिकटॉक का, जिसमें सिर के ऊपर लिखा हुआ था कौन सी टीम मेजर जीत सकती है, और वहां पे GamerLegion लिखा हुआ था. नोबडी वाज बिलीविंग इट. लेकिन अब GamerLegion फाइनल्स में है और ZywOo के खिलाफ देखना ये बनता है कि क्या ZywOo कंपनी उनको रोक पाएगी या नहीं. Yeah, not too sure, Mamba. But I had an incredible run fun जो यहाँ पे हमें शो मैच में देख लिया मौका मिला. It has energized us right now. इतना बेहतरीन players, OGs, well renowned, सबको खेलते हुए देखने के लिए मौका मिला, मज़ा करते हुए देखने के लिए मिला. क्योंकि इससे पहले जब भी इनको देख रहे थे ना, whether it be LAN और जब भी खेल रहे थे, वो very zoned into the game, अपने टीम्स के लिए टाइटल्स लेते हुए नजर आ रही थी. So seeing them having fun on such a big stage, कहीं ना कहीं हम भी बहुत खुश हो रहे थे ये देखे. जी हाँ, of course, and to me it was very emotional because ये गेम, ये प्लेयर्स मेरे दिल के तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है. Exactly. मैंने काफ़ी वक्त बिताया इनको देखते हुए, इनसे सीखते हुए, इनको आइडियलाइज करते हुए. बट नॉनदलेस इसके बारे में और चर्चा ज़रूर करेंगे. चलिए रुक करते हमारे एनालिस्ट की ओर देखते हैं कि हमारे एनालिस्ट क्या कहेंगे इस मैच और अगले मैच के बारे में. Of players will rise to the top. Equality, whether you're a major veteran or in the playoffs for the first time, both find themselves now with a shot at the trophy. Fraternity, the united front of both squads entering the arena. The brotherhood of both GamerLegion and Vitality to do battle in the final ever CSGO Major Grand Final. It is truly an honor to be gracing the arena here alongside some absolute legends in Matthew and Jacob. Gentlemen, I cannot believe we are on the precipice of making history, of rounding out CSGO history here in the final Grand Final. It's come a long, long way. We saw a picture of the two of us from 2013, the very first major match, and it's been a long time since, man. I can't put words onto how much this game has involved, how much this game has occupied our life, I guess, the past 10 years. And for the players, for the fans, for everyone, tonight is going to be one we are most likely going to remember for the rest of our life. Listen, Jacob, we had no idea this would end up here. We had absolutely no idea, right? For some of the players, the fans, of course, people behind the scene that have been with this Counter-Strike boat for years, it's just a pleasure, elation to see where the game has come. And yeah, there's going to be a little bit of emotion today. Of course, we're closing a chapter after all. It's the last CSGO major, and with it come attached a whole lot of very big implications, right? It can be the last CSGO major champion, and we're going to find one today. Yeah, we certainly are. Number 19 is looking very beautiful indeed. Gentlemen, let me be a romantic for a section. Okay. Because, you know, we're talking about this. Obviously, we expected Vitality to be here. Maybe not so with GamerLegion, but I think this grand final epitomizes everything that we love about Counter-Strike. We have got veterancy on one side of the server. We're talking about Dupreeh, a chance to make history with 5 major wins in his cabinet. On the other side, players that have never entered the playoffs before. I'm talking Ema, I'm talking Isaac. The fact that it is the first time they've ever graced the stage of a major playoffs. We're also talking about redemption arcs, right? We've got to talk about Acor, Shuei showing himself as a newfound in-game leader. Apeks, him turning the tides, changing from an entry fragger to an in-game leader. It's got all the storylines, all the reasons why we love CSGO so damn much. It's an incredible melting pot of trajectories. That's what this grand final is about. And it's a testament that you can come from very different horizons and end up in a grand final of a major, right? You say on one hand, we have the very, very obvious candidate of Vitality, which then again,
it's not always the case that the practicality, the reality follows our dreams and the romanticism of the story, as you just put it very aptly. And on the other, we have GamerLegion, who, let us remind, were probably the 0-3 pick of a bunch of people in Challenger stage. That was me. At that some was point, you, and that was you, and listen, right? How wrong were we when you realized that they posted 22 rounds combined in their first day of Challenger stage? And from that moment on, they've completely changed their story. I'm going to repeat this. In 2 weeks, GamerLegion might have just changed their lives. They are now in the grand final of the major. They've completely banished and exceeded any expectations we had for them. And we are all, but we have to respect what they could do here in Paris. It's been absolutely fantastic to follow. As you said, the first week we thought them to be the weakest team in the tournament, going down to complexity, losing to the Mongols. You go into the champion stage, you go into the legend stage, and they've been firing on all cylinders. This is a team that truly deserves to be in this grand final. We spoke about it yesterday, of course, as well. We're going to speak about it later, but the fact of the matter is they took down Heroic, who for many people, including myself, were the main favorite to go into this final. They were the main favorite to win the entire tournament. And not only did they beat them yesterday, but the fashion they did it in on Mirage, that third deciding map, that speaks volume to the, I guess, development this team has seen the past 2 weeks. They went from being probably the weakest looking out of all the teams heading into the major to now standing in a grand final where I can say that, yes, they're not the favorites to beat Vitality, but never say never with this team. Yeah, never say never indeed, although a hell of a lot of people did over on Blast TV. I'm just going to throw some numbers your way. Only 10% of people on Blast TV picked them to actually beat Monte in their first game. Only 0.3% picked them to win the whole damn tournament. This is how much of an underdog we're talking about, Jake. Yeah, I guess the players and the staff of GamerLegion was in that 0.3% because honestly speaking, no one expected that. Even the players themselves have said in various interviews that of course we didn't expect this. We had no ambition of going into the playoff. We had no ambition of going all the way to the final. We took it one day at a time, one game at a time, and I think that's, to me, that's what's so inspiring. The fact that this team looked so weak just 2 weeks ago when we first saw them play in that Challenger stage to now where the fashion they did it against Heroic yesterday, they look like a proper, experienced Tier 1 team who weren't faced whatsoever by the fact that they were sitting on stage. But why? Why did that happen? Well, you tell me. How did this GamerLegion squad turn into the winning beast that we now have on our stage? You talk about, you know, how we didn't see it coming. After the Challenger stage in Rio, which they very narrowly missed the gap to go to Legend stage, they've completely disappeared from the LAN territory of Counter-Strike. There is only one occurrence where we find this squad, and that's at the Eliza Master Expo 2022, and that's a 9th to 11th place. And that's once again going under the radar. There was absolutely nothing when it comes to storyline and data and expectations that would have set us to say GamerLegion are a possible candidate for a grand final. They've turned into this tornado throughout the major. As the days were going by, they grasped more experience, more confidence. Shuhei talked about it in an interview that they realized themselves that this is what we need to do if we want to compete. But I thought these were just words. Like, a lot of people have nice words. Not everybody actually back it up. Yeah, showing it in the server is a totally different beast indeed. And it's totally changed the conversation that we've been having about Tier 1 versus Tier 2 versus Tier 3. We've had this argument now, you know, should we be calling them partner teams, non-partner teams, legends, underdogs, whatever it may be. The fact that they've proved themselves here, and a hell of a lot of underdogs have, but they're the ones making it to the grand final. They're the big story, right? They took away the spotlight from the Apeks. They took away the spotlight from Monte. Had GamerLegion lost to Heroic, we would have put GamerLegion and Apeks in the same boat, saying both of those lineups have done a tremendous job here at the major, but they fall at the hurdle. They fall at the semi-final. It got too much for them, but nothing is too much for GamerLegion right now. I don't see a world where they can't go in here and play freely. I don't see a world where they can go into the stage right now, soak in the moment, enjoy it, and go for that victory once more, because I feel they're equally as underdogs today against Vitality as they were yesterday against Heroic. That's not changed whatsoever. It's still a top dog they're going up against, and the way they played yesterday, the way they conducted themselves on that stage, on that server, with that body language, with that confidence on the server, it speaks volume to how much they believe in themselves right now. So take nothing away for GamerLegion. Yes, they were a Tier 2 team. Yeah, they haven't played a single LAN event so far coming into the RMR event. That was the first time we saw them. But the way they play right now, I can't say that it can't stand a chance against Vitality. I simply can't. They were supposed to lose at every single turn in this playoff. Yeah. That's as simple as it is. When matched up against Monte, we talked about Boros, the incredible player, superstar coming in. We talked about SDY turning into an IGL, the passion of Roro 2K. It's gonna be fine. You know, they're gonna make it. Remember what they did to NaVi. GamerLegion, none of that. Easy 2-0 on the second map, just giving away 3 measly rounds. Just a day in the office, having a good time. We say it's all right. Now
they face Heroic. It's all going to come back to normality. You guys have a good time. Thank you very much for being with us. Here is the exit. Thank you. We would have to have the grand final on the way now. They play against Heroic. They go to third map, and they do to Heroic on the third map what Heroic did to FaZe the day before on the same map. And I could hide the nicknames, and you wouldn't be able to tell me who is GamerLegion, who is FaZe, and who is Heroic. It was impossible to detect, impossible to decipher. They made him look like a bunch of clowns. In Heroic, that is one of the most consistent team, if not the, that we have in the stage. So how are we supposed to stand today and tell you at home that they have no chance against Vitality? Why would we do that? That was the entire narrative for Heroic coming into this, right? We were saying they are a team that do not falter in their run-up. Again, making it to the grand finals, faltering. This time it is GamerLegion to take them down at the hurdle before that. And it comes off the back of some incredible individual players. We've got to talk about Ima. He has been a revelation to discover throughout the duration of this major. And he is up for a potential MVP candidate at the end of it if they lift the trophy. It's almost as simple as that. If GamerLegion will end up winning this grand final tonight, the man on your screen right here will end up as the last ever CSGO major MVP. And as we spoke about with GamerLegion, them as a team, no one could have anticipated them coming all the way into the final. For Ima as a player, no one could have anticipated him playing so well. The best LAN performance he has in GamerLegion is 1.13, his rating. So far at this major, 1.44 on average. He's putting up one of the best rifling performance I've ever seen anyone ever do at a major. We're talking the likes of Nico. We're talking the likes of Electronic in peak form. We're talking some of the best riflers of all time. And right now he's making a case that this could be the best ever rifling performance at a CSGO major. And he does it out of nowhere. These numbers are actually bonkers. Like you mentioned the rating throughout the event. Some of these maps he's played in playoffs. 1.89, the first map against Monte. 1.89, and then you say, it's all right, you know, it's level of opposition. He's going to be fine. Goes on to Heroic, last map of the BO, 187. Are you kidding me? Like, are you messing with my head? Are you messing with me? Are you just posting back-to-back above 1.80 ratings in the playoffs of a major? And where are you coming from? There was no way to see this coming. Or at least, maybe I'm just not as knowledgeable as I thought I was when it comes to these players. No. I had no way to see that performance coming. The numbers just didn't tell us that story. He has never been on a stage this grand in his entire life. We, would not be underestimating him to say he might get nervous in this position. Hell no, it has been entirely the opposite for Ima. He's been thriving on it's the other way around. He's thriving. He's playing better, because that's the thing. There's no numbers you can dive into. It's not like Ima was dominating the online scene. It's not like GamerLegion were winning all these online cups leading into this major. No, they were doing decent. They were placing second, placing third, placing 5th to 8 in some of these CTT online tournaments. And Ima, he was a great player. He had some decent numbers, but nothing like this. Some of the career best performance he's ever had as a Counter-Strike player was on that stage just a couple of days ago, and yesterday for that matter again against Heroic. We couldn't forecast that. We couldn't see that coming whatsoever. But I absolutely love this story that a player with no experience on a big stage like this whatsoever seems to thrive even better than when he's sitting at home in his basement and playing Counter-Strike. And he's showed us that he can handle this environment. He can handle the type of unique pressure that comes to a match stage as he's playing. I'm going to take you back to the Monte game on Mirage. Very early in the first half, there is an immense fail that comes from Ima. He's on catwalk on the CT side. There's someone planting the bomb in front of him, and he literally just sprays into the nothingness. After that, he dies. He looks into the camera and like, and what does he do? He steps back up to 30+ bomb. Who can do that? That's not how it's supposed to go. The way it's supposed to go is a rookie messes up a frag in an important matches, proceeds to go back into his shell and disappear from the server. This is what we expect from rookie in these situations. He did the exact opposite, just bounced right back up, became the MVP of that game. How incredible is that in terms of resilience? That's one of a kind almost. I just want to throw one more stat at you before we leave the Ima conversation. I'm sure we're going to speak more about him later, but we spoke about it. The third deciding map against Heroic yesterday. We also spoke about Heroic. Who are the players making the difference over there? Well, it's Yabi and it's Down with the rifle. In that game on Mirage, he had 22 duels combined against those two. He won 15 of those. Ima shot down Stown, Ima shot down Yabi, and he did it on the T side in the first half of the third deciding map. He was controlling and dictating the game as a rifler. And as I've said many times on this disc, you can do it with an AWP, but doing it as a rifler, being the one that dictates the game and pushes your team in the right direction, it's a complete different skill level. Let's continue to focus on the T side a little bit more, because we're talking about, the individuals a lot, but it's a system that they're under, which we've also really been praising. We talk about a revelation in Ima. Shuey has also been the revelation in terms of in-game leadership throughout the duration of this major. It's been stellar. Him and Kixon have really risen up to be the next one in kind, so to speak. Those are the two you look
towards, if you're any tier 1 team out there and you want a new in-game leader, or if you look towards the future of Counter-Strike 2 and who can potentially build a dominating team or who can potentially remark themselves as being some of the best in-game leaders in the future. The way ZywOo has done it with GamerLegion has been nothing but stellar. It's not like he's copied Heroic. It's not like he's copied a single team and went, we're going this way, we're going this way. As I spoke with Magisk on the desk, it feels like ZywOo is copying everyone. He's looking towards some of the biggest inspirations around and he's making that fit. When we discovered ZywOo, it was in Rio. I remember he had a couple of interviews during that RMR session, and I thought, why is this young guy giving me all the answers that I want to hear from an IGL? Why is this young lad I don't know about just giving me the exact right attitude and perspective you should have on games? And why is he so self-aware of his position? And why does he know what it is to be in his position? He should be just the victim of the environment. He should be a victim of his emotions. And he seemed to be so ahead of it. In fact, I expected him to pop off after that event. It didn't happen, but now that he's got another opportunity, he's doing just that once again. He's saying all the right words, he's making all the right decisions, and he's turning into a captain when he goes up against Apeks, who has, let's say, decades of experience over him. Yeah, we've had a hell of a lot of correct answers coming out of ZywOo for the duration of this major, so let's just put one of them under the spotlight in the Mahone zone. That's right, ZywOo has shown that he's a very experienced caller despite being so young. So I want to show just how he was able to outmaneuver Heroic yesterday in that map of Mirage, third map. So first it starts off right here, round 10. They come up towards this connector side. Now what we see here is essentially it's going to be an A split, or it looks like it's going to be an A split because Chaos is over here towards this ramp side. He's just going to throw a simple flash here to allow Ima to catch 2 players here. Finds the first one to Ston, and then he finds another one onto Yabi. But the key move to pay attention to right here is ZywOo, because if you look at ZywOo right here, he's here towards this connector side. And despite Ima getting these 2 kills, he already starts backing away. He already starts backing away from connector because he realizes that with the situation on the map, with what they've actually created in this round, they've created an over-rotation on Heroic's side. Look at this, 4 players of Heroic all towards the A side. And he's able to recognize this because with the way they set up the round, they threw a triple smoke here for the bench side, a sandwich Molotov, and they're pressuring up the connector side. For a team like Heroic, who tend to like to be overactive and try to rotate into spots and try to be more proactive, ZywOo understands this. And with the time being 37 seconds left, he understands that this rotation is coming through. So what does he do? As soon as he spots that there's nobody here towards this catwalk side, he decides to fall back. He decides to fall back even though Ima finds 2 kills. What this does is it allows his player at upper B to then walk out. With this player walking out, he is then able to hear the rotation of Kaden moving towards Cat. As soon as that happens, ZywOo has now set up a situation where they can now pinch Kaden towards Cat. They can now pinch him from upper B as well as catwalk at the same time. And as they move in, this is an impossible situation for Kaden. Isaac shoots him in the back here, and that's essentially the round. And you look at this from Kaden's point of view, this decision is made so quickly because from Kaden's point of view, he still thinks this A push is coming. He's waiting for that cross towards the site. He doesn't see this coming at all. And on top of that, these players at A, they're stuck here completely. They don't even realize that the bomb is going to be planted at B. So this is really the highlight of ZywOo right here. It's his ability to kind of read the game and just outmaneuver his opponents. If he wants a chance against Vitality here, he's going to have to figure out how to do it again. And I really don't doubt that ZywOo will have that ability coming into this game. That's something that Vitality definitely have to be on the lookout for, because yesterday versus Heroic, ZywOo just reading them like a book, particularly on that final deciding map of Mirage. Yeah, one thing is giving an in-game leader an awful lot of credit for having a team that is playing well, but we also got to look at what the tools he has to work with. We poised Ima for having a fantastic showing. As an in-game leader, it's easier to call when you have good tools in your toolbox. And right now, he has Ima, he has Akor, he has all these players who are overperforming and playing way, way better than anyone could have expected. For me, though, it's a super, super cool story. You mentioned it. You first saw him in Rio giving all the right answers, conducting himself well in interviews. I saw him at the We Play Academy League in Mouse NXT. People forget, and people may not know, that ZywOo was one of the few guys and the in-game leader of this Mouse NXT lineup who dominated the Academy League scene. He won twice in a row with Mouse NXT, and he was the one player that didn't get picked up by Mouse. Yeah. He was the one player that weren't getting to the next step. He was the one player that didn't get the next shot to move on in his career. He had to go to GamerLegion, and for a lot of people, that was a step down, sort of, or that
that was I guess a loss for him. He couldn't get anywhere better. But right now, he's looking towards his mouse camaraderies. He's looking towards everyone else in that mouse NXT lineup. And he was the one who got all the way to the grand final by being so goddamn good as an in-game leader. Isn't that a common theme, though, that we have in GamerLegion for some of these players? Yes. Life at some point just told them, no, like, you're not going to cut it. Particularly with mouse sports, apparently. It might be something with mouse very specifically, but think about it. You're right. Shuhei was poised to be kind of pulled into the tier 1. The door just closed in his face for some reason. Now he's proven everybody that they were very wrong to let him go. I'm sure his email box of his agent is going to pop off massively after this event. I got no doubt. Just make sure you get some bank on that one. And then you have Aiko, of course, who went to mouse, completely let down everybody, myself included. I was calling for his head to roll for a long, long time. I had enough of him and mouse. Whichever way he was playing in that system wasn't working. So many games where he left me hungry for more. Now he gets removed, pops back up again with GamerLegion here. Chaos, just to make a name for himself, had to play in Simon Gaming, had to play in CIS region, some of the RMR with Perfecto at the time, to kind of make a name for himself again and be under that light where the French scene wasn't exactly ready to open the door for him. So all of these players, to me, they have this in common, that, you know, you're not going to open that door for me, I'm going to kick that door and I'm going to get in. You don't want me in, I don't care. I'm going to make my own destiny. It's such an incredible redemption arc, or revenge era, if you will. So for your money, because, you know, we've seen Aiko gracing big stages before, where do you think, you know, the development has been with him? Where do you feel like he's clicking into this GamerLegion roster maybe better than some of the previous rosters? I think he's getting more freedom and he's in a better space right now. I think he doesn't thrive too well with pressure. I don't think he thrives too well when he's the one supposed to make all the moves. Right now, when I look towards GamerLegion, Aiko has a free role. He doesn't necessarily have to be aggressive. He even said in an interview coming into the major that he's playing way more passive, way more defensive than he's ever done, because he can allow himself to do that. You have Imma, you have Kias, you have all these players, Isaac for that matter as well. They also will create this space for Aiko, and then he can chime in whenever he wants to. The problem was that everyone was looking at Aiko in mouse thinking he has to make the difference. He has to go in first. He has to dictate the game with the AWP. And that's not the type of player nor personality he is. People may not know that either, but when he was in Mad Lions, I think a lot of people in Denmark felt that that was the next big thing. He was en route joining Astralis. It was just a matter of time before Device would leave or go somewhere else. He was the next in kin. It never panned out that way. He couldn't really strive for that pressure. He couldn't really deal with that pressure. I think he's one of those types of players who thrive way, way better when he's on an underdog team, which is why I also think Aiko won't go anywhere. If you want to pick up Aiko, it's with the risk of showing that he cannot thrive when the pressure's on him and everyone is looking at him. Do you think that he's going to thrive today in the grand final? I think so. Under that pressure, do we just see it as in, hey, I'm an underdog, I have a grand all time, or is the fact that he's playing in the grand final now just going to eat him alive? I don't know where to go with this. I think it's going to be fine. I think it's going to be fine in the sense that he has a team around him. If Imma is crashing, if he's not playing well, if Isaac is not creating space for Aiko, then yes, he doesn't have that X factor. He can't step up and dictate the game, and that's the one weakness when you look towards Aiko. But if the team around him is working, then I think Aiko is going to be just fine. Well, we've been talking a hell of a lot about the AWPA, so let's get some words from him ahead of his first ever major grand final. I'm here with Aiko ahead of the major grand final, the final CSGO major. Has that moment and the run that you guys have gone on already kind of sunk into you guys? No, not really. I mean, it feels like we're just playing a tournament, and I mean, I think it'll only sink in when we go home and like get a few days rest, and then we like think about like what actually happened, like how did we make it here? Yeah, it's been absolutely crazy the run you've had so far, because we look at some of your performances, you guys haven't played on LAN that often at all this year, so we're looking at a major grand final coming up, but we've seen a lot of the fans are on your side the whole way through. We've seen the French fans really getting behind your team, possibly because of Chaos, but we're looking now at going into the final. Do you feel like the fans have helped you kind of get some of these wins, having those behind you? I definitely feel like we could feel like the fans being there and helping, supporting us. So a little bit, yeah. But I think we also tried to play. We also played on stage in Rio against Furia with a lot of fans as well against us. So I think we've tried both. So we'll see what happens now. Yeah, and coming into today, you know, they're really going to be against you. It feels like with Vitality's fans fully out there. Have you talked about how you're going to approach the mentality of that, or are you worried about how that's going to feel? We had a little like small team meeting with our sports psychologist and just like 5 minutes, like just talk about what's going on and how to deal with it. And I mean, I think everyone is pretty chill and not that worried, to be honest. So yeah.
Now, we've seen over the years of your career, you've had a lot of positive headlines, the Mad Lions, and then into Maus. People were excited to see what you could do, but there's a lot of maybe pressure and criticism at your time in Maus, and you had to take a step back and go back down a level into the Tier 2 side. You built yourself back up to this point where you're now going to be playing in a major grand final. What does that prove to you about yourself that you're capable of doing this? I mean, it just proves that I'm able to play Tier 1 CS, but I'm not done. I mean, I'll continue playing, and I think this is just like the first step on like, yeah, this is just the first step. We're gonna keep going and do our best and see what's going on, what's gonna happen. Well, you think if you win today, you got to remove one of the C's of the arena? Hopefully, we can make it happen. It will be amazing. Lovely stuff there from Acor. But yeah, cool, calm, collected going forward. The aim of the game for GamerLegion. That's going to be a feat in itself, though, because this is the loudest the crowd are ever going to be getting, and it's going to be against you. Yes, and that is one of the issues that I have, one of the many issues that I have for GamerLegion moving into this grand final. Yeah. If you can guarantee me that they're going to have an incredible start, and the money will flow, and frags will come, and the atmosphere will be light and energetic, and Acor can kind of just slot in that rhythm and do what he does best, it's going to be fine. But if Vitality actually kick off the right way, and then we are looking to Acor to change what's happening and give a couple of these very important opening kills when the scoreline is 3-6, 3-7, you're about to get reset. You also have to realize he plays the AWP way more than ZywOo, so financially a lot more of that credit card is going down there. I don't think that he's got the spine to kind of fight that pressure. Yeah. I think he will fall and he will sink with the ship if GamerLegion goes to hell, and that's one of the problems that I have with him and that lineup for that matter against Vitality. 100% agree, and I think that's the weakness when it comes to Acor. He is not the player that will dictate the game with the AWP. Going into the tournament, he said to a Danish news article on Dust 2 that he's played way more passive than he used to do, and he thrives better not being first in. He thrives better being in the backs of the team, and you are well aware, as well as I am, Matthew, that if you don't have entry fraggers, if you don't have rifle players creating space for a very defensive AWP player, you will just fade out of the game, and that investment that an AWP is going to be very expensive. So I'm fully on board with you. It requires Immer, it requires Isak, it requires Shuhei to create space for Acor, otherwise he's not going to thrive. Another issue that we're going to be looking at for GamerLegion, we kind of have to, because it's been the turning of the tides for Kios, really, right? He comes out in that game versus Monte. The crowd are roaring for him with that French connection going on, and then the game versus Heroic happens. Yeah, then how? And this is the thing. There's two sides to the coin of Kios. He's had some of the best performances on lane in his entire career at this major. 4 of the 5 best lane ratings he's had against any top 30 teams ever in his career has been at this major. But the performance against Heroic yesterday, you see it on screen right here, he was nowhere to be found on the server. And that's my issue with Kios. When he plays well, he plays exceptionally well. When he plays poor, he was out of it yesterday. Had GamerLegion lost a close game to Heroic or Mirage, you would point towards Kios, you would say that was the difference. That guy didn't turn up, and that's why they didn't make the final. Yeah, I'm right with you. It was alarming to see how Kios was playing in that game. Obviously, from an analytical or a statistical standpoint, I know he doesn't play the star roles. Like, I'm aware of it. He's not being put in position where he's supposed to farm frags. But this is one of the metric through which we judge players in his position. We say, hey, you're not going to get a whole lot of Glock kills, but whenever you are challenged, you better get you 1.5 or your 2 kills. That is your deal. This is your contract. You're a B anchor. You're not going to have a whole lot of action, but when you need it, you step up. And he didn't do it. And I think he's being very selfless in the sense that he solves a whole lot of organizational issue for the team. Like, listen, I'm going to do this role. It's fine. Like, I'll take the hit. I'll do it. I'll be here. It's going to be all right. But it becomes detrimental if he is not able to actually uphold his frags when he's needed. It wasn't the case against Heroic. That's, again, against Vitality. It's over. Let's flip the record to talk a little bit about Vitality, obviously gracing their homestand with the Golden Hornets firmly behind them. But when we contextualize this grand final, Matthew, this is Vitality's game to win and to lose. I don't give a damn about the opposition they face because they've taken down every single one of them. You can only beat the teams that are in front of you. But the pressure is really on because this could be one of the most dramatic and upsetting losses if Vitality do so lose on the stage. And I agree with you. And I think it's part of the challenge for the Vitality players to not think about it. Because if Vitality were to lose this grand final against GamerLegion, it would be one of the most unforgivable losses in the history of Counter-Strike. Yeah. Literally, every expert out there is pointing the finger towards Vitality's easy run to the grand final and talking about how they're avoiding that tier 1 opposition. The ghost of Heroic has been sucked away from the air, and here you are in your hometown with
thousands of people clapping for you, your superstar by your side, your ZywOo, your Spinks performing, and if all of this comes together and you lose to GamerLegion, then when are you going to win a major? If you're not winning this major, you can just pack your stuff. Like, it's over. Just, we don't believe in you. You're never going to do it. And part of the, I guess, the staff and the coaching crew for Vitality must have been focused towards not letting them get into that mindset. You have to consider this a high-pressure game, no matter who is in front of you, because if you let that get to you, I think it will hurt you. Yeah, for sure. I buy the argument. A lot of people are raising the question, has it been an easy route for Vitality into this grand final? Sure, it could have been tougher. Sure, a lot of teams could have been in their way. Sure, they could have faced the likes of G2, the likes of NaVi, but they didn't want to win their games. They want to put up the fight to go into the quarterfinal, not the semifinal. So it's not really Vitality's fault. And another argument into that discussion, for me at least, is the fact that leading into the major, then won IEMView. They beat Heroic, they beat FaZe, they beat G2 in the qualifier as well at the AMA. They beat all these teams that we wanted them to beat in a major like this. So yeah, unfortunately, it didn't happen at this very tournament, but they showed us just 3 weeks prior to this tournament that they had the ability to do it. So all this talk about Vitality having the easiest way into a major final ever, and that's the reason, and they got lucky, and they couldn't have done it against the likes of NaVi, G2, Heroic, you name it. I feel like we saw that leading up to the tournament, that sure they could have. It's not their fault that everyone else sucks. No, I mean, we're not talking about a question of fault or responsibility. Once everything is settled, the dust is settled, and hey, if Vitality had won this title, we're not going to pretend like this was one of the hardest, most legitimate run ever in the history of Counter-Strike. No. Absolutely not, because it would be disingenuous. But I have to argue, and I have to say that there is also a level of difficulty to be a player and to be presented with all of these teams back to back to back that you are supposed to win. How many times do we stand at the desk and we say, hey, they have nothing to lose in this game, the pressure is on their opponent, they can just enjoy it, they can push them against the ropes, they can play funky Counter-Strike. Vitality have been on the other end of that spectrum for the entirety of the playoffs. Every single game they were supposed to win, and they've been bending, but they've never broken. And that to me is a sign of respect from the side of Vitality, because we have seen them historically just massively drop the ball, even in 2023. Matthew, you brought up a very interesting point when we were kind of discussing this pressure in the green room, because this isn't the first time we've seen a massive underdog make it to a major grand final. And what is the common factor between this Vitality lineup and maybe, I don't know, the Astralises that faced up against some of those underdogs in past? Yeah, there have been a couple of examples looking at one-sided grand final, at least on paper. One would be the Astralis versus the Vanguard in Berlin, of course. Another one could be Astralis versus ENCE in Katowice. And here we have, again, Vitality versus GamerLegion. And actually, there is a common factor, let me say 3 common factors. That would be Dupreeh, Magisk, and Zonic. And I think here, this is going to play a hell of a role, because I expect that these 3 people, not just players, these 3 people, to tell the others, like, listen, this is how we handle this. This is how it went down. We've been through this. I've stepped onto the stage. I have been the massive favorite of a grand final at the major, and I have won. And everything was fine, and we did it. And I think they have to communicate that to the rest of the crew. It's one of the few examples where I love to use the word experience. I feel like that's a term we always throw out. I even hear people doing it in online games, and it's like, yeah, sure, you can have experience playing online, but on a stage like this, when you put up a scenario like this, in the context of the matter that they've been in 3 major grand finals before, where they've been the upper dog against an underdog, so to speak, that's experience for you, right? Sonic can, as you said, tell the team, this is how we prepared, this is the mentality we had, this was the energy level. It's all about, you know, maintaining that as well. You don't want to come in overhyped, you don't want to come in too slow on energy. You got to find that right spot, so-called sweet spot, where you're feeling it, where you're comfortable. And Magisk has been there before, Dupreeh has been there before, Sonic has been there before. So when I use the word experience, it actually matters in this context. And this is where there is an argument. There is a way in. If you're a GamerLegion fan and you want to believe in the upset potential, Vitality have never lost a map here in the playoffs. We don't know. We don't know how Vitality would react if they were to get spanked around in the first map, getting caught off guard. Massive, I don't know, momentum start from GamerLegion, Shuhei calling amazingly, Ima doing them the dirty stuff. We haven't seen Vitality have to bounce back. They've been tested a couple of times. We've had a fair amount of 13-13, 13-12, but I've always felt like they were in control in these last few rounds. They've demonstrated a level-headed Counter-Strike, which I didn't know them to have. Good flash pops, good moves, remaining calm. We even had a couple of mic'd up moments where I thought, hey, for Vitality standards, that is pretty calm, that is pretty composed. What happens when they lose the first map? Now that is a new, it's like a Narnia door that you just step into something new that we hadn't seen yet, and that would be quite an entertaining prospect. That is a question that potentially we will be getting answered in this grand final, but I think it's important, Jacob, to contextualize what we've seen and the growth that we've seen from Vitality since the addition of Spinks, right? Because we were demanding when he first entered the server.
building off the point you're speaking about right here, we don't know. We honestly don't know what's going to happen for Vitality, but I feel like we have some statistics. I feel like we have some statistics that can support the fact that it feels like the spine of Vitality is much, much stronger, much, much better. In front of you right now, you have the lineup, the 5 players, and you can see the stats right here. And this is for the entirety of Vitality ever since Spinks joined. The ratings on Spinks, the rating on Magisk, the rating on Dupreeh and Apeks. They're looking somewhat decent, but again, we know Vitality were a team that didn't live up to the potential for the vast majority of time they've been together. Now, if we flip the script just a little bit, we can see the stats at this tournament, and you quickly see improvement on every single player, almost apart from ZywOo, who's just always a god, you know. I'm joking. 0.02 rating better, it is what it is. He's stable as ever before, but the fact that Spinks is coming in, becoming his playmate, the fact that Dupreeh is no longer a weak link, he's showing up on the server, he's making the difference, he's starting to clutch. Magisk, who's been a support player and who's been very, very stable from start to finish, and even Apeks fracking out as well, not having a 0.80 rating. It feels like the spine of Vitality is much, much stronger. There was a time 3, 4, 5 months ago, I'd do like this and you'd just crack. Vitality would be over. Mentally, they'd be out of the game. That's not the case anymore. So when that happens, or if it happens tonight, I feel Vitality is in a much, much better place today than they were a couple of months ago. Well, you mentioned Magisk's name. Let's get him on the mic with Dinko. Well, this is the 4th time you're going to be walking out there for a CSGO major final. Never lost one, so you've got a perfect track record going on in this now, Magisk. Now, I want to talk to you about maybe some of the differences that a final feels like, because you played weeks of Counter-Strike, so many games just to get to this point. Now there's 1 game left. Does the mentality sort of change as you head into the final? I mean, for me, it's the same game. If we play a group stage game or we play a final, we have to go in with the same mindset. We have to be ready for anything. We need to be able to reset if we get a bad start and, you know, this type of things. I mean, it's the final, so we need to minimize the mistakes. And other than that, I think we need to stick to our plan, our strat book, and the way we want to play Counter-Strike. And of course, we need to do a lot of headshots against GamerLegion because they are an individual team, so we need to be ready for that. And other than that, I don't think it changes much. It's a final. But it's also like any other game. I mean, the opponent is not going to change because it's a final. We know what kind of team we're up against. So for me, it's all about ourselves. Let's talk a little bit about your opponent, though. I want to get a bit of your thoughts on them because up until this point, maybe you could say they didn't beat the best of teams on the way here, and then you've seen a legitimate win against Heroic yesterday. What are your thoughts personally on how they're approaching the game? Well, I also think we have to, first of all, give them some credit because, of course, they have played some good CS and individually they're on point. So that's also why I say we need to be ready for anything. They are good individually, so of course we also need to be there as a team, but also as individuals. So yeah, I think they're playing good CS, but I also think up till this point they haven't had any pressure. I mean, no one have been expecting them to be in the quarterfinals. No one expected them to be in semifinals. No one expected them to be in finals. So for me, they've been playing without pressure. They've been enjoying themselves, and you know they don't really have anything to lose. So for me, it's different today, though. Now they're so close. They're almost so they can almost taste their dreams coming true. And I think today they will also have a bit more nerves, and they will be a bit more scared in some way. So of course, I think it's a natural thing. One thing is playing the quarter semifinals. You don't really believe it until you're in the final, and then suddenly you start believing. And yeah, I think it's gonna be a different game in that sense. But other than that, of course, we need to be there as a team, because if we don't show up, they will beat us. I mean, they're a good team, so we need to be ready. Now we look at you and your personal career. You missed out on the Atlanta majors. So you currently have 3 major titles. Incredible feat that barely anybody has been able to achieve. But how special would it feel for you to tie up with the former teammates in Astralis and also prove that you can do it out of the Astralis system in a new team in a completely different environment? So for me, it's really not about the amount of majors. It's more about the journey. It's more about the process we've been going through as a team. And of course, as you also mentioned, I think it really comes down to the fact that I also want to prove that even though I'm not in Astralis, I'm not in the prime Astralis right now, and I can do it with another team, and that is something I want to prove, and that is something I want to do with these guys. So that is, of course, been my goal ever since I decided to go into an international team. And of course, I have the opportunity today, so I'm gonna do my very best to be the best version of myself and bring good mood and hype for the team, because of course we want to take home the trophy today. Now we look at everything aligning for you guys. It's starting to really align coming into Paris. You're starting to peak. Everybody's form is increasing. And you've also got one of the greatest players to ever touch the game on your side. Going out there today, do you feel like this one's yours? I think there's no such thing in the finals. A final, you need to fight with everything. They're going to give their lives to try and win, and we're going to give our lives to try and win. So it's going to be a battle of everything. And
it might not be pretty always, but I can promise you one thing is that we will do everything we can to take the trophy, and I can guarantee they will do the same. So that's the thing with finals. I mean, the finals, anything can happen. Everyone have proven they deserve to be in the final, and sometimes people have an easier way than us, but in the end, a final team is a final team, and we will have to give every single thing, all the energy we have left in the tank, and just give everything. Magisk the opportunity to potentially be lifting a 4th CSGO major trophy. That would be a nice one to be adding to his already stacked cabinet. And for him as an individual player, it's really been apparent his impact on the T side of things. We know that Vitality has really been working on that, and particularly in that game versus Into the Breach, he was an absolute madman on that offensive half. Not only against Into the Breach, but the entire tournament so far. He's one of the highest rated T-side players out of everyone who's participated in this major. Magisk is on a tier, and as I said before, he was one of the players that when he got in with Dupreeh and Vitality weren't working out, I feel like he was never the scapegoat. You were never looking towards Magisk thinking you're not delivering what you're supposed to do. He's been rock solid. He's been stable. He has never been the player that was considered a weak link. He's never been the player where you said to yourself, Vitality should have gone the Danish route with Sonic, Dupreeh and Magisk. It's always been Dupreeh. So in terms of how Magisk has developed and how he's been playing in Vitality, I think everyone in the Vitality camp, all the Vitality fans out there should be proud of him. Yeah, and he's showed incredible composure as well. Just to send you back to that semi-final against Apeks, he starts his campaign with a 12-20 scoreline on Mirage. He was adamant about it in interviews. He said, I wasn't in a good headspace, my head was hurting a little bit, they surprised me, I made a few mistakes, I was completely lost on that first map. Still, huge bounce back then on the second, 26 kills. That's the type of composure, rather, that they need. Let's talk about the double Danes in this one as well, because I said, you know, Magisk having the opportunity to be adding a 4th major trophy to his cabinet. Dupreeh would be adding an unprecedented 5th, never seen before in CSGO. So happy for him, man. I'm so happy for him. I grew up playing Counter-Strike with him, against him, and he was a beast back then, I'm not gonna lie. He was the classic kid running around, not necessarily using his brain, but you could always feel that tactically speaking, maybe not the best player, but in terms of raw talent, he was fantastic. He's then developed into becoming a rock-solid Counter-Strike player. The way he conducts himself in interviews, the way he's a good shout, the way he's a great role model, not only for Danes, but for international Counter-Strike players as well. Having played every single major, having been relevant at every single major, potentially about to win the 5th major as well, I think Dupreeh will go down in history as one of the players, at least for my money, that I respect the absolute most. The career path he's been through has been nothing but stellar. And how did he come back? How did he come back in Vitality? How did he turn the tide of the end of 2022, where many people, myself included, were thinking, hey, listen, this might just be time. Like, I appreciate you. I appreciate everything you've done for the game. You've been a role model. You're one of the most successful players, but come on, man. You're not putting your frags. This isn't working. Individually, you're just far behind. He was being a liability for Vitality for a moment. And then 2023, from the very beginning, he seems like he's turned the tide. His last 2 events, Rio and here, 1.12 rating. That's more than commendable. And this is something that we have to give him credit for, rather, is that his success has come in different forms over the years. Yeah. He isn't just a skill machine that's going to run in your face, break all the rules of the game, and make entries. Now he sometimes has to play a bit more passive. He has to be a bit more patient, more selfless. And he still finds a way to have these frags, to be reliable for Apeks. At least he's been in the last month. I'm not trying to ruin the mood right here. I'm not trying to move the good vibes we got going. We're heading into a grand final, but there's also a world where Dupreeh, in case he wins this major, could potentially retire. No, don't say it. Don't he sends everyone to retirement. Nope. This is what I want to say. This is why I want everyone at home to be aware that this is the case, because you gotta appreciate, if this is in fact the last time Dupreeh will take a stage, if this is in fact the last time he'll play a CS major, then we gotta appreciate it for what it is. He's been at every single one. He's about to perhaps be the only one in the world winning the 5th major as well. He sort of hinted a couple of times that he didn't know how long he was going to continue to play, whether or not he sticks around for the Danish CS major coming up. I hope so, and I believe so, but there is a way, there is a world where Dupreeh will take the stage for the last time, and if that's the case, we better goddamn push it. We know what that noise means. It's the map video. Show me the map. Show me the map. Yeah, show me the money, guys. I'm hearing. I know it's happening right now. It's happening right behind us. Is being picked. But do you have your binoculars? I can't see the have your binoculars. Oh man, I don't want to see Spinks. I like you, Spinks. You're a great player. I love you, Spinks, but I want to see the maps because, damn, I really want to see GamerLegion picking out Overpass in this one. I would just love to see him giving out to Vitality, but you guys have a different idea I about feel like this, right? when I was a kid and we used to have like pay-per-view for some of these TV channels, and then the really good channel would arrive at like 8 o'clock and it would just blur because we didn't pay for it. I'm like, come on, man, I want to see the main card. Yes, talking about maps, my conversation personally was Mirage or Overpass as a pick for GamerLegion. They go with Overpass. They go for Overpass. Okay. The nuke pick for Vitality was absolutely clear.
clear, crystal clear they would go for nuke. GamerLegion has been avoiding it the entire campaign here at the Major. It's one of the highest win rate for Vitality, that's clear. But Overpass, let me put it this way. Is GamerLegion better on Overpass than Mirage? Yes, absolutely. But is Vitality better? You better damn right think that is. Much better on Overpass than Mirage. I thought if you're GamerLegion, the Mirage you've just had, go ahead, use that advantage. We saw Vitality struggle against Apeks. True. But why am I getting annoyed, actually? Why am I getting agitated? I'm fine with that. There's one underrated take in this video, right? If we go to a third map, if we end up on Inferno, my friends, that's a map Vitality haven't played all tournament long. The last time we saw them play it was in Rio, where they had great success. But going into a third deciding map after potentially having lost the map to GamerLegion, where you're the biggest of the biggest favorite, you're playing against an underdog, and you're going in on a map that you haven't played a single time in the tournament, that could put in a bit of a dipsy-dicey situation, not gonna lie, for Vitality. So if we go to a third map, we're going to talk a lot more about that, but that Inferno pick, or that Inferno third map decider, could be very, very interesting. Gentlemen, it seems almost criminal that we haven't basically even mentioned the man on our screens, ZywOo. Potentially the chance to be lifting his first major trophy on home soil in the last ever CSGO Major. The narratives just write themselves. It is a Cinderella story in the making, and it would be beautiful to see ZywOo do that. Wouldn't it be fitting? Wouldn't it be fitting for a player who's never been anything below the second best player in the world? He came in his debut year and he dominated international Counter-Strike. No one has ever done what ZywOo has done, and I don't think anyone will ever do what ZywOo has done. He is yet to win a major. He was yet to get into a semi-final. He made that happen yesterday. He was yet to get into a final. He did that as well here, and now he stands just one game away from lifting that trophy, Matthew. I know you're a big fan of ZywOo, because I guess everyone in the world is a big fan of him, but wouldn't it be fitting for him to hoist that trophy and finally get it done? Listen, you're absolutely in your right to have an opinion in the simple ZywOo conversation. I respect that fully. But if you love Counter-Strike, then you love ZywOo. It's as simple as it is. If you appreciate the game in its intricacies, if you appreciate what's behind the decision making, if you appreciate milliseconds kind of clutch moments, then you have to give it to ZywOo. You have to appreciate what he's doing. It's like watching a painter just do a masterpiece, and you trying to understand what's going on. The lines don't really make sense, but at the very end, suddenly you see a bridge and you see the perspective, and now you understand this is how it feels to see ZywOo play. It's basically peeking behind the curtains of Counter-Strike Matrix, and it's being into someone's eyes who sees the game a different way, who feels the game a different way. But you're right, the trophy cabinet, criminally empty when it comes to Major. This could be a career-defining year for ZywOo. Could be the third year, #1 on HLTV. I'll say right here, I think he's got that spot right now. If he wins the Major, that debate is almost locked in, and his first Major. I am getting goosebumps just thinking about it, but we do need to take a look at our predictions as well with Unicorn to see where we are heading in this one. And it's split way more across the board, I'm thinking, but I'm glad that there's some logic prevailing up here on the desk. I'm taking names. I'm noting all of the names. So what do we have? Maui, Launders, we have a little bit of Mahone in the back, Dinko, my no list. Incoming in the club tonight. Well, we're going to be finding out exactly how it goes down, but not before we head to a short break. When we are back, it's time to welcome the teams to the arena one last time. This is the grand final of the Blast TV Paris Major.
Major. The pinnacle of competition. The gateway for legends. Its trophy, a maker of kings. Counter-Strike in my life for 15 years. I've been playing this game for 2/3 of my life. I grew up with Counter-Strike. I got into Counter-Strike because of my brother. My life is Counter-Strike. I live and breathe it. CS only in my life forever. I didn't really know what I wanted in my life. CSGO was that answer for me. It's what I've always done. It's my whole life. And I wouldn't have most of the things that I have in my life right now if I didn't have CSGO. Years of Counter-Strike majors, 10 years of legendary plays. Paris, the last chance, the last moment, the last time to crown a major winner in our beloved game. Ready for Counter-Strike. Paris, for the last ever CSGO major, you have done us oh so proud. And to all the fans watching from around the world, ready to see this unfold, this is the moment you have been waiting for. All these years of Counter-Strike, all these years of majors, and these two teams now stand before you to battle it out for the final trophy. Now, Vitality, they came through and they looked oh so strong when it came to the legend stage, even beating G2 in the best of one. Then against Into the Breach, they were slightly tested. And Apeks yesterday, they certainly could have dropped a map, but they are now sat here ready to rock it one more time. But all the pressure is certainly on them. For GamerLegion, they were nearly eliminated in the challenger stage. They fell to complexity and the Mongols. It was looking tough for these guys. But then they bounced back and they cruised once they got to the legend stage, and they've continued to fire on all cylinders. They took the firepower to Monte and did what many thought was going to be hard for them. And then they went up against Heroic, one of the best teams in the world, one of the most elite with the experience on their side. And they still got the win, and they sent shockwaves through the Counter-Strike community. These are your major grand finalists for the last ever CSGO major. This is Vitality taking on GamerLegion. My only thinking for the last 6 months is this major in Paris. For me, there's something that activates inside me. And I think this comes down to I want it so bad. So I would just enjoy every single moment of it. It was my dream to play in front of people. There always will just be a little bit of butterflies in you. It's everything that I'm fighting for. Last CSGO major, it's all I'm going to be thinking about.
feels good to be part of the 8 best teams at the last major. I know that a lot of responsibility is going to be on my shoulder. It would mean everything. It would be again a testament to my career. I've done a lot of things in CS and I sacrificed a lot to get there. All the history that has happened in this game, now it's all coming down to just one tournament. Left in an interesting position. Oh my God! I mean everything for me to lift this trophy. You have a chance of lifting a trophy. It would be another dream come true. It could be one of the best of my life. GamerLegion in their first ever major grand final. The Cinderella story that every CSGO player dreams of is unfolding in front of their eyes. Isaac, dominating and locking it down on Ancient, clutching his way on the flames of Inferno and making light work of the heroic Danes on Mirage. He's shown us exactly what he can do, even when the pressure is high. Imma, his first ever major, and he's delivering like one of the greats. This talented Romanian entry fragger has his first major trophy and MVP award directly in his sights. If Heroic was the ultimate test, then Vitality is the final boss. Knock this one down and it'll be straight to the top. Shuhei, less than 1 year ago, he was sat in the Academy League tearing it up. Now he's one game away from the Major Championship Cup. His leadership has shown strength and the dream run is nearly complete. Just one more game from the ultimate feat. Acor, his ascension throughout this major has been remarkable. On top of matching Cadian in the semi-final bullet for bullet, he's having his best performance at the major at the right time. Now he has the golden opportunity to go all the way and become one of the few major champions of the world. Kios, the motivation and hype that he's brought to the team can lift their spirits and spur them on. He has been a crowd favorite with a smile on his face, but now the tables have turned and he must not lose faith. His biggest battle awaits. Let me hear it for GamerLegion!
Vitality's motto says it's V for victory, yet the team still yearns for its major championship. One final game with a home field advantage, and all of that could change. Spinks, looking to be the first from Israel that has ever lifted the major trophy. He has his own legacy to build here in Paris. The rifling star will not be left in the shadows. This Israeli prince is ready for battle. ZywOo. ZywOo, le petit prince des Hauts-de-France. The chosen one, with his final chance to cement his legacy, to cement himself as one of the greatest players in the game, the greatest rookie we have ever seen, and one who has a chance to go down as a legend and make history here in Paris. Apeks, 2,757 days since he lifted his first and only major trophy. He has waited for this moment to come again. He's had to leave his roots and bring in some Viking blood and the new Israeli hotshot to stand before you today. This legendary French entry fragger turned in-game leader to be rewarded with the most prestigious prizes in CSGO, but it has to be now. Dupreeh, he's been here before. He's here to be the only one. He's here to make history. He could be the one that lifts 5 major trophies. In 10 years of Counter-Strike majors, from the first to the last, he has been the major player. Just one final game, and the Sotri is complete. Magisk, major success comes from the day he went to the stars. London, Katowice, Berlin, the last achieved back in 2019. He's grown as a player and developed his skills, but it's been a long 4 years to be back in this position. The peak has come in Paris, and there's one final hurdle, one that can bring glory to the name and a tear to his eye, because now it will take everything he has to shine once again. V is for victory. V is for Vitality! The battle is here. One final time. Apeks, yesterday, it was still close. Against Into the Breach, it was still chances for these teams. What's it going to take today to lift this trophy? Well, GamerLegion has been phenomenal this tournament, that's for sure. I think what we'll need to rely on is just what we worked on from the beginning of the year, being ourselves. And I think if we play our game and we're on point today, we're going to win. How much better do you think they are compared to the other teams you faced? I think, yeah, in final, it's not for nothing. I mean, they beat Heroic, who are the best team of this year. So I think that they're showing so many crazy things and no one expected them to be here. So it's going to be a tough one, that's a sure thing. And what specifically has your performance coach been telling you to get you ready for this final, to keep you guys in the right shape? Well, I think they put a lot of aggressions and they're really strong individually. We need to kill them whenever they have to run on us and just make those individuals. We know we have to do that today, and that's what matters. No mistakes to be made, that's for sure. Kios, a major grand final and one epic story so far for you guys. Does it feel real? No, it doesn't feel real at all, but we're here to win it. And that's what you guys have been doing, winning. Getting that victory over Heroic was huge. But how do you think they measure up compared to Vitality, and what do you expect from today's game? I would expect an absolute banger, and I hope the crowd will make it even better. And let's talk about the crowd. Most of the time, they've been on your side, but this time, you know they're going to be in the Vitality camp. Does that change for you? No, for me, it doesn't change anything. If they're against me, they're going to even boost me more. Boost you more, I like it. Well, you guys are ready. My mom is watching me. Ah! And I love them. I love it. Go take your seats. Thank you very much.
The major grand final is about to get underway. Family in the crowd, emotions are high, tensions are even higher, and the pressure is on. Paris, are you ready? No, I know you can do better than that. Are you ready to bring the hype? One final time in CSGO major history. It's time to bring the hype! Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to the last ever CSGO Major Paris 2023. मेरा नाम है रंजीत मावा सीनियर पटेल. मेरे साथ जुड़ने वाले हैं लूसिफर. और जो हमने अभी देखा है एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक घड़ी इस गेम के लिए, प्लेयर्स के लिए, सारे फैंस के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी दे दी इस गेम को. कौन सी टीम ये ट्रॉफी उठाएगी? Is it going to be GamerLegion, जो एक अनबिलीवेबल रन के ऊपर है, या फिर वाइटैलिटी प्रोडिगल सन को पहली काउंटर स्ट्राइक ट्रॉफी दिलाएंगे? एक तरफ वाइटैलिटी का एक्सपीरियंस, डुप्री इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर प्लेयर जो 5 मेजर ट्रॉफीज उठाएंगे. मेजर्स के पास 3 है, उनकी चौथी होगी. एपेक्स हैज 1, जोनिक 1.6 लेजेंड, लेकिन सामने GamerLegion जिन्होंने बड़ी दिग्गज टीमों को हराया है. And they have made their way to the grand finals. क्या होगा वो थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं आप इस दृश्य का आनंद उठाएं. सैम, बेहतरीन यहां पे मौका, उससे भी सुंदर दृश्य. आप क्या यहां पे एक्सपेक्ट करेंगे, क्या एक्सप्रेस करना चाहेंगे इसके लिए? Surreal, man. Emotions are high. कितने लोगों के लिए ये पूरी जिंदगी है. एंड आज के दिन में जी हाँ, एक बढ़िया ग्रैंड फाइनल देखने के लिए मौका मिलेगा, बट एक ये भी चीज़ है कि ये आखिरी मेजर है CSGO का. That culmination is going to be today. I think मेरे लिए भी, I don't know, I have lots of words. Because एक जगह पे जी हाँ, एक टीम यहाँ पे आज के दिन में मेजर की चैंपियन बनती हुई नजर आएगी. चैंपियन स्टेज का आखिरी गेम है, बट दूसरी ओर द गेम है विच इज गिवन एवरीथिंग टू न्यूमरस प्लेयर्स. उसका आखिरी मेजर रहने वाला है. बट अगेन ये यहाँ पे जो सफर इतना बढ़िया बना था, ये यहाँ से और ऊपर जाएगा विद CS2. सो कीप एट इट. बट दिस ऑडियंस, दिस एनवायरनमेंट, ये अरीना, ये पेरिस मेजर, सालों तक इसके बारे में बात किया जाएगा मामा. इट हैज एन अनबिलीवेबल स्टोरी लाइन. जैसे ये दोनों टीम्स यहीं पे आई है, एंड द वे वी आर गोइंग टू सी देम फाइट हियर इन द ग्रैंड फाइनल्स. बिल्कुल सही कहा आपने. प्लेयर्स, टीम्स, दर्शक, हर एक चीज इसको लेजेंडरी बनाते जा रही. इतिहास के पन्नों में इसका जरूर से नाम लिखा जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है. क्राउड देखे दोनों टीमों को चीयर करता है. शुरुआत में ऑफ कोर्स मैच के पहले, मैच के दौरान जितनी भी ऑडियंस है, जो अवे टीम होती है उनको डराने की, धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्होंने क्लास भी दर्शाया है. कल जब केडियन अपनी स्पीच दे रहे थे, शुरुआत में उनको बू किया, लेकिन जब स्पीच देने का मौका आया उनको चीयर किया. इतना इमोशन मैंने नहीं देखा आज तक अपनी जिंदगी में. I've been playing this game for 17 years. 17 साल मैंने अपनी जिंदगी के दिए इस गेम को, लेकिन पहली बार ऐसी कोई चीज मुझे देखने मिल रही है. और शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए. आंखें नम हो जाते. जितनी भी बार आप इस चीज को देखें, जितनी भी बार आप इस आवाजों को सुनेंगे, इन प्लेयर्स को देखेंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा खिलाड़ी होगा जिसका ये सपना ना हो कि इस क्राउड के सामने, इस स्टेज के ऊपर वो खेलना चाहेंगे. बट बात करें दोनों टीमों के बारे में, GamerLegion अंग्रेजी में कहते हैं सिंड्रेला रन इनके लिए. 2023 सिर्फ और सिर्फ 2 लैन खेले, जो RMR क्वालिफायर था इस मेजर के लिए, और ये मेजर ना इन्होंने इसके पहले कोई बड़ी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था, ना इसके बाद कोई बड़ी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया. बात करें
बहुत बड़ा मौका इनके पास। 22वां इनका रैंक है पूरी दुनिया में, रैंक 22 एंड देयर इन द मेजर ग्रैंड फाइनल। वो प्रो लीग में नहीं थे, आईएम रियो में नहीं थे, आईएम डैलस में नहीं थे, ना ब्लास्ट स्प्रिंग फाइनल्स में होने वाले हैं। लेकिन बात करें ZywOo और उनकी टीम के बारे में, ये उसके पहले एक और बार दर्शकों के ऊपर गौर। It's not started, क्लच नहीं हुआ है, मैप किसी के हाथ में नहीं आया, but this is the audience before the show and वो सब उस ट्रॉफी के लिए, उस टीम के लिए जो वो चाहते हैं कि वो आज के दिन में जीत के दिखा दे। वाइटैलिटी, इनके पास एक्सपीरियंस है, विनर्स है, कोच के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास इतने टाइटल्स है। कमिंग अगेंस्ट अ टीम जो सारे बड़ी बड़ी टीम्स को अपसेट करती हुई नजर आ रही है। अगर हमने सोचा भी है जब सेमीफाइनल चल रहा था, तो पिकम्स भी जब किया था, most of them had vitality and heroic on their cards for the grand finals. Not GamerLegion, but GamerLegion जिस हिसाब से अभी तक आई है, दिखाई दी है, जितना कॉन्फिडेंस दिखाई दी है, जैसे जीती है, can they make it happen? Because it's time for the first map of Blast Paris Major, the last CSGO Major, and underway. पहला राउंड यहाँ पे पिस्टल राउंड, ZywOo ड्यूलीज लेके बी शॉट के ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश। नर्वसनेस जरूर होगी, बटरफ्लाइज होती है, हाथ कांप रहे होते हैं पहले राउंड में। और जितने भी प्लेयर्स खेल चुके हैं, हर एक प्लेयर आपको कहेगा, दिग्गज से दिग्गज प्लेयर कहेगा, पहले राउंड में हमेशा आपके हाथ कांपते हैं। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ते जाती है, नो सेटल इन। लेकिन यहाँ पे ईमा जो अपनी टीम के लिए गोल्डन बॉय रहे हैं, बट मीजेस फर्स्ट कांटेक्ट, पहला वन टैप, कियोस को टेक डाउन करेंगे उनके कप्तान, उनके आईजीएल को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेकिन अब मुश्किलें बढ़ती जा सकती है। इन द मीन दैट मेजिस विल गेट टेकन आउट। ईमा एक और किल निकाल दो, लेकिन ZywOo वो मिस नहीं करेंगे। फ्लैशबैंग जरूर आया, लेकिन ही नीड्स टू स्टे अलाइव। वो भैया बहुत ज्यादा डैमेज डिश आउट करते हुए एक और किल निकालेंगे। 2 versus 2, लेकिन एपेक्स विल फॉल प्रे। स्पिंक्स, इजरायली प्रिंस 1 versus 2 क्लच होने वाला, आसान नहीं होगा। किट उनके पास है नहीं, वक्त नहीं होने वाला बिल्कुल भी, सीधा गुश कर दिया उनको। क्लॉक का जो स्टॉपिंग पावर, जब सिर पे गोली लगती है आपको, आपका एम पूरा ऊपर नीचे हो जाता है, मुश्किल हो जाता है आपके लिए। लेकिन स्पिंक्स क्या यहाँ पे राउंड निकाल पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल। मुश्किल होगा उनके लिए, लेकिन नामुमकिन बना देंगे एक और। GamerLegion बेहतरीन शुरुआत करते हो यहाँ पे। सबसे बढ़िया मैप जो GamerLegion का था, इट वाज नन अदर देन ओवरपास। हाईएस्ट विन परसेंटेज है इनका, एंड जिस हिसाब से उन्होंने पिछली टीम को मात देती हुई नजर आए ऑन ओवरपास, इट वाज अ लिटरल स्टॉप। GamerLegion अगर इस मैप को लेती है, दिस ग्रैंड फाइनल्स विल बी ऑन अनदर लेवल। बाकी सारे मैप्स ऑलमोस्ट वाइटैलिटी को फेवर करती हुई नजर आ रही है। बीच में एंशिएंट जरूर है, जिसको वाइटैलिटी बिल्कुल नहीं खेली, आज के दिन में देखने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। We jump right into the second round. T side पे GamerLegion अपना पहला राउंड ले चुके हैं। ZywOo is invested on a scout. AKs in Galils in the mix. GamerLegion की तरफ, but no fast approach. सोच समझ के खेल रहे हैं। They want to make sure कि दूसरा राउंड भी उनके नाम आते हुए नजर आए। Spinks डीगल लेके बैठे, हमने देखा वाइटैलिटी डीगल के साथ कितना ज्यादा डैमेज डिश आउट कर सकते हैं। लेकिन देखिए जैसे उनको पता चला फाइट लेने का मौका नहीं मिलने वाला, वहां पर पीछे हटने का डिसीजन लिया, उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन ZywOo स्काउट के साथ बहुत ज्यादा डेडली साबित हो सकते हैं सामने वाली टीम के लिए। GamerLegion वेपन्स एडवांटेज जरूर है इनके पास, लेकिन स्पिंक्स को कवर मिल रहा है पीछे से, इसलिए आगे पुश करने की कोशिश। लेकिन ये किल बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला, जैसे ही ग्रेनेड का आवाज आएगा वो आगे पुश करने की कोशिश करेंगे। स्पिंक्स आई थिंक ही इज गोइंग टू गेट चेक्ड ओवर देयर, 100% चेक होने वाले वहां पे, उसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन पेट कर रहे हैं उनके लिए, बहुत ज्यादा ऑब्वियस बना देंगे। लेकिन स्पिंक्स इज इन अ क्रूशियल पोजीशन राइट नाउ। ZywOo पहला शॉट जरूर कनेक्ट करेंगे, डैमेज डिश आउट किया, लेकिन स्पिंक्स नीड्स टू स्टे अलाइव। मेजिस ओवर डिलीवरिंग यहाँ पे, डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, किल भी निकाला उन्होंने अपनी टीम के लिए। ZywOo getting one more. Spinks on the backside, gets one, they find the second as well. Magisk staying alive, needs to get all of them, and they do. Vitality, Deagle राउंड निकालते हैं एक और बार पिस्टल राउंड जीतते हुए। जब भी पहला राउंड हारे, डीगल से फोर्स किया है एंड राउंड निकाला उन्होंने, बिल्कुल मोमेंटम नहीं बनाने देना चाहते सामने वाली टीम को।
What a round. वेट किया, इंतजार किया, अपने प्लेयर्स को कवर दिया, पिक फ्रैग्स, मूड अराउंड, ट्रेड करने का जीरो पोटेंशियल दिया गेमर लीजन को. वाइटैलिटी हैविंग अ ग्रेट इमीडिएट टर्न अराउंड इन द सेकेंड राउंड. बहुत खुश रहेंगे दर्शक भी. आप देखिए, द ट्रम्पेट गाय इज बैक इन एंड आज पूरा दिन जो है ना मांबा ये बचता हुआ नजर आएगा. ये सुनने के लिए इतना शानदार है. एंड इट जस्ट लाइक यू हैव दोस गूज़बम्प्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. जितने बारी भी उसकी सुनते हैं, ये ऑडियंस उनके साथ मिलते हुए. द चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक इज दीज व्यूअर्स. इतने सारे लोग पेजर के लिए अपने प्रेजेंस दिखाते हुए, अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट दिखाते हुए. Incredible stuff. Yeah. सबका गला बैठ चुका है वहाँ पे. ऑडियंस की बात करें, होस्ट की बात करें. शुरुआत में देखा था वेडिंग गिफ्ट टू दिस गाय, कैम प्लीज. लेकिन क्राउड दिल खोल के आज चैंट करेगा, दिल खोल के सपोर्ट करेगा अपनी होम टीम को. लेकिन मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूंगा, इस क्राउड की तारीफ करना चाहूंगा. देव शोन अ लॉट ऑफ क्लास. सपोर्ट कर रहे हैं, सामने वाली टीम को डरा रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. एंड आई ट्रूली डू बिलीव दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स ऑफ काउंटर स्ट्राइक. जिस तरीके से पेरिस ने यहाँ पे माहौल बनाया है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट मोमेंट्स. एंड शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को. लेकिन टेक्निकल पॉज यहाँ पे, ये आपने कल कहा था अगर जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, अगर डीप इन द मैच होता है तो दिक्कत हो सकती है. लेकिन साइफर खेले भी थे अभी शो मैच में, बट यहाँ पे गेम लीजन सपोर्ट करते हुए. आई थिंक गेमर लीजन का अभी तक जो स्टोरी बना है ना, एवरीबडी इज अ फैन ऑफ गेमर लीजन. आपने बताया दे डोंट हैव अ लॉट ऑन द कार्ड्स, they've not proven a lot. ये मेजर का इतना बड़ा सफर अगर पहले जब हम बात कर रहे थे, ये एनालिस्ट भी जिसे बता रहे थे, they never thought गेमर लीजन would make it so far. I mean सोचा भी नहीं था कि सेमीफाइनल्स तक आ सकते हैं, बट सेमीफाइनल्स से सीधा ग्रैंड फाइनल्स भी आ चुके हैं. अगेन क्विकली गेमर लीजन एंड वाइटैलिटी मिले थे एक बार चैलेंजर स्टेज, बट इट वाज ऑल द वे बैक इन 2022 IEM रियो मेजर में. एंड तब वर्टिगो पे इन दोनों का मुलाकात हुआ था, एंड इट वाज गेमर लीजन टू गेट द विक्ट्री. बट इट वाज 1 year बैक एंड एक ही मैप. रीलोड करेंगे, बैकअप है उनके पास, लेकिन दो प्लेयर्स आइजैक एंड एक और डीगल भी है मौजूद. लेकिन अगर आइजैक टेक डाउन होते हैं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी. C4 गिरा अभी शॉट के ऊपर, ZywOo पीछे. मैजिस्क ने शोल्डर देख लिया. इन्फॉर्मेशन मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता. C4 उनके सामने, and that's all that matters. एक और अभी भी इंतजार कर रहे हैं. मेजिस्क होल्ड करेंगे बी लॉन्ग को, अंदर नहीं आने देंगे. सवाल ये होने वाला, विल दे लेट देम सर्वाइव? बिकॉज अगर जिंदा रहेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा टेरेस साइड को. तो गेमर लीजन की कोशिश यही होगी कि वो जाके लास्ट 10 सेकंड में फाइट ले लें. Vitality with a second. स्टार्ट उनको जिसे चाहिए था हुआ नहीं, बट उसके तुरंत बाद 2 rounds अपने तरफ लिया. बट जस्ट व्हाट अ स्प्रे डाउन कमिंग इन. तुरंत उन्होंने शॉट की तरफ 2 खिलाड़ी निकाला. देन ही चेक्स मॉन्स्टर. वहाँ पे एक खिलाड़ी दिखाई दिए, एंड जैसे आपने बोला क्विक स्विच टू द डीगल, अंडरस्टैंडिंग की रीलोड पे जाएंगे. अगर वहाँ पे पुश आ जाता है, ही माइट गो डाउन. वाइटैलिटी गेट द सेकेंड. फुल सेव के साथ इस बार गेमर लीजन खेलते हुए नजर आएंगे. And it should be another fair round for Vitality. CT पे अगर होता है, it could have been a different scenario, but अभी के लिए no util. They'll run across anything and everything that Vitality wants to throw. And कोई भी अगर duel मिलता है, they'll try to fight and see what they can make best of. दिया एक काफी क्लासिक कॉल पिस्टल्स के साथ एलोंग के ऊपर जाना, बिकॉज इकलौते प्लेयर हमेशा होल्ड कर रहे होते हैं. अगर एक ही मिलता है उनको तो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. लेकिन
जंपिंग अराउंड लाइक फ्रॉग्स, कूदते कूदते जा रहे, मौका नहीं दिया वहाँ पे स्पिंक्स को, लेकिन स्पिंक्स अच्छा रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं वहाँ पे। स्पिंक्स नोज वेयर इज गोइंग टू पीक, डैमेज लेंगे जरूर लेकिन किल नहीं निकाल पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एपेक्स भी उनके साथ बैकअप देते हुए ध्यान रखना पड़ेगा अपनी टीम को डैमेज ना दे दे। लेकिन अब वापस कनेक्टर की तरफ शायद रुक करेंगे। जी नहीं, नॉट इवन कनेक्टर, ए शॉट जाना चाहते हैं वॉशरूम के अंदर। एंड ZywOo फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कैन ही गो बिग ओवर हियर? प्ले राउंड मिलेगा जी हां, पहला किल निकाला जरूर है उनको, नीड्स टू गेट द सेकंड एज वेल, नेल्स द सेकंड, ऑलमोस्ट गेटिंग द थर्ड। स्पिंक्स बैकअप देने के लिए होंगे वहां पे। GamerLegion एक और राउंड हारेंगे बट उनके पास पैसा नहीं था। अब होगा पहला प्रॉपर बाय राउंड, अब देखने मिलेगा हमें what do GamerLegion have in store for us? क्योंकि Vitality, I don't think उनके पास अभी ऑप वो उठाएंगे। जरूर ZywOo शायद बोले कि नहीं मुझे डोमिनेट करना है तो शायद वो ऑप उठाए। I'm not sure if they even have the money, and गन फेंकने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। He does go for it. Quick molly. Oh. Okay. वरना क्रॉसओवर अगर करते हैं that could have also done the damage, but अभी के लिए बहुत तेजी से ZywOo का कंट्रोल ले चुका है। They will also have the lower control. Op. ZywOo's pushing it. लॉन्ग से कंट्रोल लेके फाउंटेन तक आ चुका है, प्लेग्राउंड का भी कंट्रोल उनको मिल चुका है। दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एज ऑफ नाउ। ये बहुत क्रूशियल होने वाला है। ZywOo जिस तरीके से पुश कर रहा है आगे, ऑप लेके वो भी कॉन्फिडेंस दिखाते जता रहा है, इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल होने वाली है, बट दिस कुड टर्न इनटू मिस इन्फॉर्मेशन रियली क्विक बिकॉज आइजैक अभी भी वॉशरूम के अंदर है। ZywOo स्कोप कर चुके हैं, अब ये होल्ड करेंगे। अगर रोटेशन आता है वापस एक की तरफ तो डेडली साबित होगा GamerLegion के लिए। लेकिन ZywOo जो पोजीशनिंग है काफी ज्यादा क्रूशियल। एपेक्स फ्लैश पॉप करने के लिए तैयार, जैसे ही कांटेक्ट होता है बीलोंग पे, Dupreeh, ओह माय गुडनेस, परफेक्ट कॉम्स, 2 किल निकालेंगे आसानी से, पाइसर निकाली तुरंत। ये देखिए फर्क नहीं पड़ता, स्पिंक्स को बैकअप देने के लिए तैयार एंड परफेक्ट काउंटर स्ट्राइक का मुजाहरा करते हुए यहाँ पे वाइटैलिटी। फर्क नहीं पड़ता उनको, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन दोनों टॉप नॉच, tier 1, and you don't expect anything less from them in a major grand final, that too the last ever major for Counter-Strike Global Offensive. They want to take it, home ground पे chance मिला है Mamba, I don't think they will let it go. फुल बाइक को पूरा डिनाई करती हुई नजर आई GamerLegion। एक ही राउंड था उनके पास, उसके बाद कुछ नहीं मिला इनको। Apeks, he is happy for his team। दोबारा एक टेक्निकल पॉज देखने के लिए, but the Hornets have started making noise, utmost support यहाँ पे अपने टीम को देते हुए। This is brilliant, literal golden Hornets को देखने के लिए मौका मिल रहा है। Vitality are enjoying, bracing this support अपने होम क्राउड से जो मिल रहा है। टेक्निकल पॉज एक और, आई एम नॉट श्योर व्हाट द इशू इज। ये दूसरी बार टेक्निकल पॉज दिया गया मेजर ग्रैंड फाइनल में, हमेशा दिक्कत हो सकती है। यू डोंट वांट एनीथिंग इंटरफेयरिंग विद योर गेम। अब लॉकडाउन होते बिल्कुल भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन दिक्कत दे सकती है आपको। लेकिन एक और अरीना में वाइटाली का सपोर्ट, होम ग्राउंड एडवांटेज, इनको हमने कल देखा था, शी वाज क्राइंग, रो रही थी जब वाइटालिटी ने क्वालिफाई किया था। अब देखना ये बनता है कि वाइटालिटी उनको दबा के रख पाती है कि नहीं सामने वाली टीम को। GamerLegion, they have so much at stake, लेकिन जब ये भी टेक्निकल पॉज होता है ऑफ कोर्स आप हमेशा उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए बिकॉज यू डोंट वांट टू स्विच ऑफ। आप जो वार्म अप करके आए, जो फोकस लेके आया था, वही फोकस चाहिए आपको। It's not going to be an easy grand finals, neither for Vitality nor for GamerLegion। जितना भी उनका विन परसेंटेज हो मैप्स पे, जितना भी स्ट्रैट बुक तैयार हो एक दूसरे के लिए, they will still have a challenge. It will be nerve-wracking. बहुत ज़्यादा मेंटल गेम रहेगा आज के दिन पे। They have to keep themselves composed. They will keep supporting Vitality till the end of this major. रुकने नहीं वाली ये ऑडियंस, हर एक राउंड पे, हर एक मैप पे, हर एक क्लच पे।
to each and every player from Vitality, and I think GamerLegion, जैसे बता रहे थे Chaos भी, he will be even more riled up and excited to play against जब उनको support नहीं मिल रहा है, पूरा support opponent की तरफ जा रहा है. He'll give his super performance इस वक्त. बेहतरीन नीड, मैकेनिकल स्किल का यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए शानदार नीड था वो. एक और इन द मीनटाइम स्काउट उठाई है उन्होंने 1-4 का स्कोर लाइन. एंड चाहे वो अगर थोड़ा सा भी वो कमिट करते हो वहाँ पे ऊपर से पीक लेने की कोशिश करते तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप देखिए धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं. उनको पता है उनकी जो पोजीशन है बहुत क्रूशियल होने वाली है. एंड मॉन से स्मोक कर दिया इन्होंने. दूसरा स्मोक उनके पीछे गिरा, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, उनके सामने गिरा. साउंड मुझे गलत है, सामने गिरा है बिकॉज आई हर्ड वन मोर स्मोक फॉर सम रीजन. बट एनीवे ZywOo पहला शॉट कनेक्ट नहीं कर पा रहे. इंसेंडियरी मारा जरूर है ताकि अंदर उनको पुश ना करे, लेकिन मेजिस्क हर बार की तरह होल्ड कर रहे हैं एंगल. एंड कियोस डीगल के साथ डैमेज दे पाएंगे उनको बहुत ज़्यादा. एक और बार मॉन्स्टर स्मोक कर दिया जाएगा, लेकिन शायद गैप है उसमें. बट डुप्री मेजिस्क के साथ होने वाले हैं बैकअप देने के लिए. एंट्री लेने वाले थे, शॉट पे शट डाउन होते हुए नजर आए. एक और ही फाइंड्स अ स्नैपी वन ऑन एपेक्स. वापसी जाने का मौका आ गया क्योंकि वहां पे एक मॉली डाला गया इंसेंडियरी. बट दूसरी ओर बहुत तेजी से स्पिंग्स ऑन द बैक स्टैप. किसी को ये आइडिया भी नहीं लग रहा है. ही इज ट्राइंग टू शिफ्ट वॉक. एक खिलाड़ी को देख चुके, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रिगर डिसिप्लिन. एक को गिरा दिया. ही लुक्स फॉर द सेकंड एज वेल. आखिरी खिलाड़ी ईमा, ही हैज अ ईगल, नोस द पोजीशन, बट स्पिंग्स, ही रीड्स लाइक अ बुक. 3 in the round and Vitality with another round. वाइटैलिटी अनस्टॉपेबल नजर आ रहे हैं. जो वाइटैलिटी के लिए एक चीज कही जाती है, जो उनका एवरेज दिन होता है, जो कल हमने देखा था. कल दे डिडंट प्ले द बेस्ट काउंटर स्ट्राइक दे कुड, लेकिन आज उसके कंपैरिजन में फ्लॉलेसली हर एक बार मैप कंट्रोल ले रहे हैं, हर एक जगह पे प्रॉपर्ली पीक कर रहे हैं. यूटिलिटी, कम्युनिकेशन, हर एक चीज टॉप नॉच रही है. जो वाइटैलिटी की पीक है, हम हमेशा बात करते हैं एक फ्लोर होता है. जब आपका एक एवरेज दिन जा रहा है, खराब दिन जा रहा है, तो आप किस लेवल की, किस स्तर की काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं. वाइटैलिटी का फ्लोर इज एवरेज, लेकिन उनकी जो पीक है वो सबसे ऊंची. अगर परफेक्ट काउंटर स्ट्राइक खेले वो, तो फिर उनको पकड़ना नामुमकिन सा हो जाएगा. और यहाँ पे इनिशियल पिक्स निकाल दे स्पिंग्स और ZywOo दोनों प्लेयर्स. लेकिन एक और एपेक्स को शट डाउन करेंगे. एपेक्स एक और बार स्नाइपर को अपना किल दे दो, स्नाइपर का भोग बनते हुए. जैसे बनाना का पुश किया था, ही शॉट लॉन्ग का भी पुश करके एडवांटेज उठाए. बस ZywOo, ही फाइंड्स दैट ट्रेड. GamerLegion का AWP गिराते हुए नजर आएंगे. बट लुक एट दिस, Dupreeh राइट नाउ पुशिंग आउट. आइडिया है, आइजैक इज वेटिंग, बट क्रॉसओवर हो चुके हैं. इसका आइडिया नहीं है आइजैक को बिल्कुल. नाउ ही इज वॉकिंग, रनिंग बैक. बहुत ज्यादा साउंड बना रहे एंड इसका आइडिया लग चुका है. दूसरी ओर ईमा क्रीपिंग अप. लॉन्ग की तरफ ZywOo कंट्रोल ले रहे हैं क्योंकि वहां पे C4 गिरा हुआ है. वॉशरूम की तरफ उनके साथ देते हुए स्पिंक्स. इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी वन. आइजैक होल्ड कर रहे हैं. ही थिंक्स टी की तरफ से आ सकते खिलाड़ी. जी हाँ, वन टैप स्नैपी. ईमा फाइंड ZywOo, बट अभी भी देखिए खतरा टला नहीं है. स्पिंग्स इज गोइंग टू होल्ड द क्रॉस. इसका आइडिया बिल्कुल नजर आ रहा है ईमा की तरफ से. एंड स्पिंग्स इज स्टिल गुड फॉर इट. टेक्स डाउन ईमा. आइजैक रिकवर करने के लिए आएंगे. मिलेगा जरूर, बट 20 seconds ऑन द क्लॉक. ही नीड्स टू बी सुपर फास्ट राइट नाउ. आइदर नीड्स टू आइसोलेट द फाइट या सीधा जाके प्लान करने के लिए मौका ढूंढना पड़ेगा. मांबा यहाँ मौका ढूंढना पड़ेगा. स्मोक डाला उसके लिए, क्रॉसिंग के लिए स्मोक जरूर डाला, लेकिन स्पॉट हो जाएंगे. आइजैक यहाँ पे किल निकालने की कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन अब टाइम समय नहीं उनके पास. एंड स्पिंग्स रियलाइज करे बिल्कुल रिपीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑप उठाएंगे. एंड आई स्टिल बिलीव ऑप बहुत पोर्टेंट वेपन है. अगर आपकी टीम इको पे है तो फिर भी अगर आप इनिशियल पिक निकाल पाए, आप अराउंड से राउंड अपने कंट्रोल में कर सकते हैं. लेकिन ZywOo के जो इनिशियल पिक था बेहतरीन. एंड तो फ्लैश डाल के बेट किया उन्होंने एक और को, क्योंकि उन्होंने जब ए लॉन्ग पीक किया उसके पहले एक फ्लैश डाला था, पॉप फ्लैश डाला था अपने टीममेट के लिए. एक और को लगा शायद कोई को पीक करेगा वॉशरूम से, लेकिन नहीं, ZywOo ने लॉन्ग से पीक किया उनको. हीरो ऑप क्या कुछ कमाल कर सकती है. बूस्ट करके चेक जरूर करेंगे. और ड्रॉप डाउन साउंड मिल चुका है. नाउ दे नॉट फॉर द चैलेंज. जंपिंग सिर्फ कर रहे हैं, एक खिलाड़ी को देख चुके. बट राइट नाउ नॉट गोइंग टू बी अ ग्रेट वेपन राउंड फॉर GamerLegion. दे माइट बी स्टिल प्लेइंग स्लो. ZywOo आगे गए थे मौका ढूंढने के लिए.
एक और शुए बुला रहे थे कि बूस्ट ले लीजिए, चेक कीजिए बनाना को, बट इट डजंट हैपन। अभी के लिए वॉशरूम के अंदर स्टेप इन करके सारे खिलाड़ी आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। ZywOo, he's ready for the first pick, बूस्ट करते हुए नजर आए। He sees the edge of the player, ऑप को डाउन कर चुके हैं, ऑप रिकवर हो जाएगा, बट कैन ही फाइंड एनीथिंग? ZywOo actually gets taken down from Isaac, but Spinks with a quick trade on Shue. But दूसरी ओर साइड के अंदर एंट्री मिल चुका था Isaac को. He finds the second for himself in the round. ऑप जो रिकवर किया था, but Isaac is unstoppable, recovers the weapon, gets the third in the round. साइड मिल चुका है, प्लांट होना चाहिए, but ये रीटेक भी करते हुए नजर आ सकते हैं. दोनों के पास किट है. M4A1S एक लॉन्ग से आ रहे हैं, एक वहां से शॉट. इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग. ट्रक पे प्लांट है, लॉन्ग का गार्ड करते हुए फ्लैश आएगा सीधा कियोस्क के सामने. लुक फॉर अ सेकंड ओवर देयर, Magisk with अकेले 1v2 निकालना पड़ेगा. बैंक की तरफ खिलाड़ी थे and Hema puts Dupreeh down. That's the second for GamerLegion. Very tactical, very bad in their weaponry. डिवाइस के साथ Dupreeh को दिखाते हुए. लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ी सी गलती स्पिंक्स की भी है. बैकअप नहीं दे पाए थे ZywOo को, एंड एट द सेम टाइम राइट साइड से उनके ऊपर चढ़ गए. Was nothing he would have done, लेकिन Isaac just kept on going in. W दबा दे रहे Tech9 लेके. 2014 की याद दिला दी. Tech9 used to be a very powerful weapon. Fnatic notorious ही Tech9 इस्तेमाल करने के लिए एक टाइम एक मीम बन चुका था. Fnatic की जगह उनको Tech9 कहते थे. रन एंड गन बहुत ज्यादा कर पाते, डैमेज भी बहुत ज्यादा देता था ये गन. लेकिन यहाँ पे do we have a timeout? I think so, yeah, we do have a timeout. Zonic जिसे बात कर रहा है, so not too sure though if it's GamerLegion या Vitality. अब दोनों टीमों के पास एक और वर्सेस ZywOo, एंड काफी एग्रेशन दिखा रहे थे शॉट के ऊपर. पिक निकाला था पहला, लेकिन जब आइजैक एक इको राउंड में आप पिस्टल्स लेके अगर 3-4 किल्स निकाल के जा रहे हो, तो फिर देयर इज नथिंग द ऑपोजिट टीम कैन डू एक्सेप्ट फॉर प्लेइंग बेटर काउंटर स्ट्राइक. लेकिन वापस बूस्ट मिस करते हुए. यू कांट बी मिसिंग दीस थिंग्स. मेजर फाइनल में आप ये गलतियां नहीं कर सकते, बहुत भारी पड़ेगी आपको. एक और नेट तैयार है, जैसे इन्फो मिलेगी नेट डालेंगे. डैमेज नहीं कर पा रहे. Kiosk getting one, couldn't find the second. Magisk तुरंत ट्रेड निकालते हुए, लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा था. 4v4 situation, but better on health is going to be GamerLegion. क्या ही बेहतरीन फ्लैश पुश ऑफ करेंगे. क्रॉसओवर को देख लिया जाएगा. He's still trying to fight. Springs up and close. Nice flash. He is sprayed out. में कौन जीतेगा? Unfortunately with Spinks, but there's a quick trade. ZywOo, he finds one for himself from long and back off कर रहे, वहां से भाग रहे, making sure कोई और ट्रेड ना हो. But Ema brings it down to a 2v2. एक और ZywOo के ऑप के सामने आने वाले, but it is एक और who gets it. Apeks, उनको पता ये नहीं होना चाहिए था, but guard कर रहे एक और. He has the right read, but oh no, spraying down. Scope in नहीं कर सकते. Fire out of the, he ran out of bullets. How? What in the world? They had the site, प्लान कर सकते थे, बट उनको आइडिया भी लग चुका था कि आ रहे खिलाड़ी. वाइटैलिटी की टीम ने सोच लिया था जिस हिसाब से वो बैक ऑफ करके अपने पिस्टल निकाल रहे थे. Apeks might actually go down, but Apeks was so quick in his swings, मौका ही नहीं दे रहे थे. Apeks pulls that back with the team. What a crazy round. Mamba. Insane, absolute insanity. मैं कहूँगा ये राउंड GamerLegion को बहुत भारी पड़ेगा. कॉन्फिडेंस भी तोड़ सकता है उनका, लेकिन Apeks ने जिस तरीके से वो किल निकाला, स्ट्रगल जरूर किया था मेरे हिसाब से. 2 प्लेयर्स पीक कर रहे थे, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं, अगर आप डबल पीक कर रहे हो एक एंगल, वो किस तरीके से अब ट्रेड नहीं निकाल पाए. दैट्स इनक्रेडिबल टू मी. बट Kiosk अभी फिलहाल ले सेकेंड टनल उसको होल्ड करेंगे शॉट की तरफ. एंड डिफॉल्ट इश सेटअप है इनका. भले ए पे ज़्यादा प्रेजेंस नहीं दिखाई इन्होंने, लेकिन मेजर स्मोक के थ्रू स्पैम कर रहे थे वहाँ पे. थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश की, कुछ तो बेट आउट कर पाए, लेकिन फ्लैशेस लाइन अप हो रहे हैं.
इंसेंडियरी भी डाल दी जाएगी, लेकिन Dupreeh doesn't miss those. Super consistent Dupreeh, जिस तरीके से वहाँ पे kills निकाल रहे, फ्लैश का इंतजार किया था, Apeks प्रॉपर सपोर्ट देते हुए। मेरे हिसाब से I think Apeks is doing God's work right now. तारीफ करनी होगी आपको Apeks की। बहुत ज़्यादा तारीफ करनी होगी Apeks की। Apeks really channeling in the support. आज निकल सकता है माम्बा। It's the grand finals. Better luck next time. 8-2, a 6-round lead Vitality के पास। Unbelievable rounds लेके हुए जा रही है। Heavy Tech 9 के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। Spinks is just gunning them down. 200 में मिलेगा बस। ZywOo through the flash. I think ये अगर और होता और देखने के लिए मौका मिला ना माम्बा, it will be some insane shots coming in from Vitality and तब तक GamerLegion पूरा टूट चुकी होगी। I think बिखरना तो चालू कर दिया उन्होंने अभी, because जिस तरीके से डोमिनेट करी है Vitality इनको। Suhi bringing it back for the team. 2-1 digs. एक के बाद एक इंडिविजुअल फ्लैशेस और ब्रिलियंस की मैं जो हमेशा चर्चा करता हूँ वो दिखाई दे रही। C4 उठा लिया जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट है घड़ी के ऊपर अभी भी, लेकिन सुही को होल्ड करना पड़ेगा। साइड पूरी तरीके से अकेले, लेकिन Dupreeh यहाँ पर रीड कर रहे हैं कि C4 अभी तक प्लांट क्यों नहीं हुआ। एक और मूव जरूर करे, लेकिन Magisk will keep holding that A side. कंट्रोल नहीं देना चाहते सुही, अभी भी इंतजार करते हुए, लेकिन नहीं मिलता है। एक और किल निकालेंगे, ये क्रूशियल किल होने वाला था उनके लिए, लेकिन अब Magisk एक और प्लान नहीं करना चाहते हुए भी, ये देखिए क्रॉस नहीं कर रहे। उनको पता है कि क्रॉसिंग होल्ड किया जा सकता है, एंड समझ गए Magisk, समझ गए कि अभी तक अगर क्रॉस नहीं किया दैट मींस समबडी इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, एंड Magisk ये अनुभव दिखाते हुए अपना दर्शाते हुए, बिग ब्रेन Magisk। प्लान जरूर होगा, लेकिन नाउ ही नोज ही इज एग्जैक्टली ऑन साइड। एक ग्रेनेड भी डाली जाएगी, लेकिन प्लांट लेफ्ट साइड पे एक और एक स्टेप आगे उनके, क्या उनको पता है C4 कहाँ पे प्लांट हुआ है, उनके नीचे प्लेयर होने वाले हैं। हाँ, लेकिन फर्स्ट नहीं पड़ेगा, एक और गारंटी करते हुए राउंड अपनी टीम के लिए। शुए देखिए अभी तक बहुत पीछे चल रहे थे अपनी टीममेट से, शुए एंड कियोस। और फाइनली जब स्टेप अप करने के लिए मौका मिला, ही स्टेप्ड अप ह्यूज, बट ये शॉट यू सॉ द पॉज एंड देन द हिट। प्रोडक्शन शोइंग अस कि कैसे यहाँ शॉट निकाले। He saw like just a glimmer of the player. Flash आया, he just flicked onto him. And ZywOo showing his improwess. 12th round. Phenomenal production quality यहाँ पे ब्लास्ट की मैं जरूर तारीफ करना चाहूँगा। Imagine if it wasn't a pause, it was just a lag spike. लेकिन स्पिंक्स यहाँ पे MP9 लेके गए थे पहला पिक निकालने के लिए, जो निकाला उन्होंने। आई थिंक हिज जॉब इज वेल मोर देन डन। प्री पुश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ बैकअप नहीं होने वाला। 5-7 लेके एकदम नजदीक खेलना चाहते हैं, वन टैप हेडशॉट देने की पूरी कोशिश होगी। ये उसके पास HP भी नहीं है। आई थिंक Dupreeh प्लेइंग दिस परफेक्टली। अनुभव नजर आ रहा है उनका, जितना भी अनुभव एक साथ। क्या वो किल निकाल पाएंगे? कियोस स्टिल होल्डिंग द लाइन, बी शॉट के ऊपर। ए पे इतनी आवाज करने के बाद, इतना यूटिल डंप करने के बाद वापस आ रहे हैं। ZywOo इकलौते प्लेयर ऑप लेके होल्ड करे ए पे। ही हैज शोन अप, लेकिन स्पिंक्स ऑलवेज फ्लाइंग बिलो द रेडार। Dupreeh परफेक्ट बैक स्टैप पे जा सकते हैं। Apeks बैक फ्लैश देने के लिए तैयार होंगे। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, Apeks हैज बीन डूइंग गॉड्स वर्क, लेकिन अब दिक्कत हो सकती है। लेकिन शॉट पे थे, पहला किल जरूर निकाला, क्या दूसरा निकाल पाएंगे? C4 डिनाई कर देगा आराम से, प्लान नहीं होने वाला इनके सामने। ZywOo क्रॉसिंग देख रहे थे, स्मोक ऑफ कर दिया गया। कॉन्टैक्ट पे स्मोक के थ्रू पीक करेंगे मेरे हिसाब से। ओह माय गुडनेस, कैन दे मेक इट हैपन? दे कैन, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे कैन, दे विल। ओह, एक और गेट्स टेकन डाउन। 1v2 Dupreeh एंड Apeks इस तरीके से किल निकाला, बहुत शानदार था। ZywOo नहीं मिस करेंगे वो शॉट, बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले। गेट्स अ सेकंड एज वेल। Vitality showing us a master class. हर एक ट्रिक जो उनके पास है, उनकी किताब में हर एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रही है। GamerLegion, this is their pick. अभी तक कोई मौका नहीं मिल रहा है ठीक तरीके से। They've just been scrambling the rounds. जो भी उन्होंने जीता है, it was all individual prowess जो अभी तक देखने के लिए मौका मिला है।
There's going to be a timeout coming through, but ये crossfire क्या ही बेहतरीन तरीके से. They do lose a player, but Apeks still pulls it back. उसके बाद repositioning to go and find this angle with his teammate. Plant किया वो सिर्फ उनके head देखने के लिए मौका मिला and Apeks immediately punishes. उसके बाद ZywOo को मौका मिला and ZywOo ने भी. GamerLegion with their third timeout. GamerLegion बहुत ज़्यादा प्रेशर में होगी अभी. राउंड निकालने की ज़रूरत. इतना बड़ा स्टेज पहली बार. मैंने कहा था 2 LAN इवेंट्स खेले इन्होंने. इनका रैंक 22 है पूरे दुनिया में. 22nd रैंक टीम इन अ मेजर ग्रैंड फाइनल, वो भी आखिरी मेजर काउंटर स्ट्राइक का. प्रेशर ज़रूर होगा GamerLegion के ऊपर, बट इट्स फार फ्रॉम ओवर येट. सिर्फ 12 राउंड्स हुए हैं एंड दे कैन स्टिल ब्रिंग इट बैक. 9-6 का स्कोर लाइन कर सकते हैं अपने फेवर में अगर 3 राउंड निकालते हैं यहाँ पे एंड ऑल बी फॉरगॉटन. लेकिन थोड़ा डैमेज देते हुए आई बिलीव ईमा पहला किल निकालेंगे Dupreeh के ऊपर एंड ZywOo ऑफ लेके कनेक्टर में खेल रहे. सोचिए आप. एक खिलाड़ी ऑलरेडी फाउंटेन से आगे पुश कर चुके हैं. He's at upward, pushing lower right now. QA, the C4 carrier gets taken down, making a double. Spinks bringing a big one for the team. 2 खिलाड़ी को डाउन कर चुके हैं. C4 आ चुके हैं, but it doesn't matter right now. 4v3 situation, man advantage वापस आ चुका है Vitality के पास. Spinks वापस होल्ड कर रहे. The Prince, he gets the third. He's going in for the fourth. ईमा फाइनली उनको पनिश करके दिखा देंगे. The turning towards a connector की तरफ ऑलरेडी ZywOo थे. इंतजार अभी भी कर रहे हैं कि अगर खिलाड़ी आएंगे I'll try to put them down. पहले लोअर चेक कर रहे हैं, उसके बाद he'll switch towards fountain. Well. ईमा एक और 2 versus 3 क्रूशल. ZywOo आखिरी मोमेंट पे उल्टा घूम गई. दिस कुड बी प्रॉब्लमैटिक. स्पॉट जरूर हो जाएंगे लेकिन ही विल गेट टेकन ऑन एज वेल. अब 2 versus 2 होने वाला है. 30 seconds ऑन द क्लॉक. Apeks लॉन्ग की तरफ मूव करते हुए उनको पता है जिंदा रहने की जरूरत. प्रॉपर्ली खेलने वाला है. एंटी फ्लैश खेल रहे हैं. जैसे ही C4 प्लांट होगा कोशिश करेंगे यहाँ पे, लेकिन ट्रक के ऊपर C4 प्लांट हो रहा है. कोई ही कैन स्टिल गेट हिम. Apeks इस टाइम पर बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा. एक और बनी ऑफ करके अंदर आने की कोशिश करी थी, लेकिन Apeks is just too good for this. 13 kills on Apeks, 17 on Spinks. Unbelievable show from these players coming in. उनको पता है that they need to take this. This is their home and this is where they want the title. हर एक जगह पे GamerLegion के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं. हर एक प्ले पे GamerLegion को आउटस्मार्ट कर रहे हैं. They might be going aggressive. गलतियां कर रहे हैं और गलतियों को बहुत जल्दी सुधारते हुए नजर आ रही है टीम Vitality. ऑलरेडी ऑन डबल डिजिट्स. 2 और राउंड रहने वाली है. इस बार ZywOo को फ्लैश के साथ पुश बैक किया जाएगा. सिविल की तरफ चेक किया बट प्लेयर्स वर नॉट देयर. बट फाइनली ये ग्रेनेड 2 लोगों को. That's a lot of damage. खोखला कर दिया वहां पे 2 प्लेयर्स को. आसान नहीं होगा उनके लिए बिल्कुल भी. GamerLegion शॉट कंट्रोल जरूर लिया उन्होंने, लेकिन Vitality जिस तरीके से इंफॉर्मेशन डिनाई कर रही है, जिस तरीके से मैप कंट्रोल डिनाई कर रही है, बखूबी यहाँ पे शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए एंड जिस तरीके की काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं, आसान नहीं होता इस तरीके को रेप्लिकेट करना, बिकॉज आपको वैसे प्लेयर्स भी चाहिए जो आपके लिए परफॉर्म करेंगे. स्पिंक्स 17 किल के साथ पहले हाफ में, आप 13 राउंड्स में 17 किल निकाल के बैठ चुके हैं. हमेशा हम बात करते हैं ZywOo के बारे में, हाउ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर टू टच गेम, द प्रोडिगल सन ऑफ काउंटर स्ट्राइक. लेकिन स्पिंक्स, उनको मैं दाद देना चाहूंगा यहाँ पे, बिकॉज जिस तरीके से खेले हर बार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं, एंड आई डू बिलीव he deserves all the praise and all the credit in the world. ZywOo अभी के लिए शॉट चेक करते हुए नजर आ रहा है, but finally gets an idea जैसे लाइन अप आ रहा है and he fights through wall back. Kios is down. तुरंत सेफ्टी की तरफ बढ़ जाएंगे, but he might have a gap where he can fight. होल्ड करेंगे अभी बैंक, but can he find any value? दूसरी ओर वॉल बैंक करने के लिए ट्राई किया था ZywOo. He knows there's somebody trying to push him up. Tech9 2 लोग आ रहे हैं उनके सामने. Magisk on the back. Spinks on the back, my bad. Magisk actually takes 2. Trying to go for a push. ZywOo को and Apeks को डाउन करते हुए Isaac, but इस बार वेपन रिकवर करने के लिए मौका नहीं मिला. But Spinks already पीछे से आ चुके हैं, but ईमा helping out with Isaac does get one. Finally वेपन रिकवर करेंगे. Isaac trying to fight for a round for his team. 1v1 situation plant हो चुका है. He has a tech on his hand, but Dupreeh closes it. Kit रहने वाला है and defuse करके दिखा देंगे. What a round
from both Vitality and GamerLegion, but Vitality keep it in control. 11 on the board. 2014 called and they won the meta back. Tech 9 deadly साबित हो रहे यहाँ पे. Apeks ने जिस तरीके से देखा था ZywOo के सामने, they know कितनी बड़ी वो राउंड डेफिसिट से बाहर निकले वहाँ पे. मोमेंटम दे सकता था ये राउंड उनको, लेकिन 11-3 का स्कोर लाइन. एक और राउंड वाइटैलिटी निकालेगी तो डोमिनेटिंग स्कोर होगा ये. Incredible stuff for Vitality, लेकिन एक और बिल्कुल नहीं. ZywOo will fall back. Oh, Spinks! Right at the edge of the smoke. Isaac को देख लेंगे. That's the opening frag and immediately slow down GamerLegion. थोड़ा डैमेज कियोस के क्रॉसओवर की तरफ भी आया था from Magisk. जहां पे भी माम्बा GamerLegion जाना चाहते थे, facing some or the other problem coming in from Vitality. उनकी util, उनके स्प्रे, 2-man push coming through. एक ही स्प्रे में दो लोगों को पकड़ेंगे. Kios with a brilliant play coming through. नंबर एडवांटेज वापस आ चुका है फॉर GamerLegion. एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ सकते हैं. C4 लॉन्ग की तरफ से ए जा रहा है. Wanting a trade, Apeks smoke को चेक कर रहे हैं. Kios is holding for another push. Smoke clear होते हैं. There can be a duel. Apeks alone. एक ही खिलाड़ी रहने वाला है B की तरफ. So he is a worried shot and monster की तरफ. But smoke clear होने वाला है and जैसे disappear हुआ था, Apeks with a brilliant read gets it back to a 3v3. And यही हम बोलते हैं, this is just the experience and the knowledge of the game. आपको पता है इतनी टाइम के बाद भी अगर शॉट से कुछ नहीं आया, यूटिल में नहीं आया, he knows the presence. And उसके बाद ZywOo, शूहे स्पिंक्स को जरूर पनिश करेंगे. कॉल जरूर मिल चुका है ZywOo को. Let's wait and watch. He makes another one. A cracking shot happens. 1v2 निकालना पड़ेगा शूहे को. एक खिलाड़ी का इंफॉर्मेशन पता है. Apeks का B पे थे लास्ट सीन. No idea for him right now. He's repositioning. But it's going to be a tough clutch. 1 versus 2 निकालना होगा. इनको आइसोलेट करनी पड़ेगी फाइट्स को. यूटिलिटी अवेलेबल है. स्मोक है Apeks के पास. C4 को स्मोक जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्या वो करना चाहेंगे? फ्लैश भी है. जी हाँ, स्मोक करेंगे. टैप किया है फोर्स करने के लिए, लेकिन he knows कोई पीक करेगा यहाँ पे. लेकिन ZywOo is going to stick it. I don't think so. Suhe gets it. Suhe picks it up. एक राउंड निकालेंगे. हर एक राउंड यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी. वाइटैलिटी लेकिन शानदार प्रदर्शन में कहूंगा पहले हाफ में. 11 का स्कोर लाइन है, बट फिर भी आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे इतना ज्यादा खुशी नहीं है, बिकॉज दे नो GamerLegion कभी भी इसको अपने तरफ मोड़ती हुई नजर आ सकते. दे माइट स्नोबॉल इट इन देयर फेवर. वाइटैलिटी के पास लीड है, एडवांटेज है, बट क्या बरकरार रख पाएगी? बट जैसे आपने बोला, ब्रिलियंट फर्स्ट हाफ फ्रॉम वाइटैलिटी. पहले राउंड जैसे उनके हाथ चल चला, दे ब्रॉट इट बैक इमीडिएटली. देखिए ब्रेक एंड ऑडियंस ऑफ कोर्स वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, बिकॉज बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है अंदर. अब देखेंगे अगर वाइटैलिटी फैंस होंगे तो. लेकिन ZywOo ने पहले राउंड में 2 क्रूशियल किल्स निकाले थे, लेकिन तुरंत पे एक और थ्रो निकाला. एंड काफी अच्छी शुरुआत है GamerLegion में कहूँ, लेकिन स्पिंक्स ने और ZywOo ने जिस तरीके से स्टेप किया वहाँ पे, शानदार. बट दूसरा राउंड, ओह माय गुडनेस, ये ईगल्स, समबडी टेक अवे द ईगल्स फ्रॉम वाइटैलिटी. फर्क नहीं पड़ता. Apeks ने B पे जितने राउंड्स लॉक इन किए हैं, डूइंग गॉड्स वर्क. शानदार फ्लैशेस, बेहतरीन सपोर्ट. एंड आई डू बिलीव उन्हीं की वजह से B पे वो अंदर आने नहीं दे रहे थे. एंड ZywOo ऑफ साइड से पहला पिक निकाल रहे थे बार बार. This play was insane from Apeks. बुलेट्स खत्म हो गया, उसके बाद his just peaks was just so fast कि अपने आप को कंपोज नहीं कर पाए वहां पे खिलाड़ी. अदरवाइज एक और could have pulled something off. जैसे आपने बोला, Apeks has been a single point of stronghold जो B पे नजर आ रहे थे. मौका ही नहीं दे रहे थे. बट शूहे थोड़ा लेट आया, but still stepped up for his team, pulled up a couple of rounds in the team's favor. But Spinks, क्या बोलेंगे इस खिलाड़ी के बारे में? He was just always a surprise जिस हिसाब से वो आगे आ रहे थे. उसके बाद Magisk in a 1v2 situation when he was caught out. Brilliant presence of mind. उनको पता था कोई ना कोई flank करके आएगा. Tech 9 have been fatal. Shuhe with his clutches has been fatal. ये चौथा राउंड उनको नहीं मिलता. 12-3 का स्कोर लाइन हो सकता था, but somehow GamerLegion have kept themselves afloat. बहुत मुश्किल था, ट्राई किया. अभी भी गेम उनके तरफ मोड़ सकते हैं. The sides are going to switch up, but Apeks जैसे खिलाड़ियों को
शट डाउन करना पड़ेगा। जिस हिसाब से वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते हुए नजर आ रहा है। बी का कंट्रोल गया था एक बार माम्बा, उसी टाइमिंग पे जैसे शॉट का कंट्रोल उनको मिल गया था, उनके टीममेट को बुला के बूस्ट लेके ही टेक्स डाउन द C4 प्लांटर एंड वहीं पे पूरा जो साइट है वल्नरेबल हो जाता है एंड आसानी से रीटेक करके एपेक्स अपनी टीम के साथ दिखा देते। दैट इज जस्ट ब्रिलियंट प्रेजेंस ऑफ माइंड, द एक्सपीरियंस ही हैज एंड दैट इंटेंट जो ये मेजर जीतना चाहते हैं अपने होम ग्राउंड पे। You see the chants, right, for Apeks. जब भी वो एंटर करते हैं, they sing for him, and he doesn't want to disappoint them. Of course, and देखिए होम क्राउड होता है, आपको पता है आपने इतना वक्त दिया है इस गेम को, तो आप एक लेगेसी बिल्ड कर लेते हो और वही लेगेसी की वजह से इतना प्यार मिलता है आपको। And I do believe Apeks has done it on the cusp of winning a second major. 2700 से ज़्यादा दिन, 2700 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं उनको आखिरी ट्रॉफी उठाए हुए। एक और बार करने की कोशिश, लेकिन सामने GamerLegion जो उनको रोकने के लिए तैयार। पहला राउंड सेकेंड हाफ का बहुत क्रूशल होने वाला है लेकिन GamerLegion के लिए। ईवा ड्यूलीज लेके अंदर पुश करने की कोशिश एंड स्पिंग्स यूटिलिटी क्या क्या उनके पास, स्मोक फ्लैश अवेलेबल, बी एक्सप्लोड होने वाला है, प्रॉपर बी एक्सप्लोड होने वाला है, उसमें कोई सवाल नहीं है। एक पिक निकालेंगे, कनेक्टर पे पिंसर करके बी एक्सप्लोड करेंगे। होल्ड ऑफ शॉट का पूरा कंट्रोल रहने वाले GamerLegion के पास। मॉन्स्टर को चेक करने के लिए जाएंगे बट दे हैव टक्ड इन टू द साइड। वाइटैलिटी कोई व्हाट ZywOo just was checking and Ema का quick pick at connector। एक और खिलाड़ी रहने वाला है and ZywOo has doubts। Felix के साथ देख लिया था but oh Isaac with a quick flicker out। Apeks को डाउन करेंगे, वॉक इन कर रहे थे इस टाइम पे बी की तरफ। There's so many positions जहाँ पे Vitality साथ में पुश कर रही है, causing so much problem and Dupreeh planting at B। 3v4 situation और brilliant damage coming उन्होंने एक और, but ZywOo सिंगल हैंडली दो लोगों को डाउन करके दिखा देंगे। स्मोक ऑफ हो चुका है, डिफ्यूज करने के लिए ट्राई करेंगे बट किट नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम बीतता हुआ जाएगा। बट ZywOo look at him, he is pushing up from heaven। खिलाड़ी को देख चुके हैं, he's done the damage, he's looking for a connection but ZywOo with 4 in the round। 4 लोगों को निकाल के राउंड अपनी टीम को दिलाते हुए ZywOo is rising to the occasion। He is rising to the occasion, लेकिन यहाँ पे अनबॉक्सिंग देखते क्या होता है यहाँ पे। वाओ, नाइफ अनबॉक्स कर ली इन्होंने। एक हम मांग रहे थे from the gods of the major and मिला। He is the luckiest person alive आखिरी मेजर में। but अभी के लिए राउंड शुरू हो चुका है। Dupreeh with the first, punish करेंगे एक और को। They get the buys because of the plant। ZywOo will find the trade again। जिस हिसाब से ZywOo लैग बिहाइंड कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, अभी देखिए ऑलमोस्ट अपनी टीम के लिए टॉप फ्रैगर बन चुके हैं with 12 kills coming through। Kios still needs to step up, he's still not got the game in control। ईमा के लिए तैयार, वाइटालिटी की फोर्स जरूर किया उन्होंने। C4 प्लान किया था, उसकी वजह से उनको पैसा बहुत ज्यादा मिला था, उसी चीज का भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पे। लेकिन ईमा ऑन द बैक टैप, क्या किल निकाल पाया? ओह माय गुडनेस, Apeks stepping up, going big, the NM leader, the captain himself, unbelievable stuff, the stuff of gods। इस तरीके से Apeks ने वो शॉट मारा था ईमा को, आई डोंट थिंक उसका कोई जवाब होगा। उनको भी पता है, उनको भी पता है कितना मायने रखता है वो शॉट और कितना मुश्किल था वो।
eco round. I mean, upgraded pistols. Spinks with the first chaos को down कर चुके हैं. Right next corner पे रहने वाले खिलाड़ी peek नहीं कर रहे, wait कर रहे. But already उनके साथ duel into. Ooh, ZywOo picks up one, looking for another, but Apeks slow and steady. Peek करेंगे, FaMAS के साथ एक उठा देंगे, but Isaac as well pops ZywOo off. 3v3 situation, still doable. GamerLegion, even though यहाँ पे स्प्रे करने के लिए वेपन्स नहीं है, they have these upgraded pistols जिससे वो ट्रबल करते हुए नजर आ रहे हैं. Dupreeh, can he check this truck properly? Initial shots मिस करते हुए Isaac, but closes it. Dupreeh को डाउन कर चुके हैं. C4 रिकवर करके प्लांट के लिए जाना पड़ेगा. Magisk with the first one, but it's not the first person जिन्होंने Dupreeh को डाउन किया था. एक और, and Isaac are still going to be pumping bullets and अपने टीम के लिए राउंड दिलाते हुए नजर आएंगे with the Deagles. You should have a look at Twitter right now. जिस तरीके से everybody's losing their minds on that knife. ये चीज एक तो अनबॉक्स करना इतना मुश्किल होता है, ऊपर से आखिरी मेजर में उन्होंने वो करके दिखाया, which is phenomenal, unbelievable. लेकिन Vitality टाइम आउट लेते हुए यहाँ पे focusing on the match. जरूरत पड़ेगी वो राउंड नहीं आ सकते, लेकिन GamerLegion इतनी आसानी से वो जीत भी नहीं देने वाले सामने वाली टीम को. They will make the work for it. Absolutely. अब देखना ही है Vitality क्या जवाब दे दिए. पिस्टल राउंड, दोनों पिस्टल राउंड हारी थी वो. ये देखिए फैंस की एनर्जी, कूल क्लासेस. हाँ, Isaac उसके बाद दोबारा रिपोजिशन करके गेटिंग मोर. 6 और राउंड दूर है सिर्फ GamerLegion. सीमिंग लाइक दे कैन इजीली मेक इट बैक. दूसरी ओर Vitality, एक खिलाड़ी के पास वेपन नहीं रहेगा. That's going to be Spinks अपने टीममेट के साथ एक्सचेंज के ऊपर खेलते हुए नजर आ रहे हैं. एक ही खिलाड़ी के पास बहुत ज़्यादा यूटिल रहेगा कमिंग इन फ्रॉम Vitality, and that's going to be Apeks, their leader. दूसरी ओर भी इतना ज़्यादा कुछ बेहतर यूटिल नहीं है कमिंग इन फ्रॉम GamerLegion on their CT side. जुडिशियसली इस्तेमाल करना पड़ेगा. नाइस फ्लैश, नो ओपनिंग. स्पिंक्स यहाँ पे इंतजार करे शॉट पे, लेकिन ईमा is the man who needs to pop off right now. ZywOo क्या उनके ऊपर किल निकालेंगे और पहले ओवर. जी हाँ, ये एंगल बहुत ज्यादा रिस्की एंगल है मैं कहूँगा आपको, क्योंकि जब भी कोई भी एंगल आपके नजदीक होता है, आपका कंधा सामने वाले प्लेयर को जल्दी दिखाई देता है आपसे. ZywOo वहाँ पे उनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर को टेक डाउन करते हुए will not been able to show up इस मैच के अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट किल था ये. ओह एक और, वो दूसरे डायरेक्शन पे ध्यान रख रहे थे, जैसे उन्होंने मुड़ा Apeks right through his skull. 5-3 but up close and personal. ZywOo के पास FaMAS, he was flashed, कोई अंदाजा नहीं लगा. And then there's just Isaac alone. Vitality अपने आप के लिए 13th राउंड सिक्योर करते हुए नजर आएंगे. A brilliant show coming in from them. हर एक खिलाड़ी टॉप लेवल पे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है. Not making much mistakes. They're trying to keep it as clean as possible, Mamba. Look at Apeks. Imagine the horror if he actually missed that shot. Yeah. अगर वो मुड़ते हुए वो शॉट मिस कर देते तो क्या होता, आप सोचिए. I think मॉनिटर टूट जाता वहाँ पे, खून के आंसू बहाते. लेकिन all that ends well is well. Spinks यहाँ पे एक और बार बी शॉट की तरफ आज कंट्रोल ले रहे. कनेक्टर के अंदर भी मोलोटॉव्स काफी ज्यादा भेजी इन्होंने. GamerLegion अब देखना ये बनता है क्या ये राउंड निकाल पाएंगे. जी ईमा एक और बार किल निकालता डीगल के साथ. डीगल्स हैव बीन फिनोमिनल दोनों टीम की तरफ से, लेकिन दूसरा नहीं निकाल पाएंगे. मेजिस्क देर आए दुरुस्त है, ट्रेड जरूर निकाला. एंड स्पिंक्स शॉट कंट्रोल नहीं लेने देंगे उनको, बिल्कुल नहीं लेने देंगे. आइजैक एक और ZywOo, 3 प्लेयर्स. अभी भी उम्मीद जिंदा है उनकी. डीगल्स अवेलेबल है उनके पास है. एक और will make it work. Magisk को टेक डाउन किया वहाँ पे. 3 versus 3 यूटिलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे. Nonetheless, Isaac will fall prey to him. एक और ZywOo. मौका अभी भी है, मैं मानता हूँ सैम ये राउंड निकालने के लिए.
मुश्किल होगा लेकिन मौका है। वेपन रिकवर नहीं किया, अभी के लिए वो प्लांट का इंतजार करेंगे एंड फाइनली मिल चुका है, प्लांट बी पे हो चुका है। लुक एट द स्मोक, एपेक्स बहुत नजदीक है हेवन को चेक करते हुए, वो दूसरी और डिफॉल्ट पे बैठे हुए ZywOo। स्पिंक्स चेकिंग मॉन्स्टर, इट्स नॉट इजी, शुई हैज टू कनेक्ट द फर्स्ट वन, नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। वेपन रिकवर करके एक और लुकिंग फॉरवर्ड टू सेविंग दिस AK, देयर इज नथिंग एल्स ही कैन डू, दैट इज गोइंग टू पुट वाइटैलिटी ऑन 14। 2 और राउंड माम्बा दूर रहने वाले वाइटैलिटी फ्रॉम क्लोजिंग द फर्स्ट मैप। एंड इमेजिन इतने बड़े एडवांटेज पे फर्स्ट मैप को क्लोज करना, वो भी ग्रैंड फाइनल्स में। वाइटैलिटी will be on an adrenaline rush. Oh, the trumpet guy is back. इमोशंस होंगे ऑफ कोर्स, नर्व्स भी होने वाले। गेमरलीजन का चौथा टाइम आउट, सोनिक देखिए काफी ज्यादा एनिमेट, काफी ज्यादा इमोशंस यहाँ पे दिखाते हुए। आई एम श्योर यही कह रहे होंगे कीप एट इट, जो करते आए वो करते रहिए। बिकॉज लुक, पहले हाफ में भी जिस तरीके से वाइटैलिटी ने खेला था, एपेक्स बी साइड को लॉक इन करने के लिए हेल्प कर रहे थे, ZywOo ए पे जिस तरीके से खेल रहे थे, मौका नहीं दे रहे थे गेमरलीजन को। वो मैप कंट्रोल बेहतरीन तरीके से लिया था, कोई भी प्ले हो उसका काउंटर तैयार था, और फर्स्ट पिक और उनका कन्वर्जन रेट शानदार था। और यही चीज आप रिपीट करिए टेरेस साइड पे, खास तौर पे आपका कन्वर्जन रेट देखा जरूर जाता है। पहला पिक अगर आप निकाल पाते हैं, इफ यू कैन कन्वर्ट दैट मैन एडवांटेज इनटू अ राउंड विन, तो उससे बेहतर चीज कोई नहीं है। लेकिन वाइटैलिटी, वेपन्स है उनके पास, यूटिलिटी है, सामने वाली टीम के पास कुछ नहीं है। आसान राउंड होना चाहिए, लेकिन गेमरलीजन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। देखिए पिछले बार अपग्रेडेड पिस्टल के साथ एक राउंड निकाला था, इस बार जी हाँ इट्स अ सेव कमिंग थ्रू। हीरो AK जो सेव किया था एक और के पास रहेगा। बूस्ट लेके इंतजार कर रहे थे मॉन्स्टर पे ऑफ गार्ड कैच करने के लिए। आई थिंक किसी ने उनको सुना नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी उस एंगल को होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। बट इट्स द शॉर्ट ऑपरेशन जो आ रहा है, शॉट की तरफ से एक खिलाड़ी ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं, शुए उसको जरूर गार्ड कर रहे हैं अभी के लिए। स्पिंक्स विल ही स्विंग आउट, ये जरूर देखना पड़ेगा। साथ देने के लिए मैजिस्क भी रहने वाला है। ओह दैट वाज अ ग्रेनेड। मेरा ये मानना है कि काफी अच्छा एंगल खेल रहे हो। पता है इको राउंड यूटिलिटी इतनी ज्यादा होने वाली नहीं है, रिस्क बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि बी शॉट से अगर कोई भी जंप स्पॉट करेगा तो आपको नजर आ जाएंगे प्लेयर। लेकिन ईमा सर्वाइव करे, एक ये साइड पे लीगल उनके पास पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, आसानी से साइड कंट्रोल नहीं देना चाहते, लेकिन ही विल हैव टू फॉल बैक, बिकॉज़ जिंदा रहना है अपनी टीम के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, बरकरार करने के लिए। मेजिस्क सीटी होल्ड करेंगे, स्मोक कर चुके हैं मेजिस्क, दुप्रीह, दोनों प्लेयर्स अपनी टीम के लिए एक चट्टान बन के बैठे हैं। मेजिस्क के पास 17 किल्स, ZywOo के पास 18। दुप्रीह देखिए कितना ज्यादा एग्रेशन दिखाते हैं, ये बहुत भारी पड़ सकता है उनको, लेकिन एक और अपने टीममेट के पास बूस्ट लेंगे। एक किल की जरूरत उनको ओपनिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक किल। शायद एपेक्स यहाँ पे स्पॉट हो जाएंगे, लेकिन वापस रीस्मोक करके फेल हो जाएगा रीस्मोक, नॉट श्योर। लेकिन नीचे नहीं गिरना चाहिए था वो स्मोक, अभी ऊपर आएंगे जरूर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और तुरंत रेड निकालेंगे, लेकिन वाइटैलिटी जिस तरीके से पोस्ट प्लान खेले, दुप्रीह के साथ वॉल बैंग, वाइटैलिटी ने जिस तरीके से पोस्ट प्लान खेला, वहां पे कोई मौका नहीं था, बिल्कुल मौका नहीं था गेमरलीजन के पास रीटेक के लिए जाने का। आपने बोला एक किल मिलना चाहिए तब जाके एक पॉसिबिलिटी बन सकता है, मिला, बट इट वाज आफ्टर लूजिंग 3 ऑफ देयर ओन। वाइटैलिटी अभी तक जो खेली है, मास्टर क्लास प्ले कमिंग थ्रू, प्रॉपर रीड्स, प्रॉपर कवर्स, ट्रेड गेम इतना बेहतरीन था, ओपोनेंट को अपने सीटी साइड पे रीड करते हुए नजर आए थे जस्ट लाइक अ बुक। इस बार वो खुद डी साइड पे खेल रहे, गेमरलीजन को इतना ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहे। दिस कैन बी द लास्ट राउंड, गेमरलीजन के पास ज्यादा यूटिल नहीं है, दे गोइंग इन फॉर अ क्विक रश। वाइटैलिटी क्या पिक निकाल सकते, पिलर के अराउंड एक खिलाड़ी रहने वाले, फ्लैश ईमा गुड फॉर 1, ZywOo takes one but cures, wait, Apeks and Dupreeh they're turning in their favor, it is still a 2v2 situation। C4 प्लान किया जा सकता है, 2 खिलाड़ी जो है वो बहुत दूर है, रोटेट करके आना पड़ेगा। एक और विद ऑप, ही इज कमिंग फ्रॉम शॉट, दूसरे खिलाड़ी सीटी से आ रहे, डीप सीटी पुश करके दुप्रीह। 2v2 Apeks, he cleans ईमा, आखिरी खिलाड़ी रहने वाले। एक और विद ऑप, वाटर की तरफ रहने वाले एपेक्स, ही इज नॉट ओवर अग्रेसिंग। दूसरे और सीटी के एंगल, बट पोजीशन दे चुके एक और। Now it's not going to be possible, and Vitality
पहले मैप को अपने नाम पे क्लोज करते हुए नजर आएंगे एंड एपेक्स वाज द लीडर टू मेक इट हैपन। वाइटालिटी पहला मैप जीते हुए यहाँ पे एक मैप दूर अपने लिए मेजर टाइटल गारंटी करने के लिए। Dupreeh one more win away, one more map away from solidifying himself as an absolute legend in the scene। 5 मेजर काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव के अंदर इकलौते प्लेयर बनेंगे अगर अगला मैप जीत पाएंगे तो, लेकिन गेमरलीजन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। बहुत कुछ सीखने के लिए, डिसअपॉइंटमेंट उनके जहन में होगी लेकिन हार नहीं मानेंगे। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी हार मानेगी ये टीम, क्योंकि मेहनत कराई, मशक्कत कराई उन्होंने वाइटालिटी को। इन Dupreeh काफी ज्यादा खुश। देखिए, इट वाज नोन टू बी टीम्स विल कम आउट विद देयर बेस्ट मैप्स, ट्राई जरूर करेंगे एंड इट हैज हैपेंड, जिसके वजह से ये जरूर था कि दोनों टीम्स ओपोनेंट के बेस्ट मैप्स के ऊपर प्रिपरेशंस करके आएंगे एंड दिस वाज जस्ट वाइटालिटी प्रिपेयरिंग रियली वेल अगेंस्ट गेमरलीजन ऑन ओवरपास। बट अभी वही सिनारियो है कि वाइटालिटी का बेस्ट मैप है जहां पे इट इज गेमरलीजन टू चैलेंज देम। क्या कुछ अलग करके दिखा सकते हैं न्यूक पे। 100% विन रेट रहने वाला है फॉर वाइटालिटी, सो फॉर देम इट सीम्स टू बी their map to win, but GamerLegion they can make an upset happen right here। and इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर हम इन्फर्नो चले जाएंगे माम्बा, it can be an even Stevens, दोनों टीम्स के लिए equal opportunities खुल जाता है because both of them have similar win percentage जो अभी तक देखने के लिए मौका मिला है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सेकंड हाफ ZywOo का वो जो वनटा था प्रिस्टीन, लेकिन सुई बार बार प्रेशर के साथ स्टेप अप कर रहे हैं अपनी टीम के लिए जब भी जरूरत पड़ रही है। He's been stepping up and 4K निकाला था उन्होंने, लेकिन वाइटालिटी ऐसी टीम है जो आपको बिल्कुल जगह नहीं देगी। They will keep at it। मोमेंटम भूल जाइए आप, वाइटालिटी के खिलाफ बना पाएंगे, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी। हर एक राउंड के लिए, हर एक किल के लिए मेहनत कराई उन्होंने। But the problem was vitality was just that tad better। देखो, and ये जो आखिरी रश, I thought maybe Chaos and Isaac कुछ कर सकते थे, but Apeks ruining all their dreams। पोजीशन पता चलने के बाद Apeks knew कि कब swing out करना है, and look at the timing, the corner that he was holding। कुछ नहीं कर सकते थे इसको डिनाई करने के लिए, कोई इन्फो नहीं दिया जा रहा था एक और को। GamerLegion might not be happy, but उनके आंख में वो आग अभी भी नजर आ रहा है। They are going to give it their all second map baby। More than that, I feel like they're stunned। उन्होंने ये बीटिंग एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ऐश के मुंह के ऊपर भी आप देख पाएंगे कितना ज्यादा प्रेशर है। प्लेयर्स भी काफी ज्यादा शांत, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि फिगर आउट करना पड़ेगा। दिस कॉन्वर्सेशन इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस इन द लाइफ अभी तक का। लेकिन जूलियानो यहाँ पे नॉट श्योर क्या कह रही है, लेकिन इवन शी इज वेरी रिव्यर्ड इन द सीन। One of the finest female players out there in the world। देखना ये बंदा वाइटालिटी क्या इसको 2-0 कर पाएगी या नहीं, या फिर गेमरलीजन एक और मैप, एक और मौका अपने आप के लिए बचाएगी। What a tournament it has been so far। I mean, जो भी हमने अभी तक देखा है, whether it might be Kenny S जिसे हम अभी उनको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, whether it might be the show match, whether it might be the teams जो अभी तक grand finals की तरफ आई है, the journey has nothing competes with a major। It's our Super Bowl, it's our World Cup। Backstab, arriving at the perfect moment, and so this is your one last chance। Anyone we draw is gonna be feeling way worse than we are drawing them। It would be very stupid of anyone to underestimate anyone beyond Mars। They are so sharp. At some point we fucked up। Everything can go wrong quickly। You are guaranteed upsets the moment that first round starts। We're like one game away, and it's just really important because if we lose this game, everybody's going home। Why didn't they win a major? I think you want to get rid of that conversation। Leaving with the last major title, it would mean everything to me। Nobody's gonna come take that away from you. Nobody's gonna say they ever won the last one. You fucking did it। And this is the last chance in CSGO at least to do it।
we're almost there, but now the pressure is here. I mean, that's why we play. The moment that like the first bullet fires, like it's war. If you're not motivated now, you probably never will. I wake up every morning to win, and I work to win, and I live to win. I'm fucking ready. And fucking ready they were on the server indeed. The Hive thriving on this first map as they completely crush GamerLegion in the palm of their hands. Overpass, the pick of their opponents in this one as well. We can see how well drilled GamerLegion were on Overpass previously. Vitality said, hell no, we are stealing this one from under your nose. I think that's going to be a theme of the disc. Everything we feared going into this grand final kind of transpired. We talked about Kias having been underperforming against Heroic. We'll talk about that later. We discussed the veto as well. We saw it as a bit of a mistake, perhaps, not to jump on the opportunity of going with Mirage, picking into Overpass, starting on a T side in this setting against Vitality. Turned out it wasn't the right move for GamerLegion. Absolutely, I agree with you, Jacob. It just feels like Vitality on the CT side of Overpass can create such an unstoppable momentum, and they have done it once again. I think that Spinks on Overpass was probably the first map where, to me, the puzzle started making sense. He had a couple of maps where it was a little bit complicated. Suddenly he was slotted with ZywOo on A, and he was given that freedom, and oh, did he enjoy it. And that happened exactly in this game. Ridiculous statistics. 5 opening duels out of 6 that he took, 7 multi-kills, 24 kills, more than 115 ADR, and just the eye test. So aggressive in GamerLegion's face. He was by the fountain, he was by the entrance of the T-spawn, he was in the door, and the GamerLegion never really survived the first 20-30 seconds without fighting Spinks. But we can't allow ourselves to be surprised, because Spinks on Overpass lately has been absolutely fantastic. The past 3 months, he's played Overpass with Vitality 7 times, and his average rating is 1.49, by far the highest out of anyone. ZywOo's not even close to Spinks right now. He's thriving so well, especially, as you said, on the CT side. So proactive, so aggressive. More times we saw him down in towards T-spawn, 25 seconds into the round. He was everywhere on the map. His average rating on the CT side in those 7 maps, 1.66. He is dominating everyone right now on Overpass. And usually what can happen in finals like this is that we see the favorite trying not to lose, you know, trying not to make mistakes, trying to be clean in how they play. And I love that we saw Spinks just being in their faces. You know what? Let's take risks. Let's create that momentum that we have for our team. Let's talk about what was perhaps the breaking point in that first half. We've got 2 rounds we're going to be playing back-to-back, which, yeah, just kind of spelt the end for GamerLegion, unfortunately. Yeah, we're going to have a look at round 9 and round 10, and it starts out with a bit of back and forth right here. It's 6-2, and the game is by no means decided at this point, right? GamerLegion have a decent chance. Unfortunately, the square doesn't connect. We have a 2v2 right here. Atypical for ZywOo. Misses the shot, the 2v1, and we're about to see the worst clutch I've ever seen in my entire life. I'm not gonna lie. It's just a mess. It's the nerves, it's the states. I don't know what's going on. Neither of the two wants to win, but Apeks doesn't. Now, the thing I want you to notice right here is, of course, Vitality goes up 7-2, but if you stop the clip right here, take a look at the economy. Had Vitality lost that round, they would have been in a very dicey place economy-wise. GamerLegion could have had their way in, but then this round happened. Absolutely, we can roll the clip. This is a breaking point for GamerLegion here. You see the reaction from Vitality is very scripted. The good Molotov from Magisk, the flash coming in to help Dupreeh. He gets the kill. Wait for the second flash. That's Apeks' assist we have here. And even if Magisk falls, Dupreeh goes in once again on ZywOo's flash this time around. So there was such a layer in the defense. And when the scoreline is 8-2 then, and it's a full eco for GamerLegion, you almost feel like it's done. That was the one opportunity they had. Had they won that clutch, GamerLegion would have had a chance to make the game competitive, but they didn't. Well, we've had our say on round 10. So, Danny, what did you notice about that round over at the Mahone Zone? Yeah, so let me talk about some of the smaller details in this round. So the devs already broke it down, but I'm going to talk about it again. So first thing we want to pay attention to, in this B push, notice right here that as this B push comes in, Dupreeh's position here is key towards the pillar, because Dupreeh over here, playing behind the pillar, is one of the best ways to defend against a B push, because often when teams hit B, they throw flashes always on the left side, always towards that monster side. By playing behind the pillar, it allows them to play anti-flash. This is what allows them to find the first kill. That's why he doesn't get blinded at all. Now, the second thing is that after he gets that kill, Magisk also throws this Molotov. This Molotov is a great counter because what it does is it separates the push. Shui comes in alone here, and he's separated from the rest of his pack here. That ultimately sets up Apeks to throw this flash here that we mentioned earlier. These flashes, because of the combination of that Molotov, it allows Dupreeh to take a very isolated 1v1 fight, and it's all thanks to this Molotov right here. And it doesn't stop.
because ZywOo, he also throws another flash. And with this flash, this does two things. First thing, it allows Dupreeh to then peek off that flash to catch these players towards Monster, but as well it allows ZywOo to essentially take his spot to watch short, and they can cover both sides at the same time. It works out perfectly here. ZywOo finds one up to short, and then Dupreeh finds this player towards Monster, and then Apeks is here to clean it up. So ultimately, it's really the utility usage and just the positioning that Vitality had that made their B hold just so strong. I love to look at the finer details that Mahone managed to pull out in that particular round. And again, another number that we're looking at that unfortunately just doesn't favor GamerLegion in this one was the opening duels. It is not pretty for their opponents. We played 22 rounds, and GamerLegion only found an opening kill in 4 of those rounds, one of them being the clutch where they lost to Apeks. So 3 of the rounds they had an opportunity of converting that opening kill into a round, and it's just not enough. If you're playing Vitality on a stage like this, you're already the underdog. You're nowhere near as good as Vitality individually speaking, at least from what we've seen so far. So you need openings, you need favorable situations, and GamerLegion didn't have any whatsoever in this game. They absolutely did not. We have the crazy scenes as we can speak here in the arena. People are catching on fire, but someone who was definitely not on fire in this game was Ima for GamerLegion. Where is the superstar that we talked about? Where is the player that we hyped up so much? Rightfully so, with an absolutely superb performance up until this point. You talk about the opening duels. On the T side, he's usually involved in 30 to 35% of these. He's the one that's the can opener. He's the Akinder of that lineup, if you will. And I have to agree, he's been silenced in that first map. He never really get it going. At a couple of moments, maybe once with the AK, we had that like aesthetic little one tap towards CT spawn, but this was more cosmetic than it truly meant anything concrete. So Ima, unfortunately, hasn't really spread his wings in that final, and that's an issue for GamerLegion. Let's move on to talk about the next map that is going to be coming up in this grand final series. That is the pick of Vitality, and it is going to be Nuke. And Matthew, you preface this. This has not been a pretty map if you're the side of GamerLegion. Listen, you're looking at Vitality on a 10-map win streak on Nuke as well. The last time Vitality lost Nuke on LAN was against Heroic in the Blast Spring group. That was a long time ago. And it's one of the few maps where they have perfected their T side. And I know from talking to Apeks as well, this has been one of the deep key of their work. They've put in the T side of Overpass, the T side of Vertigo, and Nuke because they wanted to have that strong weapon. And now they're punishing. GamerLegion have done a good job at avoiding Nuke for a while, but there is nowhere to hide. You're in the grand final, you're going to get punished. There is nowhere to hide right now. Vitality are looking very, very strong on Nuke. As you said, they seem to win it every single time they play it. There's one player I want to put under the spotlight right here, and it's not to ruin the good mood once more, but Kios, we spoke about him coming into this game. He had a very rough showing against Heroic, and he had a very rough showing on the first map. He is needed. He's missing. He's missing, right? He's needed. If GamerLegion wants to stand a chance of making Nuke competitive, perhaps pushing in a third map, every single player, and that's Kios as well, will need to step it up. I just did some calculations and some quick math. Against Heroic and Vitality in the semi-final and the final, he's played 103 rounds of Counter-Strike, and in those rounds he only had 37 kills in total. That is way, way, way below what's acceptable at this stage. He needs to step it up right now, right here, otherwise it's over for GamerLegion. Well, we've been talking a lot about the individuals, and you guys can get involved in the action at home. If you're watching over on Blast.tv, make sure to get your votes in during the next map for the potential MVP of the Blast TV Paris Major. You've got your pick of either Ima or ZywOo. Obviously, ZywOo certainly shining bright on that first map. Matthew, for your money, who are you putting under the spotlight coming into Nuke? Well, I can choose so many different flavors. That's what is so beautiful. Listen, usually I would tell you one of the problems could be Apeks. I'd say he's been a liability at times. He's taken him quite a while to figure out how he wanted to play the CT side towards the outside. He was a little bit too committed. He was a bit too selfless, looking for too much information. But this was a very good Apeks we've just witnessed on Overpass. 23 kills, 1.52 rating. So if Apeks isn't a solution for GamerLegion, then who are they going to abuse? Are you going to go to Magisk ramp? Are you going to go inside when Spinks is playing the way he is? Are you going to try and kill ZywOo's AWP waiting for you? I don't know where the solution comes from. They're going to start on the CT side, and that is the one silver lining I find. I can tell you where it's not coming from. The worst rated player for GamerLegion on this map is Acor, the AWP player, and that's a no-no, especially when you consider that ZywOo is the highest rated player for Vitality. So the AWP duel in the game is already decided before we even get into it. Well, we are potentially one map away from making history. Nuke going down, Vitality's pick coming into things. We're going to see how it goes down in potentially the last map of this grand final. समय आ चुका है यहाँ पे GamerLegion को step up करने के लिए. They're going to be under a lot of pressure
स्पॉटलाइट के ऊपर रहने वाली ये टीम एक मैप जरूर हार चुकी है। अनिल ने डेस्क में ब्रेक डाउन किया है कि यहाँ पे बहुत क्रूशल रहने वाला है सारे खिलाड़ियों को पॉप ऑफ होने के लिए। बट दूसरी ओर वाइटैलिटी they're going to be swinging in strong, अपने मैप पिक के ऊपर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। It is going to be nuke and they will look forward to nuking GamerLegion out and taking away the trophy. टाइम आ चुका है माम्बा, क्या आप तैयार हैं? Of course, I'm ready, so is the audience. Ladies and gentlemen, grand final map number 2, Vitality terrace side पे start करेंगी। GamerLegion on the CD side, nuke के ऊपर एक सेविंग ग्रेस में मान दो उनके लिए होगी, लेकिन smokes one flash to work with it. Eva पहला किल निकाले, Spinks जैसी दरवाजा खोला उन्होंने। Oh my god, Dupreeh falls down. ये गलती अफोर्ड नहीं कर सकती Vitality. They're all pushing towards CT. Magisk Isaac को गिरा देंगे. He also gets Kios. 4v3 जहाँ पे एक फर्स्ट फ्रैग निकला था, but look at Shui's push. साइलोस के एक खिलाड़ी के देख चुके हैं, but he misses his shot, whips big time. At that point, I don't even know what to say because जिस तरीके से Apeks ने घूम के किल निकाला बहुत क्रूशल था, लेकिन Dupreeh उनको हेडशॉट पड़ जाएगा। मेजिस्क ऊपर से बैकअप देने की कोशिश, लेकिन नीचे से ड्यूअलीज ऊपर भी चढ़ जाएंगे। रीलोड नहीं, लेकिन नाइफ करने की कोशिश करी थी, रीलोड नहीं किया। ईमान ने सीधा सीधा ऊपर चढ़ गया, उनको पता था गोलियां नहीं होने वाली उतनी उनके पास। 10 एक्स्ट्रा गोली का भरपूर फायदा उठाया ईमान ने, काफी क्रूशल किल निकाला। लेकिन अब Apeks एक निकालेंगे, पूरा समय लिया था उन्होंने, 44 सेकंड घड़ी के ऊपर 1 वर्सेस 1, ZywOo वर्सेस एक और दोनों ऑप्स जो अपनी टीम के लिए चलाते हैं। अपनी टीम के स्नाइपर्स अब लड़ेंगे पिस्टल राउंड में, एक तरफ P250 एक तरफ USP, दोनों वेपन की खासियत वन टैप हेडशॉट मार सकते, लेकिन एक और विल कम ऑन टॉप ऑफ दिस वन। Again, GamerLegion देखिए पिछले बार भी अपने पिस्टल राउंड को जीतते हुए नजर आए in the first map in the first round. सेकेंड मैप के फर्स्ट राउंड पे भी जीतते हुए नजर आए, बट इट्स ऑलवेज द सेकेंड राउंड। इस बार एटलीस्ट वाइटैलिटी को प्लान करने के लिए मौका नहीं दिया GamerLegion ने। They will be happy about it, but these quick pushes in fights coming through. ईमा पिछले गेम में उनको होल्ड ऑफ किया जा रहा था, उनको स्टॉप कर रहे थे। इस बार ईमा इज जस्ट गोइंग अग्रेसिव राइट इन द फेसेस ऑफ दोज प्लेयर्स एंड फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनको पता है ही हैज टू स्टेप अप फॉर हिज टीम, दिस इज द डू और डाई मैप। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमने देखा वाइटैलिटी इन डीगल्स का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, शानदार तरीके से डिस्टेंस क्लोजिंग करते हैं। Apeks might just get taken down over there because कमिट करने की कोशिश, ईमा पहला पिक निकालते हुए डीगल उठाने की कोशिश करी ZywOo ने, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। ईमा यहाँ पे रुकने का नाम नहीं लेंगे, 2 किल्स निकाले इनको में भरपूर फायदा उठाते हुए। जिसके ऊपर भी निकाल सकते हैं, डैमेज कर रहे हैं, बट इज बेयरली टेकिंग एनी ऑफ इट। आखिरी 2 खिलाड़ी Magisk एंड Spinks जरूर दूसरी ओर से अंदर जा चुके थे, सो Magisk यहाँ पे रेड की तरफ अकेले लड़ते हुए नजर आएंगे। एंड लुक एट ईमा क्रीप अप, कोई आइडिया नहीं है Magisk को इसके बारे में, निकालेंगे किल, बट फाइनली Spinks बाहर आएंगे, पिक्स अप अ ट्रेड, वेपन रिकवर करने के लिए मौका मिल सकता था इफ नॉट फॉर दिस लेट पुश जो उन्होंने किया अभी। नो वेपन्स, नथिंग, एंड GamerLegion गुड स्टार्ट सेकेंड राउंड भी यहाँ पे लेते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, दूसरा राउंड लेते हुए नजर जरूर आएंगे, लेकिन वाइटैलिटी किस तरीके से यहाँ पे गन्स बाय करेंगी वो देखना जरूर बनता है। यूटिलिटी लेना डिसाइड किया उन्होंने। GamerLegion के फैंस उनको चीयर करते हुए GL GL GL, यूटिलिटी होने वाली अवेलेबल, वेपन्स भी काफी अच्छे हैं वाइटैलिटी के पास, बेहतरीन मौका है राउंड निकालने का। लेकिन जैसे ही स्मोक जाएगा ऊपर एग्जीक्यूट करने की कोशिश, पहला किल क्या निकाल पाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आइजैक बेहतरीन पोजीशन में, क्या दूसरा निकालेंगे, स्प्लिट आउट, ये नहीं, Spinks and Magisk making the magic happen, अब ZywOo और Kios 2 प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ZywOo फ्लैंक गार्ड करते हुए फ्लैश एंड डैश स्ट्रेटजी इनकी GamerLegion को ऑफ गार्ड पकड़ा, वाइटैलिटी ट्रेड्स निकालते हुए 1 किल का डिफरेंस था सिर्फ वहां पे वाइटैलिटी का रश रोकने में। लेकिन सुई अब ऊपर चढ़ेंगे जरूर, क्या स्पॉट हो पाएंगे, पेंस के अंदर बैठे हैं अभी भी। ओह माय गुडनेस, इंतजार करते कोई रिएक्ट करेगा, किसी एक प्लेयर ने चिल्ला दिया, सॉरी एक ऑडियंस मेंबर ने चिल्ला दिया और उन्होंने सीधा बाहर निकलने का डिसाइड किया। Good execution coming in from Vitality. They bursted right in.
better trades coming through, positions hold कर रहे थे, making sure जब flanks आते हैं उनको भी punish किया जाए, and GamerLegion will lose their first. But again, opponent की तरफ एक full buy था, जिसके वजह से it was kind of bound to happen. थोड़ा मुश्किल हो सकता था, but finally इनके पास भी equal weaponry आ चुका है. M4 all across. Oh, ईमा अपने teammate के साथ M4 A1A से M4 का exchange करते हुए नजर आएंगे अभी के लिए. Util actually भरपूर Vitality के पास रहने वाले. That's something GamerLegion को ध्यान रखना पड़ेगा. सूर्य को डैमेज जरूर पड़ा है वहाँ पे. स्पिंग्स भरपूर कोशिश कर रहे हैं सामने प्लेयर्स को पनिश करने के लिए, लेकिन ईमा 5-7 लेके बूस्ट हो चुके हैं वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन पोजीशन में. He's been set up for success रैंप के ऊपर, लेकिन नीचे की तरफ सूही इंतज़ार करेंगे बी साइड पे. एपेक्स भी अवेलेबल है वहाँ पे टेरिस साइड की तरफ से, लेकिन काफ़ी डिफ़ॉल्ट इश सेटअप है इनका. फोर्स नहीं करना चाहते. इशू यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है अभी भी टेररिस्ट पास, लेकिन ईमा इज इन अ परफेक्ट पोजीशन राइट नाउ. कियोस अगर लड़ते हैं ईमा बहुत ज़्यादा राउंड निकाल पाएंगे अपनी टीम के लिए. यहाँ पहला किल, दूसरा किल भी निकालेंगे, क्या तीसरा निकाल पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल. जो he gets it. What a man lad. ईमा ऊपर बूस्ट हुए थे, 5-7 लेके 3 किल निकाला, चौथा भी निकाल लेंगे. He's going to get the ace. Apeks भी साइड पे थे. इन्फॉर्मेशन की जरूरत भी, लेकिन मुझे नहीं लगता एपेक्स यहाँ पे कुछ कर पाएंगे. तो ओपन डोर जहाँ पे भी उनको आगे जाना है, he has to give Q and he knows वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. he is trying to find अगर कोई कुछ अलग करना चाहता है, बैक टनल से जाएंगे. he is looking for a different approach towards the site, but अगर यहाँ से भी बाहर जाना है, he has to open the door. टाइम नहीं है, so he will look forward to saving the weapon. रिकवर करने के लिए कोई मौका नहीं रहेगा. जी हाँ, ईमा के पास एस करने के लिए मौका मिल सकता था, but Ima is more than happy with what he got. Oh, Shue trying to spam, gets it, and immediately उनको निकाल देंगे. That is going to be no weapons being saved for Vitality. And मैं यही बात कर रहा था, दोनों टीम्स अपने बेस्ट मैप्स को काउंटर करने के लिए प्रिपरेशन करके जरूर आई है. And GamerLegion, they are putting Vitality in trouble. 5-7 इतना पोटेंट वेपन, इतना पोटेंट हथियार. अनिमा ने 4 किल निकाले रैप पे वो पोजीशन से. GamerLegion मास्टर क्लास दिखाते हुए फिलहाल. Zonic क्या कहेंगे अपनी टीम को, अब ये देखना जरूर बनता है. 1-3 का स्कोर लाइन. यूटिलिटी उठाइए, फोर्स करने का डिसाइड किया है यहाँ पे Vitality ने. लेकिन एक और बार कैसे हो गए, क्या पिक निकाल पाएंगे? जी नहीं, थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड कर दिया वहाँ पे, थोड़ा सा ज़्यादा ईगर हो गए. एंड ही विल पे द प्राइस फॉर इट. जरूरत नहीं था. एंड नाउ लुक एट दिस, दे आर जस्ट मेकिंग यूज ऑफ दैट एडवांटेज, नंबर एडवांटेज, और फोर्स करते हुए नजर आ रहे हैं. 5v3 सिचुएशन. आई थिंक साउंड सुन चुके थे जैसे खिलाड़ी क्रॉस ओवर कर रहे थे. वेंस की तरफ से ध्यान रख रहे हैं अभी के लिए. Tech9 डूइंग द डैमेज, लुकिंग फॉर 1, लुकिंग फॉर 2. बट आइजैक टाइमिंग पे पकड़ेंगे एपेक्स को, बट पोजीशन पता चल चुका है. देयर इज नो वे टू रन राइट नाउ. प्लान जरूर कर लेंगे. वेंस की तरफ से बाहर निकलना चाहते हैं, बट देयर इज आल्सो स्पिंग्स होल्डिंग दैट. बाहर निकलेंगे एंड विल गेट पनिश्ड. The main opening was squeaky, जहाँ पे उन्होंने एडवांटेज दे दिया. हेवन से यहाँ पे जरूर आगे बढ़ रहे एक और अपने M4A1S को बचाने के लिए, but this round is gone. एक और यहाँ पे सेव करेंगे. एंड ये जो फोर्स पाया था, it worked out for them. Vitality बहुत क्रूशल राउंड हारे थे पिछली बार, लेकिन अब पनिश करेंगे वो सीटीज को. राउंड जाते हुए Vitality और 2-3 का स्कोर लाइन पैसा शाबी होने वाली. द सीरीज वन आउट द बेस्ट ऑफ बाइज, बट अब देखना ये पड़ेगा वापस क्या गोल खिला दे, बिकॉज जो ट्रिक्स थी वो इस्तेमाल कर रहे हैं धीरे धीरे. 1v1 फाइट्स नहीं जीत पा रहे, टीम फाइट्स नहीं जीत पा रहे, बट जब भी मौका मिल रहा है उनको आउटस्मार्ट कर रहे हैं. वो देखना पड़ेगा यहाँ पे. यूटिल को पुश, यूटिल को फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं. देयर अंडरस्टैंडिंग कि कहीं ना कहीं GamerLegion ओवर एक्सटेंड करती हुई नजर आ सकती है. एंड फाइनली देयर ओवर एक्सटेंशन हैज पेड a hefty price on their account. इको करना पड़ेगा. एक और ने जो हीरो सेव किया था अभी के लिए, क्या वो हीरो वेपन बनता हुआ नजर आएगा? देखना जरूर पड़ेगा. बहुत तेजी से रूफ चढ़ के एंट्री ले लेंगे, बट देयर इज गोइंग टू बी क्विक ट्रेड्स कमिंग थ्रू. बट Kios as he falls, नंबर एडवांटेज वापस दे देंगे Vitality को. क्विक स्ट्राइक फ्रॉम आइजैक, विद Apeks एडवांटेज उठाते हुए हेडशॉट कनेक्ट करेंगे उस AK के साथ.
क्विक स्विंग फ्रॉम हट, क्या कुछ निकाल पाएंगे? लग नहीं रहा है। एक और के पास अकेले खिलाड़ी थे जिनके पास वेपन था। ईमा ट्राइंग टू डू व्हाटएवर ही कैन, ZywOo के साथ किल निकाला था वहां पे, बट दैट्स ओनली गोइंग टू बी वन। वाइटैलिटी माम्बा यहाँ पे इक्वलाइज करते हुए नजर आएंगे। They're already calling out chaos, even though support उनको मिल रहा था कल के दिन में। आज it has to go for vitality. That's what the fans are looking forward to, Mamba. बिल्कुल सही कहा। That is exactly what the fans want, and that is exactly what all the Frenchmen want. लेकिन vitality ये राउंड क्रूशियल होगा उनके लिए, क्योंकि सामने वाली टीम के पास अच्छा पैसा है। एक और ऑप करने वाले हैं। लास्ट मैच में उन्होंने दूसरा स्मोक आके उनका विजन ब्लॉक कर देगा। डुप्री क्या यहाँ पे फाइट लेंगे वो? जी फाइट जरूर लेंगे, लेकिन एक और विल नॉट मिस दैट शॉट। लास्ट मैप में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, लेकिन एक और बार पिक करने की कोशिश। सूही उनको पनिश करेंगे। एपेक्स को दो प्लेयर्स का जो डिसएडवांटेज है उसको काउंटर करना बहुत मुश्किल होने वाला है, वो भी न्यूक में टेररिस्ट साइड पे। आई थिंक GamerLegion ये राउंड ऑलमोस्ट जीत चुकी है, बस गलतियां अवॉइड करनी होगी यहाँ पे। नाउ ZywOo एंड स्पिंक्स, इन दोनों प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। जो दोनों प्लेयर्स आगे से लीड कर रहे हैं अपनी टीम को। द प्रोडिगल सन ऑफ काउंटर स्ट्राइक ZywOo क्या यहाँ पे जादू कर पाएंगे? 5v3 सिचुएशन, एंट्री हर जगह से डिनाई किया जा रहा है। द यूटिल इज टू गुड राइट नाउ, बट ज्यादा कुछ बचने नहीं वाला है अगर ऐसे डंप करते हुए नजर आए। दूसरी ओर वाइटैलिटी ZywOo के पास देखिए इतने सारे यूटिल्स है, बट chaos विद अ पुश गेट्स टू। ZywOo जरूर उसका ट्रेड निकालेंगे, बट ही बिकम्स द ओनली पर्सन नाउ ट्राइंग टू रन। ईमा इंतजार कर रहे थे वेंट के अंदर एंड पुट्स हिम डाउन। लीड नहीं मिलेगा यहाँ पे वाइटैलिटी को, डिनाई देम दैट फ्रॉम दैट हैपनिंग। बट ये ओपनिंग, ये फर्स्ट फ्लैग एक और की तरफ से क्या ही शानदार था। पहले उन्होंने स्मोक किट को गैप ढूंढा, बट आफ्टर दैट गॉट ब्लॉक्ड। स्विंग किया साइलोस के ऊपर, एक खिलाड़ी दिख गए, एंड देन शुए एज वेल फाइंडिंग वन। Dupreeh is like wait what, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो, जो हुआ हो गया। Yeah, that was very weird. That was very uncharacteristic. I'm not sure क्या डिस्कशन था वहाँ पे, लेकिन Dupreeh was looking very defensive उनकी बॉडी लैंग्वेज से। And Apeks, of course, उनको पता कितना ज़्यादा प्रेशर होने वाला है उनके ऊपर, लेकिन क्रैक्स नज़र आ रहे थे मुझे। जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज देखने मिली थी, वो देखने नहीं मिलता आपको यूजुअली। या फिर शायद बता रहे थे कि मैंने पीक नहीं लिया। I wasn't taking the fight. He just got the better of me. एक और, लेकिन अब ऑप करने वाले हेवन से। बहुत मुश्किल एंगल होगा ये, लेकिन आइजैक, ओह माय गुडनेस, पूरी तरीके से ब्लाइंड होने वाले। Dupreeh अंदर जाएंगे, पहला किल निकाला, दूसरा निकालने की जरूरत, बदले की आग में अंदर जाएंगे, और अगर ये किल निकालते बहुत क्रूशियल होगा उनके लिए। लेकिन नहीं, Dupreeh is wreaking havoc right now। चौथा किल भी निकाल सकते थे वहां पे, लेकिन गन स्विच करेंगे तुरंत। गोलियां खत्म हो गई थी। ईमा इन अ क्रूशियल स्पॉट, गेट्स वन, नीड्स टू फाइंड द सेकंड एज वेल। स्मोक है उनके पास, जी हाँ बिल्कुल स्मोक अवेलेबल है, लेकिन ये पुश करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ पुश करेंगे जरूर, लेकिन बहुत डैमेज दिया। Dupreeh needs to stay alive, but Eva brings it back home. हर एक खिलाड़ी GamerLegion की तरफ से जब चाहिए था इन सच अ क्रूशियल मैप, दे स्टेपिंग अप, गिविंग इट देयर ऑल। ईमा को पिछले गेम में शट डाउन किया गया था, वो एक किल निकाल रहे थे, तुरंत उनके ऊपर ट्रेड कर रहे थे, बिकॉज ऑफ विच जैसे हम ZywOo के बारे में एक्सप्रेस कर रहे थे, जैसे एनालिस्ट ने भी बताया हाउ एवरीबडी नोज व्हाट ZywOo कैन डिलीवर, वैसे ईमा के ऊपर भी उतना ही एक्सपेक्टेशन था, बट दे इमीडिएटली पुट हिम डाउन, दे हैड दोस ट्रेड्स ऑन हिम। बट इस बार ईमा बोल चुके कि दे आर नॉट गोइंग टू गेट द बेटर आउट ऑफ मी, यहाँ पे मैं जरूर उनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, एंड इट इज वर्किंग। सेम पोजीशन एंड इट्स स्टिल एक और विनिंग। या स्ट्रगल जरूर करिए वाइटैलिटी, बट लेट्स नॉट फॉरगेट टेररिस्ट साइड पे है फिलहाल, और सीटी किस तरीके से खेली थी वाइटैलिटी ओ पास में, ये नहीं भूल सकते आप। आई स्टिल फील इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ पोजीशंस, बट कंफर्टेबल है वाइटैलिटी। लेकिन GamerLegion की तारीफ करना चाहूंगा मैं, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम। जिस तरीके का मार पड़ा था उनको आखिरी मैप में, उसके बाद इस तरीके से खेलना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा शानदार है। एपेक्स देखिए यहाँ पे डीगल उठाने के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने कम से कम 15 सेकंड लगाए होंगे वो डीगल उठाने में, लेकिन ZywOo को पनिश कर दिया जाएगा वहाँ पे। 4v3 इंतजार कर रहे हैं वापस। ब्रिलियंट पोजीशनिंग शुए के पास, बट दे स्मार्ट, दे डोंट इमीडिएटली स्विंग, फिर डैमेज करेंगे शुए को, फोर्स ऑफ करेंगे उस एंगल से, बट AWP आ चुका है।
एक और is worried, उनके पास एक double triple swing आ सकता है. He backs off, gives them ramp control. Playing behind the reactor. देख चुके हैं and he gets 2 in the line of fire. तीसरे के लिए भी जाएंगे and Shuhei delivers. That's a 3K for him. Making it seem so easy. Look at those stats, Mamba. 175 ADR, 16 kills. And first half अभी तक खत्म नहीं हुआ है. And that was a Nima. सिर्फ आधा खत्म हुआ है. Yeah. If he keeps going like this, वो एक हाफ में 30 kills से ज़्यादा मार देंगे, जो कभी देखने नहीं मिलता आपको usually. मेरी जिंदगी में मेरे साथ एक बार हुआ था सिर्फ, only one time. जब मैंने एक हाफ में 30 strikes मारे थे, which is unheard of, right? But if he can do it on a major final, that would be incredible. But of course, it's a tough ask. लेकिन एक और, oh my goodness, over commit करे थे वहाँ पे, लेकिन सूही एक और बार deliver करेंगे अपनी टीम को. Oh, what? Apeks. Oh my goodness. शानदार kill mid air. 5 HP है उनके पास, अपने आप को पेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन आइजैक रैम्प होल्ड करने वाले. अब C4 लेके कहाँ जाएंगे ये जानना जरूरी है, क्योंकि C4 I still believe बेस की तरफ पड़ा हुआ है, उन्होंने उठाया नहीं है. 1 मिनट बाकी है. काफी ज्यादा स्लो खेल रही है. I think अभी के लिए GamerLegion का रोटेशन सुनना चाहते हैं कि इतना जो chaos हुआ था, इतने players जो गिरे, if they will give them any noise. Roof की तरफ Apeks रहने वाले 5 HP. He will recover the C4 for the team. कोई आइडिया नहीं मिला अभी तक. GamerLegion have cut everything. Full radio silence है GamerLegion की तरफ से. This can be a great crossover position जो check करके यहाँ पे pick निकाल सकते हैं. He has a brilliant angle chaos, but लोग वहाँ से नहीं आ रहे हैं, वो हट के तरफ से जा रहे हैं. So no challenge here for chaos, here no advantage. Yeah, 20 seconds on the clock. यहाँ पे smoke डाल देंगे. chaos इन्फॉर्मेशन रिले करेंगे अपनी टीम को जितनी भी ज़रूरत पड़ने वाली, लेकिन स्पिंग्स की पोजीशन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है. आइजैक गोइंग लॉन्ग वे अराउंड, नहीं दिख रही उनके हाथ में थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में, लेकिन कियोस उनको एक ओपनिंग निकालना होगा. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है. फर्क नहीं पड़ेगा. एपेक्स ही स्टेपिंग अप, मैन इज स्टेपिंग अप. जो प्राइम एपेक्स, पुराने एपेक्स दिखाई दे रहे थे, उसको जगाया वापस. एंट्री फ्रैगर हुआ करते थे बिफोर ही वाज एन IGL, और जिस तरीके के एंट्री फ्रैगर थे, ही वाज अ जगरनॉट. उनके खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल होता था, और वही चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं वापस एपेक्स. 5 HP and he denies the opponent anything from the mid-air shot. देखना जरूर बनता है उस शॉट को. We're going to have a look at it right now. उससे पहले ZywOo and Apeks of initial frags. That replay. Okay. ये क्या होल्ड करे यहाँ पे? Oh, they framed it. कल का है I think ये फोटो, या आज का ही. इतना जल्दी फ्रेम करके, like the golden hornets will be remembered. Absolutely. देखिए ये चांस. टाइम आउट जरूर है यहाँ पे. Zonic will discuss with his teammates. तो फाइनली राउंड शुरू हो चुका है. एंड जी हाँ, वैसे आगे बढ़ेंगे. वे लुक फॉरवर्ड टू द फर्स्ट फ्राग. कहाँ पे मिलेगा, क्या इस बार अर्ली स्क्रिमिशेस कहीं पे देखने के लिए मौका मिलेगा? नहीं लग रहा है. क्रॉसओवर कर लेंगे आसानी से सीक्रेट की तरफ. So much of util being dropped. मेन की तरफ से 2 खिलाड़ी पुश कर रहे हैं, एक और पिक्स ऑफ. फ्लैश काम नहीं आया. स्प्रे कर रहे स्पिंग्स. ही ट्रेड्स ऑन ईमा विदाउट फाइंडिंग एनीथिंग इन द राउंड. चले जाएंगे हेवन की तरफ चैलेंज करने के लिए. क्या ही बेहतरीन तरीके से ZywOo पोजीशन कर चुके हैं अपने आप को. एपेक्स को भी गराज की तरफ से बुला चुके हैं, सो ही नोज रीपीक नहीं कर सकता है, उसकी वजह से गिव्स अवे हेवन कंट्रोल एंड वहां से रीपोजिशन कर चुके हैं GamerLegion के खिलाड़ी. वेट, व्हाट?
ZywOo अगर थोड़ा आगे आते, he's barely surviving ZywOo, but Apeks with a trade. Akor picks up on ZywOo. He's looking for a second, but Apeks from the garage. Oh, what is this back and forth game? 2v1 पे आ जाते हैं हम. Spings has got one for the round. Clutch करना पड़ेगा, but Kios उनको मौका ही नहीं देंगे. GamerLegion from the opening flag denying A main push. उसके बाद ZywOo का जो push आया था, शुए का जो positioning, even though that did not work out, उसके बाद Kios और एक और brilliant play मामा अभी तक जो देखने के लिए मौका मिल रहा है. GamerLegion मुश्किल कर रही है Vitality को rounds लेने में. जी हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रही है, नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन याद रखिएगा गेमरलीजन की शुरुआत बेहतरीन थी. सीटी साइड पे शुरू किया न्यूक पे, जो प्रीडोमिनेटली बहुत ज़्यादा सीटी साइड मैप हुआ करता था. लेकिन अब कियोस काफ़ी क्रूशियल पोजीशन में. मे बी माइजस गेट रश डाउन, किल निकालने की कोशिश, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा. एक ही मिल पाएगा उनको, लेकिन सुई विद स्प्रे डाउन, ही नीड्स टू स्टे अलाइव. तीसरा नहीं निकाल पाएंगे. स्पिंग्स तुरंत ट्रेड करेंगे उनको. 2 वर्सेस 3. स्पिंग्स ZywOo वर्सेस गेमरलीजन. ये यही दो प्लेयर है जो आप एक्सपेक्ट करेंगे ऐसा राउंड वापस ला सकते हैं अपनी टीम के लिए. लेकिन ZywOo पिक नहीं करेंगे यहाँ पे. एक्सपेक्ट कर रहे एक और प्लेयर को पिक करने का, लेकिन क्या ZywOo क्लोज एंगल चेक करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला. जी नहीं, चेक नहीं करेंगे. एंड ही विल पे द प्राइस फॉर इट. ईमा नजदीक खेल रहे हैं एंड प्री फायर किया वहां पे. वाइटैलिटी 4-8 4 राउंड बीजे, लेकिन गेमरलीजन शानदार तरीके से यहाँ पे डोमिनेट करिए सामने वाली टीम को. बेहतरीन काउंटर स्ट्राइक का प्रदर्शन. डबल ऑप सेटअप काम कर रहा है. 2 राउंड बैक टू बैक डबल ऑप सेटअप खेला है यहाँ पे गेमरलीजन एंड इट्स वर्किंग आउट. एंड हमने हर वक्त कभी भी डबल ऑप सेटअप देखा है. इट मेक्स इट और ब्रेक्स इट. एंड हर एक टीम यहाँ पे डबल ऑप सेटअप को काम करवाती है. अभी तक आई है फ्रॉम द क्वार्टर फाइनल स्टेज इन द चैंपियंस स्टेज. 4 राउंड का डिफरेंस. वाइटैलिटी के पास वेपनरी नहीं रहने वाले. दे हैव अपग्रेडेड. डीगल्स पे आ चुके हैं. ओह माय गॉड, एक और रिपोजिशन करके स्कोप इन करने ही वाले थे, बट एक मुफ्त का ऑप दे देंगे. ईमा वांट्स दैट बैक. यहाँ पे आगे जा रहे हैं, गराज की तरफ क्रॉस ओवर कर चुके हैं. वेट एक्चुअली ओके, वी गेट्स बैक. मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं थोड़ा आगे और जाके रेड की तरफ जाके चेक करने वाले, बट दिस फ्री ऑप उसके साथ पूरी टीम C4 लेके बी की तरफ बढ़ रही है. मम्बा ZywOo के पास जो हीरो ऑप है उसका भरपूर फायदा उठाएंगे वो. देखिए किस तरीके से कैवलरी उनको लेके जा रही है. ऐसा नहीं कि वो अकेलौते जा रहे हैं, उनके साथ साथ 2 और प्लेयर्स हैं जो लेके जा रहे हैं उनको. पॉइंट होल्ड कर सकते हैं, शायद कोई आएगा, लेकिन एपेक्स उनका किल बहुत क्रूशियल होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि अगर ईमा ये किल निकाल पाते हैं तो फिर राउंड गारंटी हो जाएगा प्रैक्टिकली. लेकिन कमिंग अप. ओह नो, Dupreeh not being able to get that kill. ये बहुत बुरा हुआ उनके साथ. एपेक्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, he will get taken down. ईमा की पोजीशनिंग शानदार थी. गेमरलीजन doing the unthinkable right. पहले मैप के बाद लगा नहीं था कि इतना कॉन्फिडेंस होगा उनके पास, लेकिन अब जिस तरीके से खेले ऑलमोस्ट ऐसे पहला मैप खेला ही नहीं इन्होंने. Yep. A fresh team. टनल से पुश आ रहा है. They're guarding it. ZywOo with the op with the first contact, looking for the second. काम नहीं किया Deagle. Ema will be good for it. ZywOo 1v3, a monster clutch. He's found the first, looking for the second. Close up the kiosk. It doesn't work out. They will get the defuse through. GamerLegion still keep their victories up. Rounds अभी भी लेते हुए नजर आएंगे. They will get 9th on the board. क्या ही शानदार तरीके से खेलने के लिए ट्राई किए. Vitality get into the side, tried to go for a plan, but it still did not work out. But दूसरी ओर ZywOo, अगर वो क्लोज अप शॉट लग जाता, it could have been a clutchable round. एक छोटी अपॉर्चुनिटी जब भी मिलती है ZywOo को मैक्सिमाइज करते हैं. यही होता है स्किल, ये ग्रेटनेस होती है उस प्लेयर की, और ये छोटी छोटी चीज़ें एक प्लेयर को दिग्गज प्लेयर बनाता है. लेकिन अब वाइटैलिटी के ऊपर प्रेशर, पूरा क्राउड उनको चीयर कर रहा है. द गोल्डन हॉर्नेट्स चीयरिंग फॉर देम. लेकिन सर्वर के अंदर तो प्लेयर्स को ही खेलना. Dupreeh फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं. एपेक्स भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं यहाँ पे. जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था फर्स्ट मैप जीतने के बाद, वो आउटकम नहीं नजर आ रहा है. आई थिंक उसी की वजह से ये चिंता नजर आ रही है वाइटैलिटी की तरफ से. विल हैव अ प्रॉपर बाय. अभी खेलने के लिए यूटिलिटी भी भरपूर रहने वाले हैं.
डबल ऑप सेटअप नहीं रहने वाला है इस बार, बट यूटिल GamerLegion के पास भी रहने वाला है. They deny any kind of early aggression coming in from Squeaky, but खुद एक्सपेक्ट कर रहे कि अगर पुश आ जाता है पनिश करने के लिए with the op. सुई डैमेज देंगे, बहुत ज़्यादा डैमेज देंगे Dupreeh and ZywOo, और ये डिफरेंस हो सकता है, ये वन टैप हेडशॉट होगा कि नहीं, इनका जो शॉट होता है वो दैट इज ऑल यू नीड. काफ़ी अच्छा इस्तेमाल ग्रेनेड का, एंड मोलोटॉव डाला है वहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, लेकिन सीटी साइड प्रोएक्टिवली इंफॉर्मेशन ले. ईमा वेंट के अंदर, ओ माय गुडनेस, स्पॉट हो जाएंगे ज़रूर यहाँ पे. दूसरा प्लेयर दिखा था, उन्होंने किल निकाला, अब वापस हटेंगे, नहीं हटना चाहते. He wants to fight this, he wants to keep fighting this, gets a third as well. What in the world is going on, Ema? That shouldn't happen. जिस तरीके से यहाँ पे किल्स निकाल के जा रही है प्लेयर, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन स्टेपिंग अप, जब भी जरूरत पड़ रही है उनकी टीम को, हमेशा स्टेप अप कर रहे हैं. Look at the way left and right jiggle करते हुए हर एक खिलाड़ी को पनिश करते हुए. That third shouldn't have been the case. उनके मुंह के सामने जाके वो मॉली जो है पिच होके गिरा था, बट ही स्टिल एबल टू कन्वर्ट. ये बता रहा है कि क्या ही शानदार तरीके से GamerLegion खेल रहे हैं. The death stare लिटरली जो ईमा करते हुए नजर आ रहे थे, that's what we are seeing. जो वहाँ पे खिलाड़ी गिरे हैं उनके सामने, it was literal death stare ईमा जो करके दिखा रहे थे. 3 insane frags, जिसके वजह से GamerLegion उनके पास 10 राउंड्स उनके तरफ रहने वाला है. Incredible stuff, लेकिन ईमा, मुझे लगता है ऑफर्स की बारिश होने वाली उनके ऊपर इस मेजर के बाद. सारे के सारे ऑर्ग्स उनको लेना पसंद करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये समझना होगा कि इस तरह का काउंटर स्ट्राइक खेलना आसान नहीं होता है. No. इसके लिए आपको ग्राइंड करना पड़ता है. ये कोई भी राशि पैसे की ये खरीद नहीं सकती है. आखिरी राउंड, फुल इन कंट्रोल, फुल इन यूटिल GamerLegion. ट्राई जरूर करेंगे, AKs रहने वाले हैं. They do have 4 flashes. साइलो के ऊपर चढ़ नहीं पा रहे वो, या he's just slipping off. पैर फिसल गया उनका, और कुछ नहीं था. समझ रहे हैं आप? काउंटर स्ट्राइक में पैर फिसल गया. इतने प्रेशर में होने ही वाला है. कौन सा गाना था वो? His knees are weak, his knees weak, arms are heavy. वही हो रहा है उनके साथ अभी. थोड़ा अग्रेशन को पनिश किया गया GamerLegion की तरफ से. They've lost Isaac. एक और with the op. रेडियो डिनाई कर देंगे मॉली से. अगर इससे आगे जाना पड़ेगा, they have to put down a smoke और jump through it with a flash. बहुत तेजी से कंट्रोल लेना पड़ेगा. They do nothing. इंतजार करेंगे मॉली जाने के लिए, उसके बाद रैंप पुश करना चाहते हैं. फ्लैश आएगा, शुए does not go for a peek. All 5 players माम्बा rushing B के तरफ. डोर ओपन हो जाएगा, बट उसी डोर के ऊपर स्मोक आएगा. Another door also on the other end gets opened. विंडो के तरफ से अगर कोई पुश आता है उसको चेक करते हुए अभी भी देख रहे हैं. शुए finds the first, back to a 4v4 situation, but ZywOo कियोस को निकाल लेंगे. रैंप के तरफ से शुए, ईमा भी डाउन होते हुए नजर आएंगे. It's only going to be एक और spree of kills जाता हुआ, एंड आखिरी राउंड जो बहुत क्रूशल था. They will look forward to getting a good score. 10-5 का स्कोर लाइन is still doable coming through. इतना बड़ा लीड नहीं रहने वाला है GamerLegion के पास. विंडो के तरफ से ZywOo पुश कर रहे, दूसरी ओर Apeks होल्ड कर रहे डबल डोर्स को, एंड इट इज वाइटैलिटी यहाँ पे जो जीत के दिखा देगी. हाफ को अपने नाम करते हुए नजर आएंगे, बट इससे पहले, ये राउंड से पहले माम्बा, वाइटैलिटी के एंटायर स्क्वाड के पास डबल डिजिट किल्स बिल्कुल नहीं थे. एवरीबडी वाज 9, 6, 8 ऐसे किल्स थे. दूसरी ओर ईमा अकेले इस फर्स्ट हाफ में 23 किल्स लेके बैठे हैं. 23 किल्स एक हाफ के अंदर. ये नंबर्स आपको देखने नहीं मिलते पूरे मैच में. 23 किल्स कई बार देखने नहीं मिलते आपको. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक हाफ में इस प्लेयर ने 23 किल निकाले. मैं बता रहा हूँ, he's a future superstar being born over here.
जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने पूरे मेजर में दिखाया, ना कि सिर्फ इस मैच में, हमने सेमीफाइनल में देखा, हमने क्वार्टर फाइनल में देखा, ये प्लेयर पता नहीं अभी तक कहां थे, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, बिकॉज ये आसान नहीं होता है। 30 किल्स एक हाफ में निकालना, इट्स अनहर्ड ऑफ। बात करें वाइटैलिटी की, अब उनको अपना पिस्टल राउंड कर्स तोड़ना होगा। दे नीड टू विन दिस पिस्टल राउंड, वो नहीं हार सकते, वो पिस्टल राउंड निकालना पड़ेगा, बिकॉज अगर यहाँ पे पिस्टल राउंड हारेंगे तो दिक्कत होगी उनको। पूरे ग्रैंड फाइनल्स में 3 पिस्टल राउंड हुए, तीनों पिस्टल राउंड हारे वो। ईमा ऑल दीज पिस्टल्स, जब भी उनके पास वेपनरी नहीं था। फर्स्ट राउंड में ड्यूल बेराडस के साथ ओपोनेंट के सामने छलांग मार के पिक्स निकाल रहे थे। लुक एट दिस अगेन, द कॉन्फिडेंस। अकेले खिलाड़ी बचे हुए थे, पिक्स ऑफ ZywOo उसके ऊपर एक किल निकाल लेंगे। शुए एज वेल साथ देते हुए नजर आए ईमा का व्हेन नीडेड। He also got a couple of rounds in his favor, जहाँ पे उनको क्लच करना पड़ा, बट ईमा was the monster. ईमा जिस हिसाब से स्टेप अप कर रहे थे, जिस हिसाब से 1v2 1v3 क्लचेस करके दिखा रहे थे, वाइटैलिटी वो लेफ्ट स्पीचलेस। वाइटैलिटी कुछ कर नहीं पा रहे थे उसके तरफ से। Look at this, यही मैं बोल रहा था। शुए पिक्स 2 एक ही लाइन ऑफ फायर में, उसके बाद आखिरी को भी चैलेंज कर लेंगे। गेट्स द थर्ड। ZywOo को फ्री ऑफ मिला था एक बार, बट स्टिल उस राउंड को कन्वर्ट नहीं कर पाए। डबल ऑफ सेटअप गेमर लीजन की तरफ, क्या ही बेहतरीन अलग अलग स्टैट्स नजर आ रहा था। ईमा अगेन इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन। जिस फर्स्ट हाफ का जो पूरा रिप्ले है मामा, इट्स ईमा देयर, ईमा हियर, ईमा 3K देयर, ईमा 3K हियर, वो ही सिर्फ देखने के लिए मौका मिल रहा है ऑन रिपीट। दाद देनी पड़ेगी उनको, उनकी कॉन्फिडेंस की। वेंट में वहां से 3 किल निकालना, 2 बारी उन्होंने प्रीफायर किया, 2 बारी किल्स निकाले, फिर आखिर में जब मोलोटोव आया उनके ऊपर, आउट प्ले किया सामने वाले प्लेयर को, क्योंकि एक्सपेक्ट करेंगे जब डैमेज पड़ता है मोलोटोव आएगी तो भागेंगे वहां से, लेकिन नहीं हटे। पेशेंस की पूरी दाद देनी पड़ेगी। रिस्क लिया था, दैट रिस्क पेड ऑफ। ट्राइंग टू गेट वाइटैलिटी बैक, ट्रम्पेट गाय जो है हमारे। दिस ट्रॉफी, एक ट्रॉफी इतने मायने रखता है। सोचिए, लास्ट CSGO मेजर इन पेरिस। अगेन एक तरफ पूरी होम टीम है, एक तरफ कियोस है जो होम ग्राउंड से है। इट विल स्टिल बी अ विक्ट्री फॉर द फ्रेंच क्राउड, बट गोल्डन हॉर्नेट्स जो इतने सारे हैं उनको वाइटैलिटी की जीत चाहिए। पहला हाफ खत्म हो चुका है, 5 राउंड डिफरेंस के साथ रहने वाला है। वाइटैलिटी कवर अप करना पड़ेगा, एंड वो सब होगा सिर्फ और सिर्फ पिस्टल राउंड से। कैन यू डू इट? बीक के अंदर ही जाना मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं लगता कर पाएंगे वहां पे, बिकॉज़ उनको बहुत मुश्किल होती है। बट नॉनदलेस लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरा पिस्टल राउंड यहां पे शुरू हो। वाइटैलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड सीटी साइड पे है ये। कैम की तरफ एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक स्मोक एक फ्लैश उतना अवेलेबल है, लेकिन मेजिस्क फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड द ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यहाँ पे रैम की तरफ इकलौते प्लेयर होल्ड करे। ईवा P250 लेके आउटर की तरफ है, अब मेजिस को पीछे हटना पड़ेगा। नहीं, ZywOo अवेलेबल उनके पास, ZywOo गेट्स टू, कैन ही फाइंड द थर्ड? जी नहीं, लेकिन मेजिस को बैकअप देने के लिए जरूर आए थे। C4 गिर जाएगा। एपेक्स ने ग्रेनेड मारी, Dupreeh लेके वहां इंतजार जरूर कर रहे हैं, लेकिन सू ही नीड्स टू स्टे अलाइव, ही नीड्स टू मेक दिस हैपन। ईवा आखिरी प्लेयर, कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पे। वाइटैलिटी फाइनली द पिस्टल डाउन द कर्स तोड़ते हुए। सुपर क्रूशियल पिस्टल राउंड था ये। क्रॉस फायर, बेट एंड स्विच, बट इसको रीड किया गया था, जंप आया, बट ZywOo वाज बेटर एंड टेकिंग 2, वो 2 खिलाड़ी को जैसे गिरा दिया। आई थिंक दैट्स वही गेम को टर्न अराउंड करता हुआ नजर आया, वरना ये कहीं ना कहीं GamerLegion वापसी ले सकती थी पिस्टल राउंड को। फुल सेव कमिंग इन फ्रॉम GamerLegion, दूसरी ओर बाय अप करते हुए फार्महाउस, MP9s, M4A1s एंड यूटिल्स। फुल सेव कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है उनके पास राउंड्स इतने ज्यादा अवेलेबल है। 4 राउंड का डिफरेंस है, आराम से कैपिटलाइज कर सकते हैं बाद में, लेकिन आप पिस्टल के साथ जब आउटर जाएंगे आप, मुझे लगता है इतनी लॉन्ग रेंज पे ग्लॉक से कुछ ज्यादा डैमेज दे पाएंगे। लेकिन ZywOo सुई को स्पॉट करने के लिए इंतजार करे। एपेक्स आ चुके हैं फमास लेके सीक्रेट की तरफ। ZywOo रन बूस्ट दिया था मेरे ख्याल से, लेकिन एक और
वहाँ पे फॉल डैमेज बहुत ज़्यादा पड़ेगा उनको, हवा में गोलियाँ पड़ी थी एंड ही विल फॉल पे। अब उसकी वजह से उनका पैसा भी कटता है, ये दिक्कत होने वाली है। व्हेन यू फॉल यू आर डेड, पैसा कटता है। हर्ट फुल सेव किया था बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा पैसा खोते हुए नजर आएंगे। गोल्डन हॉर्नेट्स बजिंग अगेन। थोड़ा यहाँ पे चिंतित हो गए थे जब वो फर्स्ट हाफ काम नहीं आया, बट ये पिस्टल के बाद दूसरा राउंड भी जो लेते हुए नजर आए। They're all back in the game. या रणबीर जैसे आपने बोला, अनफॉर्चुनेट इनिशियली टेक्स डैमेज, उसके बाद गिर जाएंगे। वैलिड एफर्ट। फिलहाल के लिए यूटिलिटी पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। दैट ग्रेनेड्स, ईमा ऑलमोस्ट वहाँ पे टेक डाउन होने वाले थे। अगर ये किल निकाल पाते तो बहुत बड़ा मोमेंटम शिफ्ट होता वाइटालिटी के लिए, गेमर लीजन के लिए खास तौर पे, बिकॉज ईमा उनकी टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर है। मेजिस्क इन द मीन टाइम ग्रेनेड डाली उन्होंने, लेकिन उससे कोई डैमेज पड़ा, एक और बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है। मेजिस्क नीड टू स्टे अलाइव, पहला किल निकाला, स्प्रेड हो गया, दूसरा भी निकाला, लेकिन गोलियां खत्म हो गई। ये एक कारण की वजह से मुझे अच्छी नहीं लगती M4A1S, लेकिन Dupreeh ऑन द बैक साइड विद द MP9। यहाँ पे टेररिस्ट एक्सपेक्ट करेंगे इस चीज को, अभी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन द टीज आर इवन मोर स्मार्ट, कीप अप कर रहे हैं हेवन की तरफ दोनों प्लेयर्स। ZywOo अभी भी गराज में, ईमा के ऊपर क्या किल निकाल पाएंगे। ईमा प्रॉपर्ली चेक करने वाले, क्योंकि वही वो प्लेयर खुद ही एंगल पे खेलते हैं। ZywOo could actually fall prey to this। स्पॉट कर चुके हैं, एक दूसरे को स्पॉट कर चुके हैं if I'm not mistaken। जी हाँ, या फिर नहीं, ZywOo I'm not sure उन्होंने स्पॉट किया कि नहीं, ईमा शायद वो किल निकाल सकते हैं। ओहो यस, ईमा गेट्स इट। 10 HP पे इतना क्रूशल किल निकाला है उन्होंने। डिफ्यूज किट्स अवेलेबल है सीटी साइड के पास, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कमिट करेंगे। बैकिंग ऑफ, वेपन अपग्रेड कर लेंगे दुप्री, स्पिंग्स भी कर सकते हैं, बट स्पिंग्स ऑल द वे एट बी। अपने टीममेट को बता चुके कि कहाँ पे वेपन है, अपग्रेड कर लेंगे। एंड यस, जैसे आपने बोला किट है, बट दे विल गो फॉर अ सेव। GamerLegion अपना फुल बाई को काम करवाना चाहती थी एंड काम करवाया। जिस हिसाब से ईमा ने जो पिक निकाला है, जैसे आपने बोला, both of them love to play in a similar position। क्रॉस ओवर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, ZywOo ने सोचा क्रॉस ओवर किए बट कहा गए। ईमा आई डिड नॉट सी एनीबॉडी, बट आ सकते गराज से बाहर एंड दोबारा चेक करने के लिए गए, तैयार थे, ट्रिगर पे दबाया, बट ये इनिशियल ग्रेनेड्स, डुअल ग्रेनेड्स जो आए हैं, अगर वो थोड़ा और सामने गिरते उनका, आई थिंक वो वहां पे जाने वाले थे। दैट कुड हैव बीन द फर्स्ट ओपनिंग फ्लैग। बढ़िया कस्टम टी शर्ट बनाया था उन्होंने ZywOo के लिए, जो GTA का टीम था उससे इस्तेमाल किया। ईमा को वापस डैमेज दिया जाएगा, 69 HP बची उनके पास, लेकिन ZywOo बैकस्टैप पे, ये बहुत जरूरी था, ये उन्हें पता था करने की जरूरत, लेकिन ZywOo दे एब्सोल्यूट गॉड टियर प्ले। जिस चीज की ZywOo को जरूरत थी वही चीज उन्होंने किया, टीम को जरूरत थी खास तौर पे, वो चीज उन्होंने करके दिखाई। यानी एक और किल निकालेंगे, ट्रिपल किल। ZywOo गोइंग बिग, स्टेप अप किया अपनी टीम को, बहुत डेस्परेटली जरूरत थी एंड वो करके दिया उन्होंने अपनी टीम के लिए। जिस हिसाब से एक राउंड में ईमा ने वेंट पे 3 किल निकाले थे, दिस इज अ सिमिलर सिचुएशन। फोर्स करके ये 3 निकाल ले, जिसके वजह से जैसे आपने बोला बहुत क्रूशियल राउंड था अपनी टीम के लिए जो दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। एपेक्स पिक्सल कियोस आखिरी खिलाड़ी रहने वाला है। आइजैक राइट नाउ मूविंग अराउंड लॉबी, ज़्यादा कुछ नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे उनको, एंड ही कैन ऑल्सो बी हंटेड। 50 सेकेंड्स रहने वाले क्लॉक पे, जा रहे टी साइड अपने आप को टक करने के लिए, बट लुक एट द होल्ड कमिंग थ्रू। क्रॉस ओवर देख सकते हैं, बट उसी टाइमिंग पे ऊपर देखेंगे साइलोस को चेक करने के लिए, बिकॉज ऑफ विच फ्री क्रॉसिंग सेव कर लेंगे आइजैक अपना वेपन। सेव जरूर करेंगे, लेकिन ZywOo का ये प्ले क्लच प्ले था। कहते हैं हमेशा गुड और ग्रेट प्लेयर जो होते हैं उसके बीच में एक बहुत बारीक अंतर होता है। अच्छे प्लेयर्स होते हैं और जो सबसे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हाई होता है तब डिलीवर करते हैं। ZywOo ने वही किया, ट्रिपल किल निकाला, रिस्क लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से चेक करेंगे इज गोइंग टू किल हिम आफ्टर टाइम। आई थिंक अगर समय के बाद मारेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन फ्लैश बैंग आएगा ज़रूर। आखिरी प्लेयर को भी वहाँ पे एलिमिनेट किया, गन गिराई उनकी, ऐसा नहीं बचाने देना चाहते थे बिल्कुल भी। वाइटैलिटी धीरे धीरे करके वापस आती हुई गेम के अंदर।
अगेन ZywOo की अगर ओपनिंग्स नहीं होते, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहते, कहाँ से पीक आ सकता है, टाइमिंग पे ओपोनेंट को ऑफ गार्ड पकड़ने के लिए एक और तैयार भी नहीं थे, एक और सोच रहे थे, ही इज स्टिल इनसाइड द स्मोक। एंड उसके बाद ये फ्लैश सेटअप अपने आप के लिए 4 किल उस राउंड में निकालते हुए ZywOo। GamerLegion पहली बार टाइम आउट का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट हाफ फ्लॉलेसली गया उनके लिए, विदाउट एनी ट्रबल्स। उनको जो करना था कर रहे थे, अगर राउंड उनसे गए भी they were okay with it, we could still see smiles on their faces। अभी के लिए जो गैप था वो नज़दीक आ रहा है एंड थोड़ा चिंता उनके चेहरे पे नज़र आ रहा है। Apeks on the other end, he is riled up। उनको यहाँ से एक और मैप की तरफ नहीं जाना है, he wants to close it right here। possibility अभी भी है, he'll try to get his team in that occasion। अभी के लिए GamerLegion सेव करती हुई नज़र आएंगे, should be around for vitality, but हमें पता है GamerLegion, their surprise, their force push is coming through, the waterfall push जैसे आप बोलते हैं, that can cause trouble। Tech9 भी है, Tech9 पिछले बार भी हमने देखा कितना दिक्कत दे रहा था वाइटैलिटी को। काफी ज्यादा एग्रेशन दिखा दो यहाँ पे, लेकिन क्या किल मिलने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड दोनों टीमों के लिए। अगर वाइटैलिटी हारती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी उनको। GamerLegion can still afford to lose this round। वाइटैलिटी के ऊपर प्रेशर होगा, रैम की तरफ प्रेजेंस जरूर दिखाई थी, लेकिन इंसेंडियरी की वजह से उनको रुकना पड़ेगा। अगर एक ग्रेनेड जाती है वहां पे तो बहुत डैमेज डिश आउट कर सकते हैं, लेकिन मेजिस्क बैकअप की जरूरत पड़ने वाली है उनको। जी हाँ, रीपोजिशन करेंगे अपने आप को, अननीड ग्राइंडर बना दिया यहाँ पे ZywOo और मेजिस्क ने। गन स्विच कर देंगे, देखिए सेम गलती नहीं दोहराना चाहते जो आखिरी बार करी थी उन्होंने। इस बार यूएसपी निकालेंगे, गोलियां खत्म हो गई आखिरी बार इनकी। हमारे कैमरा क्रू भी, they're enjoying the vitality crowd। उन्होंने थमा दिया गोल्डन हॉर्नेट के एक रिप्रेजेंटेटिव को कि आप कैमरा संभाल लिए, मैं आपके ड्रम संभालती हूँ। This is the spirit of esports, this is CSGO making it happen। It's not just the game। Oh, it's definitely not just the game। एक और आउट की तरफ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट किल होगा ये अगर निकाल पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे, अगर मैन एडवांटेज मिलेगा उनको तो कम से कम मौका मिलेगा उनको। एंड बी बॉम्ब साइड वहाँ पे सिर्फ मेजेस रुकेंगे, रैम्प बी बॉम्ब साइड पे खेले, लेकिन एपेक्स को टेक डाउन करेंगे एक और। ZywOo इस बार रैम्प नहीं खेला अगर आपने नोटिस किया हो तो। मैंने सोचा एक एंट्री हो रहे थे, दूसरी इवेंट से एग्जिट कर रहे थे, नॉट द केस। स्मोक लाइनअप आएगा, क्रॉसिंग ओवर टू सीक्रेट, मॉली को क्लियर करने के लिए मॉली डाल के अगर टनल की तरफ खिलाड़ी है उनको पुश बैक किया जाएगा, रहेंगे वहां पे। स्पिंक्स इज वेटिंग टू ग्रीट देम, बैक ऑफ कर रहे हैं। मैजिस्क ऑन द अदर रीडिंग इट राइट, पर एक और पिक ऑफ कर देंगे उनको रैम्प की तरफ। अभी के लिए GamerLegion जिस हिसाब से पिक्स निकाल रहे हैं, अपने आप के लिए ओपनिंग बना रहे हैं बेहतरीन तरीके से, दे फॉलिंग इनटू द साइट एंड इसको रोक नहीं पा रहे। स्पिंक्स इज हियरिंग ऑल द साउंड, विंडो तोड़ के आएंगे, बट इट्स स्टिल गोना बी आइजैक। GamerLegion ही अभी तक कंट्रोल लेके चल रहे हैं। इट इज अ 5v2 सिचुएशन, एक की तरफ एक खिलाड़ी, बैकवेंच की तरफ एक खिलाड़ी, एंड आई डोंट थिंक कुछ करने के लिए मौका मिलेगा वाइटैलिटी को। GamerLegion 12वां राउंड अपने नाम करते हुए नजर आएंगे। क्या ही स्वीट सिंपल पुशेस करते हुए नजर आए, हर एक एंगल पे चैलेंज किया, पिक लिया, मूव किया। Unbelievable stuff from GamerLegion। मैं कह रहा था प्रेशर वाइटैलिटी के ऊपर होगा, बहुत क्रूशियल राउंड है। 12वां राउंड निकालते हुए GamerLegion, पैसा है वाइटैलिटी के पास, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन की बात यह है कि अब टेररिस्ट अगर 5 प्लेयर सर्वाइव करे, दैट मींस 5 गन सर्वाइव करी है वहां पे, और उतना पैसा बचा पाएंगे अगले राउंड के लिए। एवरी डॉलर काउंट्स, एवरी प्लेयर काउंट्स। प्रेशर वाइटैलिटी के ऊपर, भरपूर प्रेशर, राउंड्स निकालने होंगे, लेकिन GamerLegion बहुत तारीफ करना चाहूंगा मैं इस टीम की। जिस तरीके का कंपोजर दिखाया उन्होंने ग्रैंड फाइनल्स के अंदर, सराहनीय।
हर एक ड्यूल के लिए, हर एक पोजीशन के लिए तैयार थे। उनको पता था जब उनकी टीममेट्स कुछ करने के लिए आएंगे कोई ना कोई पीक करेगा, एंड उस हर एक पीक को पनिश किया जा रहा था। हट के ऊपर पोजीशन करेंगे, बट उससे पहले मॉली आया था डिनाई करने के लिए, बट अगेन क्रॉसिंग के लिए स्मोक। इस बार वही कोई भी इसको चेक या गार्ड करते हुए नहीं नजर आ रहा है। सारे खिलाड़ी वाइटैलिटी के तरफ साइड के अंदर खेल रहे हैं, एंड 2 लोग रैंप के तरफ। दैट इज द सेटअप दैट दे हैव। एपेक्स फाइनली बाहर आ रहे हैं चेक करने के लिए, अगर कोई क्रॉसओवर्स है, अगर कोई छलांग मार के रन बूस्ट मार के निकल रहे हैं। नथिंग एज ऑफ नाउ। मॉली लाइनअप करेंगे ये साइड के लिए। स्पिंग्स बहुत क्रूशियल पोजीशन में यहाँ पे, क्योंकि अगर वो मल्टी किल निकाल पाएंगे कैप के ऊपर से, देन आई थिंक इट्स राउंड डन एंड डस्टेड फॉर वाइटैलिटी। लेकिन GamerLegion इतनी आसानी से राउंड नहीं देने वाले उनको, इतनी आसानी से किल्स नहीं देने वाले उनको। एक और आउट पुश मार्क करते हुए, लेकिन बड़े आराम से खेले दोनों टीम्स, एकदम अंत तक लेके जाना चाहते हैं। एक और स्मोक वहां पे डाला गया है कैप की, सॉरी मेटल डोर की तरफ। स्पिंग्स क्या करना चाहेंगे वहां पे, सबसे बड़ा सवाल। इज ही गोइंग टू फॉल डाउन? जी हाँ, नीचे उतरेंगे, लेकिन आवाज नहीं करी उन्होंने, ये बहुत जरूरी था। उनकी पोजीशन एक्सपोज नहीं होगी। जैसे ही मोलोटोव आई, इंसेंडियरी डाली उन्होंने, बार फोर्स किया सामने वाले प्लेयर्स को, बहुत डैमेज लेके आएंगे। लेकिन स्पिंग्स नीड्स टू गो बिग ओवर अगेंस्ट 2। तीसरा किल उसकी जरूरत, लेकिन आइजैक सर्वाइव कर रहे हैं वहां पे। इंपॉर्टेंट किल निकाला उन्होंने, 6 किल्स है सिर्फ उनके पास, और ये प्रॉबेबली सबसे क्रूशियल किल उनका। लेकिन एपेक्स नहीं उनको जाने देंगे बिल्कुल भी। C4 गिरा 10 सेकंड घड़ी के ऊपर। GamerLegion ने बहुत वक्त जाया किया वहां पे, अब बंदूक बचानी होगी अपनी। कोई रीड नहीं था माम्बा GamerLegion के पास, इतने सारे खिलाड़ी थे, एक हेवी स्टैक था वाइटैलिटी के तरफ से। ए पे हर एक डायरेक्शन से खिलाड़ी तैयार थे। हेवन के तरफ से खिलाड़ी थे, राफ्टर की तरफ से खिलाड़ी थे, मेन के तरफ से खिलाड़ी थे। हर एक खिलाड़ी स्विंग करने के लिए टाइम इंतजार कर रहे थे, एंड जैसे वो पुश आया, स्पिंग्स डिलीवर्ड विद 2 बिग वंस इनिशियली, एंड उनके सामने सीधा C4 प्राप्त होता हुआ, लाइक गिफ्टेड C4 था। वहां से ये गेम बिखरता हुआ नजर आया। ट्राई किया उन्होंने कंट्रोल करने का, बट देयर वाज नो चांस एट ऑल। इसलिए हम बोलते हैं कभी कभी आपको ये साउंड क्यों जो है उसको सुनने के लिए मौका मिलता है, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पता चल जाता है, या आपको फोर्स करके एंगल्स को चेक करना पड़ जाता है, विच विल गिव यू एन आइडिया। बट वो बार बार डोर को स्मोक कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा पीक करके भी वो इन्फो नहीं ले पा रहे थे। एंड उसके बाद GamerLegion ने सोचा कि फोर्स करेंगे हम एंट्री। काम नहीं आया माम्बा, काम नहीं आया उनको। लेकिन मैं कहूँगा स्पिंग्स का वो रोल बहुत क्रूशियल था, क्योंकि कैप के ऊपर बैठे थे, ऊपर से जब मोलोटोव डाली उन्होंने, वो और भी ज्यादा जरूरी था। उसका कारण है डैमेज लेके बाहर आए प्लेयर्स, थोड़ा झिझके बाहर आने से पहले, और डबल किल उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन ये देखे तुरंत वाटरफॉल करने की कोशिश। स्पिंग्स एक और बार बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन, लेकिन ब्लाइंड हो गया, किल निकाले डुप्री। ही इज अ रॉक। ZywOo इन द मीनटाइम अपनी ऑफ लेके आएंगे जरूर। डुप्री एक और किल निकाल रहे हैं, शट डाउन करेंगे पूरी की पूरी तरीके से GamerLegion को। एक और क्या अपनी ऑफ बचा पाएंगे, किल निकाला है, पोजीशन गिव अवे कर देंगे। अब बहुत बड़ी दिक्कत, अगर ये ऑफ गिरा पाती है वाइटैलिटी GamerLegion, मुझे लगता है उनके पास कोई जवाब होगा। अगले राउंड में पैसा भी नहीं होने वाला उनके पास, तो इजी 12-12 होना चाहिए अगर ये राउंड में ये गन निकाल पाते हैं तो। एपेक्स पीछे से आ रहे हैं, वो लॉबी को चेक करने के बाद खुद एक और बाहर निकल चुके हैं। He might just climb down the ladder, and इसके लिए एक और तैयार में भी नहीं रहेंगे। He is टाइमिंग रहेगा यहाँ पे। एक और क्या वो इतना वाइड स्विंग करेंगे, अभी के लिए वो नज़र नहीं आ रहा है। एंड एपेक्स अगर फुल कवर कर लेते उनको आइडिया मिल जाता, बट अभी के लिए ZywOo वो भी इंतजार कर रहे हैं मेन की तरफ, अगर कोई खिलाड़ी आता है उनको पनिश करने के लिए। बट लुक एट हाउ क्लोज हाई एंड लो रहने वाले ये दोनों। एपेक्स इज नॉट इवन लुकिंग इन द डायरेक्शन, क्रॉस ओवर कर लिया, बट एपेक्स ऑडियंस ने चिल्लाया एंड वो अभी थोड़ा चिंतित है। He tried to check the corner, दोबारा रीचेक किया, but still gets punished. बट एक और 13 HP पे रहने वाला है। I don't think he should be allowed to save. ZywOo का ऑफ भी गिरा देंगे। 2v1 सिचुएशन, 15 सेकेंड बचने वाला है। एक और is doing everything to just save this one op. सब कुछ कर रहे हैं ये ऑफ सेव करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज
सिटी साइड की इकोनॉमी को भी पड़ेगा, लेकिन पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है, फर्क नहीं पड़ेगा. आई डोंट बिलीव इट विल मेक अ डिफरेंस एट ऑल. वाइटालिटी ये राउंड उनकी ऑफ गिरानी होगी. एक और कैन गो बिग. अगर इनिशियल पिक मिल पाएगा तो एक्सप्लोर कर पाएंगे, लेकिन वाटरफॉल करने की कोशिश करी उन्होंने इवेंट के अंदर. लेकिन स्पिंक्स और डुप्री एवर सो कंसिस्टेंट ये प्लेयर्स. मैं ये मानता हूँ व्हाट अ फ्लिक. लेकिन डुप्री एंड मेजिस्क सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर्स है टीम के ऊपर. जब भी जरूरत पड़ती है दे स्टेप अप. देखिए अभी के लिए सेकेंड हाफ में ईमा हैज बीन अनेबल टू डू एनीथिंग. आप देखिए एक ही किल मिला है साइड बदलने के बाद. 24. He was still not having a good game. दूसरी ओर अगर बात करेंगे ZywOo with 18, 17 on Magisk and Spinks. इनिशियल स्टार्ट अच्छा नहीं था, बट अभी उनके पास 12 रहने वाले. साइड के अंदर खिलाड़ी आ चुके हैं, सिर्फ देखते रह गए Magisk. ZywOo trying his best to stop this push and the plant. गिर जाएंगे, रिएक्टर की तरफ प्लांट हो रहा है. ट्राई करेंगे बट इट वाज स्मोक्ड ऑफ. जंप पिक किया था बट स्टिल गोज डाउन. 1v1 पे रहने वाले ZywOo ऑन साइड, बट उनको अता नहीं है. खिलाड़ी अभी भी है कियोस एंड कियोस निकाल लेंगे. इट वाज अ 1v2 फॉर ZywOo. इतना शानदार तरीके से खेले. ही आइसोलेटेड ऑल द फ्लैग्स. 3 खिलाड़ियों को उन्होंने निकाला बट इट वाज नॉट इनफ. Nearly not enough. आइजैक 6 किल से उनके पास इस पूरे मैच में. 2 किल अभी निकाले. यानी कितना क्रूशल, आप देखिए कितना ज्यादा क्रूशल. बात करें हम डुप्री के बारे में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने. ऊपर ना कोई इंफॉर्मेशन थी. ग्रेनेड लेके ही गॉट कॉट ऑफ गार्ड एंड कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल भी कुछ नहीं. सीक्रेट क्रॉस कर चुके. शुए एंड कियोस टू फॉलो, बट आगे जा रहे हैं. Magisk कैन ही फाइंड दिस. ईमा ऑलरेडी क्रॉस कर चुके डोर को. ही डज. ईमा टेक्स हिम. Magisk को कोई वैल्यू नहीं मिलेगा. तुरंत यहाँ पे बी के तरफ रश करते हुए नजर आए. AWP रहेगा. ZywOo विद द फर्स्ट, लुकिंग फॉरवर्ड द सेकंड. शुए डार्क की तरफ पुश करेंगे अपने आप को बूस्ट करके मदद करने के लिए, बट एपेक्स पुशेस आउटसाइड द विंडो एंड पिक निकाल लेंगे. एक और जरूर एपेक्स को पनिश कर जाएंगे, बट ये C4 उनके हाथ से जा चुका है. मामबा, दैट इज द प्रॉब्लम राइट नाउ फॉर GamerLegion. 3v3 जरूर है, बट C4 को रिकवर करके आना पड़ेगा. विंडो से रीपिक कर रहे थे, एक और गार्ड कर रहे हैं उसको. आगे आएंगे तो मरेंगे. जी हाँ, लेकिन एक और का वो पिक काफी ज्यादा क्रूशल था. ये राउंड आई डू बिलीव ZywOo वर्सेस एक और होने वाला. C4 गिरा. इनके पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन आइजैक ऑन द बैक स्टैब. दिस कुड बी मैसिव, दिस कुड बी बिग. लेकिन स्पॉट हो जाएंगे. डुप्री उनको नहीं छोड़ने वाले. बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी उनकी. इन स्पिंक्स वहां पे. आई एम नॉट श्योर उसकी आवाज आई है कि नहीं, लेकिन एक और उनको किल निकालना पड़ेगा. यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश. स्पिंक्स इज ऑन द बैक स्टैब. ही इज ऑन द बैक स्टैब. इजी किल होने को दूसरा भी निकाल सकते हैं आराम से. उनको पता है जनरेटर उनकी तरफ, लेकिन ZywOo नहीं छोड़ने वाले उसको. सोनिक, कितना ज्यादा स्ट्रेस उनके चेहरे पे भी नजर आ रहा है. वाइटालिटी चांस है यहीं पे क्लोज करने का. देयर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर फ्रॉम टेकिंग अवे द एडवांटेज. जॉनिक को भी वही चाहिए. ये डुप्री का लेट रोटेशन फायदेमंद होता हुआ, वरना आइजैक का फ्लैंक काम कर सकता था. अनफॉर्चुनेट. ट्राई किया कियोस ने स्टेप अप करने के लिए, बट इट वाज नॉट इनफ. हर एक डायरेक्शन पे कहीं ना कहीं खिलाड़ी थे. ही कुडंट होल्ड इट. जॉनिक आप देखिए, उनको भी पता है यहाँ पे अगर राउंड 1 तो भी खो बैठेंगे, सीधा मैच पॉइंट आ जाएगा, मैप पॉइंट आ जाएगा GamerLegion के लिए. एंड उसके बाद ये पूरा जो एफर्ट उन्होंने डाला है पहले मैप को जीतने के लिए, इतना एफर्ट जो डाला है कमबैक करने के लिए, ये सब जाके तीसरे मैप के ऊपर भी वापस रेप्लिकेट करना पड़ेगा. एंड वहाँ पे कुछ भी हो सकता है. हॉर्नेट्स राइलिंग अप. वाइटालिटी पूरी कमबैक करके जीत दिलवाना चाहती है अपनी टीम के लिए, बट दूसरी ओर GamerLegion आर मेकिंग इट वेरी टफ. अपने तरफ ये मैप को मोड़ना चाहते हैं. बहुत कम यूटिल रहने वाले अभी के लिए. दे विल स्टिल बी एबल टू मेक दिस क्रॉस हैपन, बट वेपन्स उसकी तरफ कमी महसूस करना पड़ेगा उनको. टेक9 अभी भी है. शुई और जैसे पीक आने वाला था स्मोक ऑफ कर देंगे एपेक्स, बट अभी भी 3 लोग रश करते हुए नजर आ रहे हैं एपेक्स की तरफ. पुट्स ऑफ ग्रेनेड, बैक्स ऑफ, बट दूसरी ओर ZywOo ने एक पिक निकाला था. Magisk रिपोजिशन फ्रॉम रैम्प, पिक्स टू एपेक्स. चौथे खिलाड़ी को गिरा देंगे. इट्स ऑल अप टू आइजैक.
एंड ये राउंड हारने के वजह से GamerLegion स्कोर्स इक्वलाइज हो जाएगा एंड नाउ इतना जो बड़ा लीड था GamerLegion के पास वो सब खो बैठेंगे। आठ किल 17 डेथ। आइजैक हैज बीन मिसिंग ऑन न्यूक, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। 1 वर्सेस 5 में कुछ करने लायक है भी नहीं उनके पास, ग्लॉक है सिर्फ 50 सेकंड घड़ी के ऊपर। एट दिस पॉइंट उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है फाइट करना और ये राउंड तो निकालने से रहे, अनलेस ऑफ कोर्स कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, जो मुझे नहीं लगता होने वाला है यहाँ पे। ये जस्ट आराम से किल निकालेंगे उनके ऊपर और ये अपने आप का फोटो नहीं रहता मुझे, आई एम नॉट श्योर, बट एनीवे वाइटैलिटी इक्वलाइजिंग द स्कोर लाइन। 13-13 का स्कोर लाइन है। अब GamerLegion क्या करती है यहाँ पे, ये देखना जरूरी। गोल्डन हॉर्नेट्स के फैंस देखिए, मांबा जितने राउंड्स वाइटैलिटी ने गेन किया है उतना इंटेंसिटी हॉर्नेट्स का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐश क्या ये टाइम आउट के साथ अपने टीम का हौसला बढ़ा सकते हैं। सुपर क्रूशियल रहने वाले ये राउंड। 13-13 पे स्कोर अभी जाके रुका है। तेरह पे रुका जरूर है, लेकिन अब मौका दोनों टीम्स के पास यहाँ पे मोमेंटम गेन करने का, प्रेशर बनाने का सामने वाली टीम के ऊपर। एक और बार मेजिस्क एग्रेस करते हुए फ्लैश मिलेगा जरूर उनको, क्या किल निकाल पाएंगे? जी हाँ, निकालेंगे, ये ऊपर किल निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट किल ZywOo ऑन रैंप। और फिर उनके पास अब वाइटैलिटी एक्साइटेड जरूर होगी, उनके फैंस एक्साइटेड जरूर होंगे, प्लेयर्स सोच रहे होंगे क्या होने वाला है। ये 3 राउंड के बाद अगर ये जीतते हैं तो दे कांट केयर अहेड ऑफ देमसेल्व्स। गेम के ऊपर फोकस करना होगा, इस राउंड के ऊपर फोकस करना होगा, अगले किल के ऊपर फोकस करना होगा। ZywOo बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में, बहुत क्रूशियल किल होगा ये, रैंप पे निकाल पाएंगे तो। कियोस फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और निकालेंगे, बैकअप है उनके पास, लेकिन टेररिस्ट्स 2-man डिसएडवांटेज। ईमा हैज बीन टेकन डाउन, कियोस हैज बीन टेकन डाउन। यूटिलिटी जरूर है उनके पास, लेकिन एक और को एक किल निकालना होगा। क्या ओवर कमिट कर, नहीं, मिस कर देंगे वो शॉट। डुप्री भरपूर फायदा उठाते हुए उस प्रेशर का एंड क्लीनिंग अप। वाइटैलिटी 2 राउंड दूर अपने मेजर टाइटल से, 2 राउंड दूर, 2 more rounds from being crowned the last ever Counter-Strike global offensive champions, major champions that too। और ये क्या मायने रखता है इन प्लेयर्स के लिए, मैं बताना चाहूंगा आपको। इसके बाद बहुत क्रूशियल राउंड था मांबा, टाइम आउट लिया था, बट दिस ओपनिंग दे डिड नॉट एक्सपेक्ट। ये फ्लैश सेटअप में जिसके लिए उसके बाद ZywOo का रैंप के तरफ पिक करना, दे वो वंडरिंग कि कहीं ना कहीं एक ऑफ एंगल पे रहेंगे, बट ZywOo व्हाट अ पोजीशन कमिंग इन। यहाँ पे नो इकोनॉमी, थोड़ा अपग्रेड करके खेल रही है, बट अगर ये राउंड हार जाएंगे इट इज मैच सीरीज पॉइंट। एंड Dupreeh with the first already slowing down GamerLegion, वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं, रैप्टर से Apeks पिक निकालेंगे, the flash doesn't work out, ZywOo with 1 on एक और, Spinks takes down and that gives Vitality map match and series point here on Nuke for the last CSGO major at Paris in their hometown. प्रेशर महसूस कर सकते हैं घड़ी के हर एक टिक के साथ। वाइटैलिटी फैंस खुशी समाई नहीं जा रही है उनसे। एक्साइटमेंट देखिए, नज़ारा देखिए, माहौल देखिए। अगर आप घर पे बैठे हैं, ट्रस्ट मी, ये माहौल का लुत्फ घर पे बैठ के भी आप इतना ही ज्यादा उठा पा रहे हैं जितना वो वहां उठा रहे हैं, बिकॉज इट्स इन्फेक्शियस, द पैशन, द लव फॉर ऑल द प्लेयर्स, फ्रॉम द प्लेयर्स। एपेक्स अपना दूसरा मेजर उठाना चाहते हैं, Dupreeh अनप्रेसिडेंटेड 5th मेजर उठाना चाहते हैं। इतिहास में इकलौते प्लेयर होंगे अगर ये करके दिखाएंगे तो, काउंटर-स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव के इकलौते प्लेयर जिन्होंने 5 मेजर उठाए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ZywOo के लिए, प्रोडिगल सन ऑफ काउंटर स्ट्राइक, आखिरी राउंड हो सकता है ये पोटेंशियली
क्या वाइटालिटी जीत पाएंगे? ग्रेनेड लाइनअप करिए, डैमेज बहुत ज्यादा पड़ सकता है यहाँ से। जी हाँ, सुई टीमा को डैमेज पड़ेगा यहाँ पे। एपेक्स स्पैम करेंगे, लेकिन बहुत प्रेशर, नर्व्स होंगे प्लेयर्स के पास। एपेक्स इंफॉर्मेशन निकालेंगे कगार पर, लेकिन नहीं मिलेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, किल भी नहीं मिल पाएगा। ZywOo ऑप कर रहे हैं नीचे, बहुत जरूरी किल होगा, निकाल पाएंगे। जी हाँ, किल निकालने पीछे हटेंगे। हर एक किल पे, हर एक मोमेंट पे, हर एक प्ले पे आपको इमोशंस नजर आएंगे। लेकिन एपेक्स एक और बार, एक और किल, दूसरा किल, वन किल हुए ZywOo, वाइटालिटी एक किल की जरूरत इतिहास बनाने के लिए। क्या निकाल पाएंगे? वाइटालिटी आर चैंपियंस, लेडीज एंड जेंटलमैन। Magisk 4-time मेजर विनर, Dupreeh 5-time मेजर विनर, ZywOo का पहला मेजर। Zonic लेजेंडरी कोच, लेजेंडरी प्लेयर, और खुशी देखिए फैंस की, आंखों में आंसू, दिल में खुशी। Zonic रो रहे हैं, a player like Zonic is crying। आप इस चीज का महत्व समझ सकते हैं। Zonic इकलौते प्लेयर है जो पिछले 20 साल से ऐसे काउंटर स्ट्राइक के टॉप पे रहे, वो रो रहे हैं यहाँ पे। He has been a name for the biggest CSGO teams. इतने टीम्स को कोच करते हुए नजर आ रहे हैं, gotten them to their major titles, and the final one as well. Emotions हर एक जगह पे, हर एक दर्शक पे, हर एक प्लेयर में from Vitality. They are singing. What a major, mama. तारीफ मैं जरूर करना चाहूंगा GamerLegion की यहाँ पे। They play the hearts out, but unfortunately it wasn't good enough. It wasn't good enough for the home team, for Vitality. फैंस की आंखों में आंसू, आप देख सकते हैं कितना मायने रखता है ये मेजर हर एक इंसान के लिए जो इस स्टेडियम के अंदर है। द फैंस, द प्लेयर्स, उनकी फैमिली, हर एक इंसान जो इस अरीना में है। इमोशंस आप महसूस कर सकते हैं आपकी स्क्रीन के थ्रू, कोई शब्द बयान नहीं कर पाएंगे। ये हिस्टोरिक लम्हा काउंटर स्ट्राइक के इतिहास में, प्लेयर्स की जिंदगी में। चलिए सुनते हैं स्टेज पे क्या होने वाला है। Spinks, the first Israeli player to lift a major trophy. Your first big championship, and you brought glory to your country. What does this mean to you? It's everything. I love you fans. I love everyone from France, Israel, and whatever country you are from. Thank you everyone for the support, and just love you all. An incredible performance. Now, Magisk, you've done what not many players could even dream of doing. You now grab yourself your 4th championship with 2 different teams, and it's been one hell of a crazy journey. What can you say? I'm fucking speechless. That's the only thing I can say. Ever since I joined the international team, it's been my dream. So, yeah, I'm just happy I can do it with the most amazing teammates, and I can trust them every single second, and I'm just so fucking proud of everyone. I'm going to try and grab the rest of them. Apeks. Eight years you waited for this. I remember that interview we did back when it was the last time with the French lineup for Vitality. And that was emotional for you. You had to rebuild. You had to do it with an international team. And now you've lifted it. It's poetic in Paris. How does it feel? I don't know how to describe right now. It's so much joy. You know, I've been criticized from day one being in game leader, but now I win a fucking major, so fuck you all. And this journey, mate, has been something phenomenal for you. We talk about the build-up going into this event. You look at Rio, now into the major championship. Did you always believe? Yes, of course. From day one with this team, last really rough. But this year, 2023, from January, we told ourselves that we have the major in Paris, and that was the big goal for us. The goal was to come as good as possible here,
and we could see that many teams like had a lot of trouble coming here. Yes. So the most important is the win for us, and we gave everything for the 5 months. It wasn't easy. The beginning was tough. Not much believed in us after Katowice, after EPL, but that was everything in the plan to grow up as a team, and yeah, we win a fucking major. You definitely did. Mr. ZywOo. Oh, it's incredible. Walk with me a little bit, my friend. The emotions are high, and it's crazy from start to finish. But ZywOo, you are the chosen one. Finally getting that major championship, a major MVP performance as well, doing it in Paris and how important it is to you. But what do you want to say to everyone? They expect so much from you. Thanks everyone. I just want to say that because it's because of you we did that. So thanks everyone. We love you now. And we fucking did it. Now there's still 2 more members missing from this. Zonic, you're not escaping me, mate. 5 major championships as a coach. A crazy journey you have been on. Now, if we look at this from your legendary performances in 1.6 as a player, all the way through to present day and everything you've done for this game, I've seen you frustrated. I've seen you stressed. Has it all been worth it? Yeah, of course. I mean, this crowd here, the Golden Hornets, I fucking love them. I'm sorry, but they're the best. Yeah, I mean, it's emotional for me. It's been a tough road here in Vitality. We didn't always play our best, and yeah, I lost my mom last year, so it's been a tough journey. But finally, we. Dupreeh, you are the only one who has attended every major. You are the only one who has 5 major championships by your name. You will go down in the history books as the most decorated player in CSGO, and no one can ever take that away from you. You did that in front of your girlfriend, your baby, your family. It's incredible. Yeah, it couldn't be better. So I'm just, I don't even know what I've done myself. So right now I'm just totally baffled. I'm super proud. And when I joined Vitality, my individual goal was to win 1 more major, and I achieved that today. So yeah, I don't know what to do. Well, I'll tell you what you guys can do. Vitality, the last CSGO major trophy awaits you. Go and grab it. Signed sincerely by millions, your Blast TV Paris Major Champions, Team Vitality!
History forged on home soil, the final CSGO major, and Vitality now decorate their cabinet with the most prestigious trophy. One of only 2 squads in CSGO major history to hoist it above their heads without dropping a single map. And for ZywOo, the chosen one, Matthew, could not be more poetic to lift his first in Paris. It was written in the stars, Priya. It was written in the stars that they would come here in Paris and lift that trophy. They made the best out of the opportunities that were given to them, and today, once again, as they have done throughout this entire event, they bend, but they don't break. GamerLegion applied pressure, they pushed them in the corner, pushed them against the ropes, a couple of players caught on fire, but it wasn't enough to put Vitality off tracks. They were destined to lift the trophy. They win their first major. They do it at home soil, they do it in front of the crowd, they do it in front of their families, and they do it in style. As Matt just said, not dropping a single map throughout the entire major. Sure, GamerLegion applied pressure. Sure, GamerLegion played a good game of Counter-Strike, but there was never any doubt that Vitality was poised to hoist this trophy. There was never any doubt that they were the better team. And it is only fitting that Dupreeh, who's attended every single major, also gets to win the very last one. You have Sonic having won 5 majors. Spinks, the first one ever from Israel, coming in, lifting that trophy. We doubted them. We doubted them in the beginning of the year. They had not looked great at all. But oh my, do they deserve this one. The best team in the world right now in front of you, winning the major, that's Vitality. We throw around the word legacy a lot, but Dupreeh is the embodiment of that in CSGO. We talk about a player, as you said, Jacob, attended every single CSGO major, and it is just pure poetry for him to be rounding off this CSGO chapter by lifting his 5th. It is a feat that is only accompanied by Sonic, who's been standing behind them as a coach, and it is such a beautiful occasion to do it with a brand new squad. A unique tagline for a unique player. The longevity of Dupreeh can never be undermined. He can never be underestimated. It's so crazy to think the hardships he's went through, both as a player and as an individual, but still, in the hardest of time, he's shown through. It's happened in Katowice here again. After a tough time individually, he comes back on the server and he shows more confidence than he had in the last 6 months. It feels like, again, it was written like a movie script. Everything coming together, players surpassing their own obstacles. Spinks playing his best Counter-Strike by the numbers. ZywOo living up to his status, and of course Dupreeh, you mentioned him being an integral part of the building for Vitality. My heart is melting. Vitality haven't been shy about how much this has meant to them ever since it was announced that the final CSGO major would be going down in Paris, in France, the home soil of the organization. Apeks has been saying time and time again that eyes have been firmly set on that prize. And for him, what is it, over 2,000 days since he last lifted his first major trophy? The fact that he gets to do it as an in-game leader this time around, leading his pack firmly to the charge, and man, leading the crowd in this chant as well, he is a true showman. It's one of the things that I respect the absolute most about this victory from Vitality, because you're right, they were not shy of applying pressure upon themselves. They said it at the beginning of the year, we want to win in Paris, we want to peak in Paris. We saw them struggle at Pro League, we saw them struggle at Katowice, and we were all doubting, thinking, yeah, you're talking about Paris. How about you even get to Paris in the first place? You got to go through the AMA, you got to qualify, you got to get into the playoff. But the way they've conducted themselves in this tournament, the way they've played, there's never been any doubt whatsoever that Vitality was prone to win this one. ZywOo finally getting a major, of course getting the MVP as well. I don't think I'm spoiling anything right here by saying that ZywOo has been the best player in this tournament. Commiseration to Emma, who played a good game as well. But right now, ZywOo is on top of the world. The high five quite literally for Dupreeh there. Literally high five. The high number 5 for him, and only Sonic behind him to have that as well. Metaphorical and a beautiful sign, of course. You mentioned ZywOo, that's true. You're absolutely right. He's had a couple of moments on Nuke where a superstar was called upon. A superstar was needed. GamerLegion firmly in the lead. Scoreline with them, finances with them, the rhythm, the A pushes that Vitality were struggled to handle, but then who steps in with the multi-kills? Who becomes that beacon of reliability with the AWP? It's ZywOo. He's acted the way he was supposed to. Best player in the world. Just incredible for us to be rounding out the final CSGO major with the chosen one finally lifting the trophy we knew he was so damn hungry for. It was almost criminal, Matthew, that we hadn't seen him make it any deeper than a quarterfinal until we entered the A-Core arena. And when he had the opportunity, he shone brighter than we can even believe. And it's just the beginning of the story, Freya. It remained
an anomaly in his pedigree, an anomaly to not see him lift the trophy, but that has been fixed today. Mathieu, comment ça va? Welcome. Feels good. I cannot be sad after this. No, best feeling of my life right now. I cannot imagine more. It's the best feeling, yes. Can you it's just... tough, I need to breathe now. I was going to say... Take your time. There's so many emotions going on. We can see your family, your mother, your girlfriend out in the crowd. How much did it mean to you to not only be lifting your first ever major trophy, but in front of all the fans and your family in the crowd as well? It means a lot. I mean, we have been working for this for 4 months now, and we give us every day. And obviously it's a lot of emotion now. And yeah, like I said, it's the best feeling in front of our family. That's the first time we play in front of them, and yeah, I don't have the big word for what I'm feeling right now, because that's the best feeling. Was there any point in this game where you doubted that you were going to win? Was there any moment where you felt like things might slip away from you? Maybe T-side in New York, but I knew on City side we have good City side, and we not gonna give up at any moment, and we almost come back. I mean, it was a small comeback. How hard was it to play every single game and be the favorite? Everyone saying you have to win this game. It's impossible for you to lose. Even in the grand final here, it was impossible for you to lose. How did you handle it? We're just playing our game. That's it. We're not gonna overthink like they are other dogs, and we have to beat them. No, if they are in semi-final, final, that means they deserve it, and that means we have to give everything, every single game. And that was our mindset before starting every game. ZywOo, it's a massive achievement for you as a team, but it's also a massive achievement for you as an individual player to finally win a major. Not only do you win the major, buddy, but of course, you're also the major MVP of this tournament. Thank you very much. You are in the shape of your life right now. You're winning in front of the home crowd. You're winning with the MVP trophy in your hand right now. Try to describe the feelings going through your body. I mean, obviously, whenever I start a tournament, I'm never thinking about being the MVP, but obviously this is a major. That's one of the best things you can have individually, and that means a lot, because right now I'm not... Obviously with this team, I have less pressure on my shoulder. Every game you can feel like everyone is showing up, and I can play my best game ever, every time now. And it's because of my teammate I can play really good now. Is it the first of many? This is first of many. Of course, I try my best every time now. I mean, you know me, and I'm gonna never give up about this game. Sounds good. ZywOo, we heard you down on the stage with Banks. You were saying, you know, you owe everything to the crowd that has been supporting you. My question for you is, how do you stay so fucking humble? It's insane. Every time we speak to you, you know, you're willing to give your accolades to everybody else, to the supporting staff around you. Could you just give me a few words as to how you stay so humble? I know, you need to ask my mom and come here, because I'm like this. I mean, just she educated like this, and I'm never gonna change, because I'm top 1, top 2. I'm like this. I'm never gonna change. That's why we love you so much, though. We get to see the winning moments from the rest of your team as well. Obviously, Dupreeh, part of an exclusive club, lifting 5 major trophies. Can you tell us what was happening in those final moments when you were in the server with the boys, when you knew that this one was going in your favor? What were the reactions like in the booth? Actually, no one talk about like we getting closer. We have been too much focused for the game, and yeah, I think we are too. Yeah, we didn't think about winning the game. We just want to do one by one, every single one to just finish the game. But we didn't think about like, yeah, let's close it individually, or we wanted to play as a team most likely. You have players with incredible experience on your team, of course, and we were wondering at the desk, did they help you guys get into good mindset at the beginning of the grand final? Yeah. This was the first for you, the first grand final in the major. Of course, but actually, yeah, Dupreeh and Magisk help us a lot. What did they say? I mean, every day we have a talk, and they talk a lot about how we need to be, our plan we did for 4 months, and yeah, that brings confidence when you see like the most experienced player in your team say that. It gives you confidence for me. I mean, most likely me and maybe Elsmeng, but it gives you confidence in your gameplay and your individual. You know, there's 3 guys behind you with experience, and they're never gonna give up every single time. And how did you feel as an individual when you see your teammates stepping up their level? This has been incredible. Spinks has played a beautiful major. Magisk and Dupreeh have been solid. Dan, amazing first map. How does that make you feel as the superstar de facto? Feeling good. I mean, I think I said it before, but it's less pressure on my shoulder, because I don't have to think like I need to do 30 bomb every single game. Not right now. If I do 10 kills, but
I can help with my communication, with some, maybe I see some tactic or whatever, but I can help in another way than killing people. You're so humble. It's absolutely insane. ZywOo, I just want you to look around. Look at all these people that are supporting you, all these people that I'm sure are waiting for autographs around there. Of course. Oh, it's so beautiful. I just want to give you a moment to say anything to the fans watching at home, anything you want to say now that we're wrapping up the final CSGO major and you've managed to lift a trophy. Yeah, so first of all, thanks for Golden Hornet, because without them, I don't think we could manage to beat everyone. They were crazy, and that gives us power. And also for everyone at home, I think Vitality play really good as a team, not individually, and I mean, I think we did it for the frames and also for the team, of course, but we want to show up like Vitality is not over, and we're gonna also for CS2, we're gonna give everything for that. I love that. Tu veux le faire en français? En Oh français, yeah, en français, go ahead. Yeah. C'est le moment, Ah non, on plaisir. va parler un peu français, mais Un message pour la communauté. Tu comprends, de toute façon. Non, mais de toute façon, merci pour les Golden Hornet encore une fois. Vous avez été chaud, joué de la trompette, vous avez sauté, vous avez tout donné, vous étiez on fire. Et de toute façon, merci dans tous les cas. On vous remerciera, on va faire plein de photos avec vous. On sait qu'on a le soutien derrière vous dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Vous êtes derrière nous, et c'est le meilleur moment en fait de notre vie. I'm sure the entirety of this arena is going to be flying the tricolor high tonight in celebration of you guys. ZywOo, thank you so much for joining us. Congratulations being the MVP, lifting your first ever CSGO major trophy. I'll let you go off and celebrate with your team, because you got some celebrating to do, man. We will. Go celebrate Beautiful now. stuff. Thank you very much. Thank you so much, man. I still cannot get over every single damn time we speak to ZywOo. He is just insanely we're gonna make humble. it work. We're gonna make it work. How? We're gonna poke him. Of that caliber, at that skill level, that delivers so consistently, the fact that he stays that humble is a testament to his personality, but a testament to how he is as a teammate. Because imagine having somebody like that on your team that can pop up at any moment, and he's still so humble. It's so unique, man. Matthew, you and I have both played Counter-Strike for many years. I have never come across a guy who is that good at the game and who has that little of an ego. Myself even, I remember that, you know, when you were young, you were on fire, you were playing well, you get a bit of an ego, right? You built that up, but for some reason, ZywOo has kept both foot on the ground throughout his entire career, and I'm honestly gonna say right here, right now, I don't think I've ever met a player of that caliber with that skill set that is so humble and so aware of it as well. As he said, he can always be better. He can always help with the communication. Of course. He can always help Apeks with the calls. He can make sure Dupreeh feels more comfortable. That is a guy that you want on your team. Without a doubt, the best player in the world right now, and he's making a great case for potentially also coming into the conversation whether or not he's going to go down as one of the best Counter-Strike players of all time. You know, the attitude that we respect so much, of course, has cost a little bit to ZywOo at times. I think there have been games, there have been events, there have been finals where people are asking for more sharper teeth. They want a bit more aggression, a bit more ego from ZywOo. But I have to say, his words to his teammates resonate with me. I think they all came together to support him so that he actually didn't have to become someone he isn't. Yeah. He just had to give his best ZywOo impression. Doing what he does best, being an absolute machine, multi-kill machine, being safe, being reliable, being a good teammate. That was the formula they needed today. He ends up as a very justified MVP of the last CSGO major, and damn, it feels good to say it. I'm just basking in these beautiful moments that we're seeing from the entire families of the Vitality squad entering the stage to celebrate with them. We get to see the baby bees, obviously, Dupreeh holding his little baby there, Sonic with his children earlier on as well. And it just settles it in my mind, right? It just makes me think back to when we started this journey, embarking upon CSGO majors. Dupreeh was a kid, Dupreeh was a teenager, right? Now he ends off his CSGO chapter as a dad with his family around him. It's just such a beautiful story and a testament to what the game he's done in this game. Dupreeh has been through so much as a player. We all remember the Katowice major as well, when he won it for his dad. Unfortunately, he passed away shortly before the tournament. It didn't affect Dupreeh on the server. He was a man about it. He committed to Astralis, and he ended up winning the major. It comes full circle now as well with his newborn himself in his arms. He's being the only one who can proudly say that he's won a total of 5 majors. It does feel like Vitality is becoming a family. We've seen that progress as well over the years. We've seen that progress over this year, for that matter, as well. They said it from the start of the year. We want to win in Paris at all costs, and oh my, did they deliver. There could have been so many breaking points as well. That's the story of Vitality. Many of us, myself included, over the last few months have called for changes. There was a point where it was very complicated to be a Vitality fan. It was very complicated to handle the cognitive dissonance of them not lifting trophies, not having deep runs. But Apeks said it. In 2023, they were on a different trajectory. And there have been 2 distinct
big hindrances, of course, in Katowice against Liquid, in EPL against that of Maz and that is. But besides that, they were going on a much better path. And this is the conclusion for the doubters out there. They knew where they were going. And they've done it. They've lifted the trophy here. And they join one of only 2 teams now to do it flawlessly. Obviously, NaVi back in Stockholm, not dropping a single map for the duration. Nobody expected Vitality to putting that kind of shape forward coming into Paris. No, nobody expected that at all. And I know there'll be critics saying they had an easy route to the major final, maybe one of the easiest ever at a major. But as we spoke about coming into the game, the RMR wasn't easy. They took down Heroic in Rio. They took down G2 at this major. They've beaten the teams that we expected them to go up against in the final. So they've shown they can do it. Take absolutely nothing away from Vitality and this moment right now. They 100% deserve to lift that trophy. Dupreeh obviously head and shoulders above anybody else in terms of major victories alongside his coach Zonic, but I don't want to overshadow Magisk's accolades in this as well, because that is no easy feat to be achieving in major CSGO history. An incredible feat from him as well. An incredible feat. Imagine the pickup that was for Astralis back in the days. He was on the bench in Optic, an NA organization. His career was stopped, basically. He had no idea where he was going. He all of a sudden got a surprise call from Astralis because Kjærby decided to leave Astralis. And what happened? Astralis became the best team in the world, probably the best team we've ever seen play Counter-Strike. Magisk hoisted 3 trophies. 3 major trophies with Astralis, and now he got his 4th right here. That was a man that was on the way out of the scene, or at least benched in NA, to now being one of the all-time greats in Counter-Strike. I cannot believe the gamble actually paid off. So many of us didn't believe about this whole French-Danish weddings. Looks like an episode of Game of Thrones. It's going to turn down into a bloodbath, but no, it actually worked. It actually came to fruition. They found a way to merge these 2 very distinct philosophies, to find a way to give people the space they needed, to give Apeks the leeway he needed to lead the team, but to also place Magisk and Dupreeh in positions where they can contribute not only as an ID, not only as human leader, but also as fraggers. And it all came together. And now I know Counter-Strike is an ever-evolving beast. We never know what tomorrow is made of. But I would like this to be the beginning of something for Vitality, because what they have offered us in the last month, or let's say 6 weeks, has been the highest quality. And I love how ZywOo, reaffirmed that, right? He says, going forward in CS2, we are not going anywhere. We want to achieve even bigger, better, going into the new iteration of the game. And nothing suggests they wouldn't be able to do so. I think they're finally coming together. You so beautifully said it. It's a team that has been merging together. It's a team that's finally found their identity. ZywOo has gotten the help that he needed. He's no longer the one-man show. You got Spinks next to you. You got Magisk, who's ever so solid. Apeks had a fantastic tournament as well. Let's give him the credit for that. The second major, he's winning as well as an in-game leader. A guy that was a star rifler some years ago, took a massive leap in his career, took a massive chance, transitioned into becoming an in-game leader, and as he said on this day, fuck you all, because now he won a major trophy. So Apeks. Such an Apeks statement. I love it. It's absolutely amazing. And yeah, for Vitality, just to round off a CSGO chapter like this, we've been saying, we wanted to see them go deeper in the playoffs. Obviously so poetic that they managed to do it in Paris. For the side of GamerLegion, sure, they put up a valiant effort. It's an achievement in itself for them to make it to this grand final stage. And I'm sure we are going to be seeing a hell of a lot more of these individuals going forward and into CS2. I hope so. I hope so. Of course, they will have to stand the test of time. But for now, let's just congratulate them on making it all the way to the final. They've taken down some good teams. Their win against Heroic yesterday was absolutely outstanding. They also applied pressure to Vitality today. They almost had Nuke. They had them down where they were not feeling comfortable. So yes, for GamerLegion, for all these players, for Imma in particular, and Shuhei for that matter as well, they really put their name right there out to the rest of the world. If you're a tier 1 organization right now, you want a new in-game leader, you want a new superstar with the rifle, I think Imma perhaps have had one of the best major debuts, at least at a playoff stage like this, that I've ever seen. For now, they should just appreciate the moment. I know it's going to hurt a little bit. It's going to sting. You feel like you could have pushed to a 3rd map, but I'm sure short term they will realize what an incredible feat they've put together here in Paris. The most complicated part would be the rest of the road for GamerLegion. Such higher expectations after that 2nd place at the major. Just look at the road they managed to take throughout this. So obviously taking down Heroic was undoubtedly a highlight to cement themselves in that grand finals. Unfortunately, they do fall to the side of Vitality, but man, a well-deserved victory here on home soil in Paris. I believe we also do need to check in with our predictions to see who was right, who was wrong, who betted on the big Bs, and who unfortunately went with the underdogs. You're the queen! I'm the queen! I'm the queen bee! There we go! I love this! Everything comes together. It all makes sense.
sweet nectar of victory. Connor is here as well. Let's not take it away from Connor. He will never let us live that down. King and Queen B. We'll find some crowns to put on our heads. Hand to the Queen, something like that, I guess. Gentlemen, that does round out everything. That does round out the final CSGO major. I just want to give you the opportunity to say anything without getting too emotional about the past decade and the impact that CSGO has had on every single one of us in this arena. Now listen, I'm not going to go in the past decade. It would be way too long of a monologue. I just want to say that I am absolutely honored to be a part of that journey and to give everything I have to Counter-Strike. This fills me with joy day in, day out, and there is nothing else in the whole wide world I would be doing right now. So thank you, everybody. It's hard for me not to agree with that sentiment, to be completely honest. Counter-Strike has been our entire life for a very long time. I'm super grateful for being able to, I guess, experience this together with you guys, together with the fans, together with everyone. And yeah, Counter-Strike, you know, yeah, we're closing the chapter of CSGO now, but I'm sure Counter-Strike 2 will see much more of Matthew, we'll see much more of you, and we'll see much more of this. I damn well hope so. Counter-Strike has just been a constant throughout the ups and downs, highs and lows of everything. The community has meant everything to absolutely every single one of us, and we thank you from the bottom of our hearts for joining us. You're going to be seeing more of this guy's face though, because he is appearing on the Blast TV Overtime show. So if you're not already watching on the platform, make sure to hop on over there to check in a bit more with Jacob, Jake Lucky, and of course special guest Apeks. We'll see you over there. What is up, everyone? I should have given it to you. Taking over the show from the get-go, yeah? It was not about you, homie. Yeah, what is up, Paris? How you doing? Of course, we're back here for the last...